Have you all got the worksheets? These normal worksheets? So you don't want to do normal studies? 80 बात है. Okay, how many of you are struggling with speaking? 1, 2. Ganga, how much did you score last time? 63. How much did you score? 70. और आप? 72. Okay, guys, stop chatting. This is chatting. You're having problems with repeat sentences? Who is getting 90 in this class? Speaking 90. Okay, you people are getting 90. Monica, what do you do in repeat sentences? Serious question. What do you do in repeat? How are you getting 90 then? I'm not getting. She's getting 90 in speaking, she's not getting in listening because she believes that she could not do justice to the repeat sentences. All right. That's okay. Pinal, what are you doing in repeat sentences? I usually remember chunks, not the whole sentence, like chunks, and I know, that's how I do that's it. how I repeat. That's that's a very good way of repeating sentences. If you can break up your sentence, I always tell you when you have to repeat both repeat sentence and write from dictation, easiest way is to memorize the to understand the meaning of the sentence. Meaning of the sentence. If you can understand the meaning of the sentence, you can reconstruct the sentence up to 90%. Maybe some words, maybe you thought it's improve, but they said enhance, but meaning wise, the sentence will be very close. Maybe 1 to 2 words, you won't be having the same as it is, but trust me, this is the best way to. अगर आप सिर्फ randomly सुन के reproduce करने की कोशिश करोगे, it's not easy. Because you don't know what they were trying to say. But when you know what was the sentence actually about, meaning, and along with the meaning, this chunks thing. So let's say the sentence is any common repeat sentence. Say again. All writers consciously or unconsciously represent their own cultures. All writers consciously or unconsciously represent their own culture. So now when you have, first thing is to understand the meaning. Okay, they represent their culture. So if it will be me, all writers, for me that's one chunk. Consciously and unconsciously represent their culture. So for me, this sentence has got 3 chunks. So that's how it works for me. That's how Penal said works for her. But we don't know how it will work for you. But this is the best way. If you can understand the meaning of the sentence, all writers consciously or unconsciously represent their culture. So now this way you know the meaning as well as you can repeat it more accurately. Okay. Baki, have you tried that first letter thing? That is the best way. You have started, you haven't practiced enough. Started, no? You haven't practiced enough. Harry, are you getting 19 speaking? Is 85 equal to 90? 86 is equal to 90. So you need one more mark. Huh? But that's very good. Anything above 85? Sometimes they don't like your voice. That's the truth with PT, guys. That's the truth with PT. PT doesn't give you marks because it doesn't like your voice. Look, Gurdit, right? Hardit said he said for a PT exam, he had no clue what that exam is about. He had no clue which question will be first or second or third or fourth. He got 19 speaking. He said, I don't know why. How?
So he is, surprise is a better word, shocked to get 90. Now, because I know that PT likes male voice, he got, maybe the kind of voice he has, PT software likes it a little more. It didn't worry about the performance. It was, अच्छा ये वाली आवाज, okay, 90. ठीक है, फिर सुखविंदर जाती है वहां पे. सुखविंदर बहुत, she knows everything about PT, everything about PT. And Aditi is sitting here, Sukhvinder is sitting here, and when she starts speaking, software is like, "Ye kaun aa gaya?" It's actually true. Sounds funny. I know they won't be making these expressions, but that's some kind of flaw in the PT software. That for some kind of voices, it is a little biased. Gives you more marks for that. So there's no 2 plus 2 is equal to 4 in PT. It's not that the way she'll do read aloud, if you will also do the read aloud in the same way, you will get exactly the same marks. Okay? So be happy if you are getting anything above 85 plus. Be happy. Ask Prabjot how she scored. Prabjot, what happened? What was happening before? What happened after? Why? Huh? So just the change in the voice, the volume, not the pace, the volume. Okay? So you don't know what will click there. So boys usually have loud voices. It works for them. It was not, because girls, when they speak loud, it gets shrieky. It was not working in her favor. Okay? So we can't actually tell in speaking, but what we can do is we can follow the rules. The rules are, you be fluent, and you follow the instructions for a particular question. Chances are you will be fine, because that's how it is with most of the students. But still there will be some students who will be struggling because of the pitch, volume, or the quality of their voice. It will still be a case. Ashraf was there in the morning. Smara, remember Ashraf? 19 writing, 88 in listening, 78 in reading, 58 in speaking. And she has been struggling with speaking for a while. So what is the explanation? Somebody who can get 19 writing, that means she's good. Who can get 88 in listening, she's good. She knows everything that is there to know. But something is not clicking with the speaking. Clicking means it's not compatible with that particular software. ऐसा नहीं कि आपकी आवाज में गड़बड़ है, but software has some kind of inbuilt flaw that for some kinds of voices it's good, for some kinds of voices it is. Okay? So now these two boys, they might be speaking really good, but they're getting somewhere in 70s, right? The reason could be that you are not fluent. Reason could be that. Sometimes the reason could be the quality of your voice. We had 3 students so far who had very, very heavy voice. You know, people who have very loud, heavy voice, 3 such students, and they struggle with speaking. They had this heavy tone voice. The boys, all 3 of them boys. And we're like, yeah, boys, so it's a masculine voice. The masculine voice generally get 90. How come these people are not getting it? So that's what I'm telling you. We don't know what will work and what will not work. But their voice was a little too heavy. So that also didn't work. So for them, they had to bring it down. They had to make the voice a little lesser, heavier. I don't know how they did it, but that's what was the aim. And they got it. Okay. Mic position. It also works. How many of you are aware of the mic position? You know what, Ravneet, can you get the mic quickly? नहीं गरिमा, ये तो चुटकुला हो गया. जो एग्जाम में माइक देते हैं ना, वो इसकी तो पोजीशन अपनी है, जहां मर्जी कर लो. Luckily, this mic position change has worked really well in our favor. You won't know how many things we have tried to
क्या कहते हैं इसको, null this voice thing, voice का जितना भी flaw है, we have tried so many things so that it doesn't affect students score, but out of all of those things, all of those strategies, this has been the best so far, changing the mic position. So this is the exact same model that you get in the exam. Okay, so you can always adjust it. अगर आपका सिर बहुत बड़ा है तो आप इसको खोल भी सकते हो. Normally this is a position where everyone thinks that mic should be, right? But now what we do, if you're getting 90 already, you won't change it. For example, Hardit is getting 90 by keeping it here. Now I'm saying if you're getting 90 already, you kept your mic here, that's it. You don't do anything. So those who are getting 90, I usually tell you guys, even wear the same clothes, same shoes, leave the house at the same time, have the same breakfast. You have to listen something, but I did last Friday, my test. That's so bad. Last time also I get 90 in speaking. Pretty much the mistake I did was in repeat sentence, there was like, I didn't hear anything, that's the first word, and I said like, can't do again. Because there was like a front of like, fluency. Yeah, I just the fluency, can't do again. And the second thing is like, when I say one pass for the percussion, pass. And then when I was speaking, read along, I missed repeat the sentence, and I speak bad words in my language, and I didn't continue with that. इंग्लिश में तो वो इंटरप्रेट कर लेता ना, तो he used his own language. Still 90. That's what we tell you. It's a silly test, but you will definitely lose marks in listening because every word that matches with what maybe you did well in other questions, but you didn't get enough marks for repeat sentence. But this is also good trick. We tell you certain times that make sure you maintain the fluency. Okay, so now look at this. So this is the usual position. If you're already getting 90, you don't make any change whatsoever to that position. Now for everybody else who are trying to improve their speaking scores, speaking score improve करने का मतलब 85 से नहीं, not 85 onwards, okay? So 50s, 60s, 70s वाले. So from here, you take this mic a little above and closer to your nose tip.
Hello, hello. So you place this microphone next to the tip of your nose. It should not be touching. It should not be touching your nose. The easiest way to do is place your hand here. Place your hand here next to your nostrils, touching. I'm not telling you to put your hand next to your lips. I'm telling you to put it next to your nostrils, touching. Touching your hand. Exact position. Okay? Now, because you have already covered your nostril, so the microphone is definitely going to be above that level. And above your nostrils is your nose tip. Right? This is the easiest way. Instead of trying this, when you're not sure whether it is SA, so do this. Let's start. Clear? That's what you do. Only those students who are not getting their desired scores in speaking, they will change the microphone position to this. We don't know what is the reason, but this has worked a lot. This has worked for like a number of students. Okay? All good? Everyone okay with this? Very easy to do. And you can always move this thing up and down. कईयों का face छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है. You can move this thing. Yeah? It should not be here. It should be somewhere around this part. SC भी मत बना देना. Depends like on one's face cut, right? मैं दिव्या का सोच रही छोटा सा है. So उसका शायद ये यहाँ तक आ जाएगा. So she'll have to bend it a bit. Clear? I'm taking it off. मुझे सुननी कुछ. Okay. All right. So let's listen to these people who are saying they have problem with the speaking. Let's start from here. Your name is Sadiq. You have mic? Did I give you mic? Garima, pass on the mic. गरिमा वो भी गरिमा है ना गरिमा she's Garima. Hello Garima. Hello Garima, myself Garima. And Sadiq, ready? What are you doing? You don't have them? Lazy people? Garima de do उनको. Who hasn't got it? Yes, Sadiq. Start. Don't worry about these people. Read aloud or what? Whatever you think you are struggling with. Okay, I'll do the reader. Does Australia seek a large population with a low living standard or a small population with a high living standard? According to the researchers, unemployment in the areas with mixed population was twice as high as the average for the country. By the shore, there are renowned restaurants, while the street is lined up with cheap cafes and second-hand shops. We don't stop for full stops or commas. We don't. Second, you said according to the researchers. I don't see any the researcher. You said street is lined up. There's no up there. So these mistakes you have to avoid. All these things affect your ultimate score. And this question is even more important because you're going to get marks in reading. Can you be a little quicker? Okay, then avoid that pause between two sentences or at comma or a full stop. Okay, avoid that a bit. Okay, yes, dear. Yes, you can do the same. It will be boring though, but you can. Does Australia seek a large population with a low living standard or a small population with a high living standard? According to researchers, unemployment in the areas with mixed population was twice as high as average for the country. By the shore, there are renowned restaurants, while the street is lined with cheap cafes and second-hand shops. You stopped 5 to 6 times. You didn't realize? Did you realize? You stopped 5 to 6 times. So it will definitely affect your fluency. Okay, every time you said population, you stopped. I don't know why. Population is not that difficult to avoid. Sure, there are renowned, you stop there, then cheap cafe and second hand, that there also before saying that you stop there. So fluency means you don't pause. You don't take any unnecessary pause.
Does Australia seek a large population with a low living standard or a small population with a living standard? So until you are at the standard, in between, you are not going to hesitate, pause, or fumble. Nothing at all. Nothing at all. Does Australia seek a large population with a low living standard or a small population with a high living standard? According to researchers, unemployment in the areas with mixed population was twice as high as the average for the country. By the shore, there are renowned restaurants, while the street is lined with cheap cafes and second-hand shops. Okay, so no stop whatsoever. You didn't stop, but it sounded like as if you are hesitating and then going to the next word. Okay, so both of you, fluency is an issue, guys. Fluency. You work on your fluency. Okay. Anyone from the first line? Mamun bhai, you want to try? You want to read it? You have the worksheet? Yeah, pass the mic. Mamun, have you given PT before? No. You haven't given PT before. Okay. Yep. Whichever you, first you read it. Okay, because in the exam also you get preparation time. Huh? Jerry, how much you are getting in speaking? Forget about it then. Anji? Are you sure? 90 only? And how much you are getting? ये लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगते. You want to try? Pass this. Try करो, फिर कैसे पता लगेगा आगे क्या करना है? Yes, Jitinder. Yeah. Which one? Number 4. Number 4, yeah. Research in universities and agriculture institutes as well as by the industry has a crucial role to play. The large stepped pyramids even exceed the size of pyramids in except for sheer volume material used. Women were banned from competing and spectating at the original games, and short put is barely 100 years old, and so the direct link is with the ancient past tenses. Same, 90 for fluency. Fluency was very good. What you did in between? Very, very bad. Used. Used, bolo? Used. You didn't say used, you say used. WOMEN. What is this? What is this? I know the spelling is not, but that's how you pronounce it. Man, woman, men, women, we. Women, women, women. Okay, women. Otherwise, there's no difference. Woman, woman. We, women, women, women. Okay. Research in universities and agricultural institutes as well as by the industry has a crucial role to play. The large stepped pyramids even exceed the size of the pyramids in Egypt for sheer volume of material used. Women were banned. That's how you differentiate. Okay, women were banned from competing and spectating, means not even allowed to be spectators. Spectating at the original games, and shot put is barely 100 years old. So 100 years. This sir also matters, years old. So the direct linkage with the ancient past was tennis. Tennis. Okay. Now, those, Mamun bhai, let's do it. Whichever you have prepared. Which one did you prepare? Okay. Let's do number 6. Of what happened incredibly COVID, the final the war. The formal guarantee of women's rights was absent from the initial draft, but the refusal of Afghan women to be silenced ensured inclusion in the final version. Other measures include working with offenders to change their behavior and working with ONGs to improve the results for investors. Bhai, this is not fluent because you are hesitating a lot after every 2-3 words. Second, the pronunciation. When you're speaking, some of the words are not clear. And I just told you, and still you said women's rights. It was women's right. Women, yeah.
Okay, so you need to improve a lot in this question, a lot. Okay, so it's just the beginning. Okay, everyone, speaking. Question number 1, read aloud. Question number 2, question number 2, repeat sentence. Question number 3, describe image. Question number 4, read a lecture. आज तक सिर्फ there has only been one student who said he got a different order. And number 5, short answer question. Question number 1, speaking plus not just as like some marks, 1 2 marks, but a huge component of your reading scores come from this question, read aloud. That's why we focus more and more on your pronunciation, clarity, even this ed sound, women, all these things affect your scores ultimately. So 5 to 6 of read aloud passages and 20-25 plus marks in your reading as well as speaking, obviously. Describe image question, only speaking, okay? But ultimately, to get marks in speaking, we have to be fluent. So, equally important. You can't ignore it's important because speaking scores are also important, right? You don't want 64 in speaking and 65 plus in every other module, right? You don't want 78 in speaking, 90 in other 3 modules. Now, first thing, it's not possible because we know how important speaking is for other modules. Otherwise also, this is a very easy question to deal with, so you should not worry about it. All these 3 questions, speaking plus listening, and these two nearly 30 plus, 35 plus, nearly. So on an average 15 marks here. This is a very conservative guess, very conjuice wala guess. Could be more, could be less. So 15 plus here. So from these 2 questions, you are going to get 30 plus marks in your listening. So when you, for example, when your name is Nitik. So for example, when Nitik said he got 19 speaking, he did some tricks with the read aloud thing. He just told us with the repeat sentences. So he got 19 speaking because speaking score is only fluency. Speaking score is only about fluency. But when the computer cannot match your words with the words in the sentence, you do not get marks in listening. And that is the problem. He said in the morning session itself. Why not? You have the link ready? Message in the thing. But he said in the morning itself. Repeat sentence. Same goes for retail lecture. And retail lecture, we know the criteria, the words that appeared in the audio. So these 3 questions, read aloud, repeat sentence, and retail. This is maybe 2, 3, 4 marks, we don't know. So we don't worry about this one. Read aloud, repeat sentence, and retail lecture are not only related to speaking, but they ruin your reading and listening scores as well. So these 3 questions are the most important questions in your PTE. Why? Because 3 modules are going to be affected: reading, speaking, and listening. And first criteria is fluency. The first thing that you do is fluency, be fluent. Second thing is, because to get marks in reading, they're going to match your word with the text. For getting marks in repeat sentence, they're going to match your word with the audio. Same for the retail. So when that matching is going to happen, if you are going to say the word in the same way, for example, a very easy example, was and was. Was and was are 2 different words, but we generally say it. I was going. Was is not was. So there is no matching happening here. Also, used. Do you see these things? So
every such word is actually may not be affecting your speaking scores, but is affecting your listening or reading. Tabhi you do really well in speaking, but somehow you're not getting your marks in other modules. This is very, very important. Fluency, and then comes the main part, which is called pronunciation. And then we have a strategy to deal with every individual question. But overall, whenever you are answering any such question, two things: you have to be fluent, and your words have to be clear and accurate. Pronunciation has to be accurate. Okay. This question we do not practice much, but at the end, I always tell you we do care about that 1 mark. So 78 and 79, the distance is only 64, 65, 49, 50. So we care for that 1 mark as well. So you don't take them lightly. You prepare for them as well. You respond to them to the best of your ability. Yeah, if the question is something which you don't know anything about, then what you can do? That's a different part of the story. But you still practice for it. Okay. But these 4 questions, there's no alternative to these 4 questions. And we do these questions every day in the class. Every single day we are doing these questions in the class. Still you guys do not, because you think it's easy. बोलना ही है इंग्लिश में इतना तो 25 सेकंड तो I can do it. You think it's easy, but it is not, and we know that you struggle. So let me try a few more students. Kiran, what? Naval, have you got 91 ever? You got 91? कदे आए क्या एवरी टाइम आए हर बार होते हैं चलो हमारे काम का नहीं है Ravneet, you want to do it? Your name is Parvinder. Parvinder, let's do it. Parvinder, read aloud. Number 5, yes. Now just turn it on and wait. Yeah. The movement promotes homemade, handmade food, biodiversity, sustainability, and above all, taking the time to savor good food at the table. The holiday season is also a time for me to savor foods I might not have the chance to any other time of the year. So, of course, I must take sure my taste buds remember them long after the holidays are over. क्या करूं? What to do with this? Do you think it was fluent? Do you think you read every single word that was written there? You fumbled a lot many times and you even mispronounced some of the words. It was make, you said take, and then foods you repeated. Every repetition is a mistake. So whether you have spoken right or wrong, you never come back. You never go back to any word, because repetition is also a mistake which affects your score. They have a negative mark for that repetition as well. Okay, so you never repeat and you never go back. Whatever has been said already. So you have already made a mistake by calling foods as food. Now you are going back to it. You are making another mistake. Repetition is another, and repetition may usually we repeat 2-3 words, because when we go back we say 2-3 words together. Okay, so no repetition, please. Ramneet, you wanted to do it? Take mic. After this, I'm playing the right from dictation thing. First one. First one. Yeah, first one. Does Australia seek a large population with a low living standard or a small population with a high living standard? According to researchers, unemployment in areas with mixed population are twice as high as the average for the country. By the shore, there are renowned restaurants, while the street is lined with cheap cafes and second-hand shops. Yeah, you made a few mistakes. Researcher, the R in the beginning was not clear at all. And you said population,
R, not was. R twice. Okay, and renowned. 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 Okay, so the pronunciation is an issue. Fluency was okay. Okay, guys, I'm playing. What did I say? Let's do retail lecture before that because we are covering speaking. So let's do retail lecture. So for describe image, you speak fluently for 25 seconds. With read aloud, whatever is in front of you, you have to read to the best of your ability. I would rather say beyond the best of your abilities, okay? Making sure you don't repeat, you don't omit, and you do not mispronounce. And still be fluent. The next question is retell lecture. Number 4. I'm not doing number 3, I'm doing number 4 first. Okay, guys, we have mock test ready. I was waiting for the prints. So I'll hand out the mock test first. It's a reading mock test. And you will not start until I tell you to start. So you keep a copy upside down on your table. Okay, I'm distributing it now. It's there.
एक ये रहा शायद ना ना ये
Last 4 minutes.
Stop. There's no other definition of stop. It's stop. So have you stopped? So how many of you could actually finish it? And others? Still trying? Which question, John? What first? You didn't do them? Okay, you started from the... Aman? Couldn't? Rajendra, finish? Last one. Did you say just 2 blanks or 2 paragraphs? Who else is so close? So luckily in the exam you will see the timer in front of you, so you know when to rush. Okay. So let's see what you have done. Okay, we have this mock test has all the questions that will appear in the reading section under your PTE exam, except one, and that question is MCQ, which is the first type of question, but not single answer, multiple answer. And the question will not say only one response is correct, it will say more than one response is correct. And every single student of Imdad's PT knows that we do not attempt those questions in the exam. So when we are not going to do them in the exam, so there's no point discussing them in the class. Okay. So for that reason, we never talk about those questions in the class. Now, MCQ, you read the question first. After that, you decide whether you need to go to the passage or the options, and accordingly you solve it. So the first question is wow. Thomas, Bachard, I don't know which country he's from, so it will have different pronunciation. So Thomas will do for us. Thomas B. Okay. So they want us to identify this information which is related to Thomas. So we'll have to read this information so that we know what we are trying to actually find in the passage. Thomas invented a term used to distinguish 2 factors affecting human characteristics. Thomas developed a mathematical method of measuring genetic influences. Thomas pioneered research into genetics using twins. Pioneer means he was the first one to do it. Thomas carried out research into twins who had lived apart. Okay, so now we know what we are looking for. The first sentence, the idea of using twins to measure the influence of heredity is that genetic thing, right? Dates back to 1875 when the English scientist Francis Galton first suggested the approach and coined the phrase nature and nurture. So the guy is not Thomas. When the guy is not Thomas, can you see option C? Pioneered research into genetics using twins. So that is ruled out. That option is not available to you anymore because you have already found that it belonged to somebody else. But twin studies took a surprising twist in the 1980s with the arrival of studies into identical twins who had separated at birth and reunited as adults. Over 2 decades, 137 sets of twins eventually visited Thomas' lab in what became known as Minnesota study of twins reared apart. Reared means rear karna, near palna, reared apart. They were nurtured and they were living somewhere else, but numerous tests were carried out on the twins and they were each asked more than 115,000 questions. So looks like that separate twins wala is the option because that is the only option that they have talked along with Thomas. So where is that option? Yeah, carried out research into twins who had lived apart. Now let's quickly eliminate the other two. A, invented a term used to once they have mentioned Thomas, they didn't talk about any term. Developed a mathematical method. We didn't see any mathematical method used in this passage. So we have eliminated 3, which tells me I'm safe in answering D as my response. Now,
Then number 2. So I'll do 2 questions from every type. The writer makes a point that, and the writer makes a point means the whole passage. The writer makes a point means the whole passage. So let's go to the passage. Though we might think of film as an essentially visual experience, we really cannot afford to underestimate the importance of film sound. A meaningful soundtrack is often as complicated as the image on the screen and is ultimately just as much the responsibility of the director. The entire soundtrack consists of 3 essential ingredients: the human voice, sound effects, and music. These 3 tracks must be mixed and balanced so as to produce the necessary emphasis, which in turn create desired effects. Topics which essentially refer to the 3 previously mentioned tracks include dialogue, synchronous, asynchronous, sound effects, and music. Okay, so they are talking about music, film, and he's focusing more on this sound and music thing. Okay, writer makes a point that the director should plan the soundtrack at the early stage of filming. Did they even talk about planning and early stage of filming? No. B, it would be wrong to overlook the contribution of sound to the artistry of films. Maybe because he was talking about sound. He talked about it. So I don't know, let's keep it. C, the music industry can have a beneficial influence on sound in film. Now show me the word music industry. It's not given. They didn't even talk about music industry. They only talked about film and the sound inside the films. And sound will have these other parts: human voice, sound effects, and mimic or whatever. It is important for those working on the sound in a film to have sole responsibility for. They said it is important those who are working on the sound in a film to have the sole response. They are the ones who will be responsible for it. Those who are working on the sound. Yes or no? Yes? Wrong. Sole means nobody else. So somebody who is dealing with sound, he is the only one responsible. He is the sole means only one responsible. But your passage says a meaningful soundtrack. Do you think directors are the one who deals with sound? You know, you need music directors or background music, those people for that. A meaningful soundtrack is often as complicated as the image on screen and is ultimately just as much means it is responsibility of somebody else as well, but it is also the responsibility of the director. So is it the responsibility of somebody just alone? No. So that negates number D. So you're left with B is the answer. Next is quickly reorder paragraph. So hey do. I said I'll do 2. क्या हाँ तो दे देती हूँ, रो क्यों रहे हो? इनको आंसर दे दो पहले. अच्छा, that's only okay. So D, B and C. ये बस मत करना मेरे साथ. मैं बोलूंगी, आप नहीं बोलोगे. Shh, everyone. MCQs number 1 D, number 2 B, number 3 B, number 4 C. Reorder paragraph. Reorder, my favorite question, puzzle. You have to fit them together to make a picture, ultimate picture. One potential method involves, one potential method means an example. One potential method of what? One possible method is this. For what? Right? This cannot be your starting sentence. We are looking for a starting point because this passage will start from somewhere and the other sentences will be connected to that main point. A major cause of climate change is a rapid rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last century. Maybe. Can I remove this option? Do I have a reason to remove? So I have to keep it until I have a better sentence. And research is going on
into how this might be achieved. So the research is still going on. So that means the research, they started about a topic and the research is still going on at that topic, how this might be achieved. Something has to be achieved. They have mentioned something in the previous sentence which they are trying to achieve. They are aiming to achieve. D. Ratan Lal, a soil scientist from Ohio State University in the USA, claims that the world's agricultural soils could potentially absorb 13% of the carbon dioxide in the atmosphere, the equivalent of the amount released in the last 30 years. Is it an independent sentence? If it is not, tell me why. Hmm? No, I'm talking about only D first. It's independent. It's independent. D is independent. But we have another sentence we're going to compare. So B talks about a major cause of climate change is the rapid increase in the level of carbon dioxide. D talks about a particular scientist who is studying soil, and then it has some connection with carbon dioxide. So which we always go for the broader as the higher up in the order. So obviously B talks about a broader topic and D talks about maybe some part of it. So B, we are eliminating D from the race of being number 1. E, if we could reduce the amount of CO2, perhaps the rate of climate change could also be slowed down. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दे तो शायद क्लाइमेट चेंज का रेट भी स्लो हो जाएगा. तो क्लाइमेट चेंज कहाँ है? We need to have the topic. Then if I do this, I can do this. But what is the point? Why I'm even discussing these ifs and buts? What is the starting point? What is the main idea? Why I need to reduce this? What is the need to reduce this or slow this? What is the need? So that need is given in B. A major cause of climate change is the rapid rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere over the last. So after this, guys, can I use C after this? No. Why? Because there's no research mentioned. And what are they trying to achieve? The rise? No. One potential method for what? For increasing the level of carbon dioxide? Doesn't make sense. D. Ratan Lal, a soil scientist. How come suddenly carbon dioxide is connected to soil and we need this scientist? What is the link in between? There is no link. So we can't have these. So the only option left with is E. Now, he said a major cause of climate change is a rapid rise in the level of carbon dioxide. If we could reduce this carbon dioxide, which is increasing in B, perhaps the rate of climate change could be slowed down. Now what? Thank you. Now, let's read those three sentences. So the sentence is, if we could reduce the amount of CO2, perhaps the rate of climate change could also be slowed down. If after this I use C and research is going on, means there has already been some research. Do I know about that research? Do I know that? And means continuation. Something has been already discussed. They are either studying, they are either analyzing, and the research is also continuing. Do we have any such information in E? No. So I can't put and the research is going. And can I put Ratan Lal right away? Because we don't have a context for Ratan Lal. So one potential method involves to reduce carbon dioxide. E, if we could reduce, and to reduce, one method is enhancing the role of soil that plants grow in with regard to absorbing carbon dioxide. After that D, because they are explaining how they can do it. Ratan Lal, a soil scientist from Ohio in the USA,
a scientist now, okay, claims that the world's agricultural soils could potentially absorb 13% of the carbon dioxide in the atmosphere, the equivalent of the amount released in the last 30 years. So 30 years ka jo carbon dioxide can be absorbed by soils itself. So that means this is a good potential that soil can absorb carbon dioxide. And then last, and research is going on how can they do this? How can they use soil to absorb carbon? This, he said it can be done. He claims that it is possible. It is possible, but how to achieve it? How to achieve it is the question. So BEADC, BEADC. Who got it right? Nice, not bad. बाकियों ने सभी ने वो C गलत लगाया होगा. Next one is easy. Starting sentence is C, because A has, it was first developed. B says ethnography can also, and D says businesses are finding that ethnography can offer, but the introduction of the term ethnography is given in C. So we start from C. Ethnography is a type of research aimed at exploring the way human cultures work. After this, the first use of this, the first use, and later the other uses. First, we'll talk about the first use. It was first developed for use in anthropology, and it has also been used in sociology and communication studies. Nice. Then, now there is a catch, guys. Let's read B in detail. Ethnography can also help companies to do this. It can also help companies to do this means it is helping companies to do something else as well. Story is clear. D should come first. So businesses are finding. So if businesses, one use of ethnography businesses are doing is to have insight into the needs of customers. Second use is they are also helping company to design new product. So CADB. They also to pad liya, piche nahi pada, also help companies. Okay, the companies are getting this second benefit. So first benefit is in D. CADB. The first is sociology and communication, and then D means businesses are also using it, and businesses are using it for two purposes. One is to get an insight into people's need, and second to devise new products. Number 7. The discovery that language can be barrier to communication is quickly dashed. बेवकूफ लोगों जो है discovery. We have easier. What does that is tells us? Is quickly dash. Quickly is an adverb. So verb is missing. Huh? Guys, we are talking about discovery. मैंने गलती की पूछ लिया, मैं आंसर बदल. Discovery तो it's something already discovered. How can you say found? Discover का तो मतलब ही है discover. Yeah, something which you have found. So you can't say found. Discovery is never achieved. Discovery is not achieved. You discover something, you have found something. Discovery is made, not found, not achieved. और बाकी जो halt and counter वाले, I'm not even talking about them. Okay. And I was telling you actually is requires a verb which should either be in the ing form or passive form. Ing doesn't make sense here. Discovery is not doing anything. Discovery is done by somebody. So passive sentence, you were looking for the third form. Okay.
So, is quickly made by all who travel, study, govern or sell. Whether the activity is tourism, research, government policing, business or data dissemination, the lack of common language can severely impede. Impede means disrupt, obstruct, slow down, stop, not completely stop, but to obstruct, or can dash it all together. So something can either slow down your car or completely do this. Slow down के बाद दूसरी चीज बची क्या? Stop. It is either going to slow down or completely do this. मतलब stop it. So the stop, the word which means the same is halt. Halt means stop. Stop it all together. Can severely impede progress or can halt it altogether. Common language here usually means a foreign language. So when we say we do not have a common language, we're talking about you speak some other language and I'll speak some other language. Common language here usually means a foreign language, but the same point applies in principle to any dash with unfamiliar dialects or style within a single language. So they're telling you, one could be a foreign language, second could be the language is the same, but language is the same, but the language is having different dialect. So for example, Punjabi has different dialect. If you go to different regions, they have different. I'm from a different region. I married into a different region. Trust me, for the first 1 year, I was having a lot of trouble in understanding some of the things. They were also having trouble, like when I was speaking. So although we used to speak Punjabi, okay? So with unfamiliar dialects or styles within a single language. Any what with that? Any? They have already given language within a single language. Encounter. Any encounter means any kind of coming face to face with this kind of situation. How do you face the language? Having any encounter means having any such incident, having any such meeting. Okay, so not really the meeting, but a term. Okay, but Patella needs link special. कहाँ थे? Yeah, any encounter with unfamiliar dialects or styles within a language, they don't talk the same language, has a major metaphorical meaning alongside its dash one, alongside its literal one. Literal means they don't talk the same language like English or Spanish, but some people might be talking the same language but not still meaning the same thing. So literal. Number 8, I'll be saying the answers, pay attention, I won't be repeating them. Okay. Number 8, A less, B makes, C hazard. Number 9, A potential, B tempted, C stigmatize, and D criminals. Number 10, A environmentally, B untouched, C process, D response. Number 11, A devised, B meant, C on, D discerning, E from. Number 12, A exist, B rarely, C only, D however. Number 13, A accustomed, B that,
C. Toleration. D. Unsuitable. E. Making. Number 14. A. Concerns. B. However. C. Vouched. D. Any. E. Had been. Number 15. A. Revisited. B. Optical. C. Even. D. Height. E. Diminishes. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. Mandipji, can you give me the link that I gave you yesterday in this session? And what was that? Yeah, tell me the link. Uppercase K, Uppercase K, lowercase p, P, lowercase B, number 8, 8, uppercase Y, Y. number 9. The one before that? But did I give everyone? देव जी कल जो आपने किया था ये
All right, now there is a reason why I don't have all the blanks in the same link, and the reason is I don't want people to get the link very easily. Even I didn't save it for myself. Trust me, I have to search, unfortunately. Okay, so we start with a link, and that link has 35 blanks already. Okay. So this is a revision for all students as well. Don't worry, don't get bored. That's for your benefit as well. The more you revise, the better you remember them. Now, okay, this is an opportunity for those who are lazy, don't come to the class regularly. This is a great opportunity, but you will fail. Don't come regularly, just coming for this link, you're gonna fail, okay? Because you do not follow me, you do not memorize the summaries, you just come for the link. So don't expect a miracle. Some people say that, so give us the link so we can study at home properly. We don't do that because we know that you won't study at home. You will take the link and then you go home. You will never study them or memorize them as we want you to. You'll just go through them. Atik bhai, bahar jaoge. If you if you get the link and if you just go through them a couple of times and if you think that's enough for me, Kinjal, abhi aur kuch kaam karoge, I'll throw you out of the class. Yeah, listen to me. Now, that's not enough for you. Why not? Because that's not how you can memorize things. There are 140 blanks, more than that actually, 150 roughly. And this is not possible. You cannot just remember them going through them a couple of times. You have to remember them, memorize them like you do you memorize the summaries. Okay? And most of you don't memorize the summaries anyway. Okay? So today I'm giving you the link. I'm working. Like we're going to practice all the blanks today, inshallah. But if you just want to feel good that you've got the link, okay, wow, you'll feel good, but you won't score. You'll have the link. You'll have all the blanks. You won't score. People who haven't got even half as much as you are going to get today have scored already because they were regular during those days. Some people just joined, haven't got even 50% of the blanks, but they've got my suggestions. ये पे कौन बात कर रहा है? मेरी माँ आंखें खोलो. आप लोगों को पता है बच्चे डरते नहीं है. You guys are too soft. This is a big problem, Mandeep ji. Change your attitude sometimes. You have to. थोड़ा सा अपना attitude change करो. सही बात. The way you deal with the husband वैसे. ये जितने सारे मतलब सॉफ्ट बन के बैठ जाते हैं ना, मनदीप जी बोलो, गरिमा बोलो, do you think they are the same with their husbands? Never. They are like, Wonder Woman. Okay. Yeah, so if you want to feel good, you will feel good, but that's not gonna be enough. Now, my special suggestions for those people were enough because they've got 5-6 blanks from them. Unfortunately, after today, if you complain, you text me, sir, I didn't get any blanks from the special material, I will block you from my number. I'll block you. Some people still text me. Kalbi, Parsubi, every text, sir, I only have one blank, sharks. I only have one blank, this, that. आज के ज़माने में इतने सारे blanks मिलने के बाद भी, if you say I only had one blank, despite the fact that we gave you hundreds of blanks, and you say only one blank, I don't trust you. You must have missed a lot of classes, not one, two, many classes, which is why you don't have them. I'll tell you, Achal Verma, one of my students who joined us a long time ago for 7, and then he had to become online because of his busy job schedule or something, and then he became an online student. Yeah, and then he is trying for 8 now. All right. Okay.
He texted me yesterday. Respected sir, these are the blanks which I got today. Yeah? Number 1, Shanghai. Number 2, Richard Morris. Number 3, just in time. Number 4, I'm a cyclist. Number 5, research has suggested that major stresses. Kitne blanks aaye? Because he's a regular student. I know him. Siddhant, I think Siddhant Azeshan know him too. Siddhant का भी काफी fan है. मैंने देखा last time score के Siddhant को बहुत thank you बोला उसने. So these are like, regular students. Divya, how many blanks did you get last time? And she's not even Punjabi. Lunch किया तुमने? Did you have lunch? Lunch मंगवा लो फिर बिरयानी. How many blanks? Last time I got 2, but before exam I got Before exam. क्या बोल रहे हो? in the previous exam. Yeah, before exam. दिव्या, शर्म की बात है. देखो लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा. Guys, stop smiling. Laugh. Thank you. बस मतलब एग्जाम में 2 आया, एग्जाम के पहले 5 आया. बिफोर एग्जाम. मनदीप जी, ये पंजाबी क्या असर है? Have you made a new Punjabi friend these days? Or are you in love with a Punjabi boy? A single, yeah? Are you in love with someone? Is he from Hyderabad? Does he speak Telugu? Just checking, okay? Any Punjabi connection है कि नहीं है? How can you say last exam I got 2 and before exam I got 5? Some people will say, sir, आप इतनी 1000 लोगों के सामने आपने उसे इंसल्ट किया, उसके दिल में क्या बीता आपको नहीं पता. कुछ लोग ज्यादा ही समझते हैं. कुछ लोगों के लिए आपको पता है हमारे बांग्ला बोलते हैं मार्चे माशी दौरत बेशी. Do you know the meaning of this? बांग्ला मार्चे माशीर दौरत बेशी. Marche means ma se. Mashi means mother sister. ये मासी को अब क्या बोलते हैं? मौसी, मौसी. दर्द, दौरद means दर्द. फील ज्यादा करती है. बेशी means ज्यादा. So बेटी के लिए, like Divya is my daughter, suppose. So मेरी बेटी के लिए मुझे जितना दर्द है और मासी बन के अर्श के उससे ज्यादा दर्द हो रहा है. मुझे ज्यादा दर्द है उसके लिए. तुम अपना दर्द अपने पास ही. Don't feel bad about it because every student has a certain connection with me. So if I make fun of someone, maybe some people might think, oh sir, क्या कर रहे हैं, इतने इंसल्ट कर रहे हैं, बड़े-बड़े बात करते हैं सर फेसबुक में, इतना अच्छा-अच्छा बात लिखते हैं कि लोगों को हंसाओ, खुश रखो, गुस्सा ना दिलाओ, हर्ट ना करो, ऑफेंड ना करो, सर क्लास में ये क्या कर रहे हैं. So don't worry about that. I know what I'm doing. ठीक है. कुछ लोगों के साथ हम बहुत उल्टा-सीधा बात भी करते हैं, but they don't cry. Okay? Relax. My responsibility. एक बार ऐसा हुआ, एक लड़का ने फिर घर जाके हमें 1 स्टार दिया. नया स्टूडेंट था, पहला दिन 1 स्टार दिया. घर जाके मैंने देखा सर ने एक लड़की के साथ कैसे बात किया. दिस इज नॉट द वे टीचर टॉक्स टू हिज स्टूडेंट्स. बेचारा एक ही दिन आया था, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा उसको. नुकसान किसका हुआ? मेरा नुकसान हुआ. वो चला गया. तब हमारा ट्रायल क्लास था. इसके बाद हमने ट्रायल क्लास बंद कर दिया. आओ तो पैसे पे करके आओ, नो ट्रायल क्लासेस. आना मैंने कितनी बार बोला पैरामीटर से कि सर ट्रायल क्लास दो, ट्रायल क्लास दो, ट्रायल क्लास दो. मैंने बोला नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना. ट्रायल क्लास देने से क्या होता है कि बच्चे ट्रायल क्लास ना देना, दिस शोज आवर कॉन्फिडेंस. ट्रायल क्लास देके हम क्या करते हैं, आके हमें पहले बजा के देखो. ट्रायल क्लास का कॉन्सेप्ट देखो, पहले देखो हम कैसे, फिर जज करो, फिर पैसे दो. पहले हम करते थे, पहले एकदम पहले जब हमारे पास बच्चे नहीं था, एकदम जब नया क्लास शुरू किया मैंने सनशाइन में, पहले तो करना पड़ता, वरना कोई नहीं आएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे, समझ रहे हो. जब हमने देखा कि बच्चे आना शुरू कर दिया और बच्चे ट्रायल क्लास लेके, एक्चुअली ट्रायल क्लास बंद किया. वी स्टॉप द ट्रायल क्लास ओनली after a certain incident, and that is a girl came to me and she texted me, sir, I got 7 in each, I just take 2 trial classes from you. And I उसी दिन मैंने रात को पोस्ट किया, no more trial class for tomorrow. ट्रायल क्लास करके अगर स्कोर आ गया, आईएलटीएस में राइटिंग में 7 आ गया, और उसने बोला सर लकीली आई गॉट द सेम एसे दैट यू डिड इन दिस 2 days. मेरा राइटिंग में 7 नहीं आ रहा था, 7 आ गया. मुझे खुशी भी हुई पर गुस्सा भी आया कि दिस इज नॉट fair.
आइल्स कल किसी ने मुझे शेयर किया, आइल्स वाले ने शुरू किया आइल्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. Of course they had this computer based test, but this is different, computer delivered test. Listening, reading and writing will be computerized and speaking will be face to face, human examiner. There is no difference because you will still fail in IELTS. Because IELTS mein you need to score 39 out of 40 to get 9 in academic IELTS, yeah? And general IELTS you have to score 40 out of 40 in reading to get 9. And no matter how much lenient IELTS people become, they cannot be lenient in reading. They cannot, like in PTE, even if you score 50% in your reading, you can still score 85 to 90. Yes, that's how it is. Buddhulak, what's your name? That's how it is. You don't trust me? That's how people, do you think one people score 85 to 90, do you think they deserve that? I mean, angle say nahi tha. Do you think they corrected 80%, 90% of the questions? No. They just did well in speaking, which is why they got 25 marks from speaking to reading. They did well in reading summaries, where they get marks in reading, and they did okay in reading. Because we checked that even if you leave out 6 questions out of 17 or 18, or I mean, you can still get 90. Out of 17 or 18 questions, no matter how many questions you put in your reading test, if you leave out, don't touch 6 questions, you can still get 90. We've got to prove you can still get 90 in reading. Exam kya exam hai? Ghati exam. Now, there is something you have to understand. The speaking part contributes to reading. Reading summary or summarized written text contributes to reading. Now, they have got certain marks which will go to your reading. Now, in reading, even if you get 100% marks, you can't get 90 in reading. Make sense? Even if you get 100% marks in your reading tests, meaning 17 out of 17 correct, you can't still score 90 in reading. Why? Because then you have other marks coming from speaking and writing. If you don't get marks in them, you can't get 90. So marks are divided. But if you get 100% marks in reading summaries, 100% marks in speaking, and then if you miss 5-6 questions in reading, you can still score 90. Make sense? That's how it is. Do you remember in your admission test in our country, we had some universities where in the admission tests, there are 3 subjects: English, then maths, and then critical reasoning. So 3 sections, okay? English, maths, and critical reasoning. Now, in these 3 sections, even if you score 100% marks in English, yeah, and 70% marks in maths, you'll fail. You need to score 80% marks in all. Make sense? So even if you score 80% in English, 80% in maths, and 80% in critical reasoning, you will get opportunity. You'll pass the test. But if you score 100% in English, 100% in maths, and 75% in critical reasoning, you will fail. Similarly, so क्यों रहे हो मोनिका? पानी दे के आओ. अभी तुम ही जाओ देखिए. इससे कोई बात, बैठ जाओ, बेचारी साथ में जा रही. तो क्या करना है? Make sure you perform well in speaking as well as in writing to get 100% marks in reading. In reading, you don't have to score 100%. In reading questions, you don't have to score 100% to get 90 in reading. Okay, so please understand these things. Otherwise, PTE is something, ये जो score criteria है, they don't talk about the score criteria. दरवाजा पे देखना बंद करो. कौन है? क्या क्या देख रहे हो? कोई खूबसूरत लड़की भी नहीं है कि देख रहे हो. खूबसूरत लड़की देखना ठीक है. I mean, still it makes sense. If someone beautiful came and you just, sometimes you're dazzled by someone's beauty, aren't you? Yeah, we are. अगर कोई खूबसूरत लड़की आए मनदीप जी, जैसे आप कोई स्मार्ट बंदा आए, you feel, आपने सुबह क्या बोला? You feel like hugging आमिर खान. रणबीर कपूर, sorry, my bad. मंदिर जी ने बोला कि मनदीप जी likes रणबीर. मंदिर जी wants to hug. अगर आपने सिनेरियो दिया था ना, मैं क्या दिया था? आपने शाहरुख खान दिया था. मैंने कहा अगर आना ही है तो फिर why not you?
Does your husband know about it? Doesn't have any complaint. Let me call him. अब डर क्यों रहे हो फिर? जगदू भाई का नंबर है मेरे पास. श्योर फाइट नहीं होगा रात को घर जाके. मतलब हो सकता है, कोई बात नहीं. फेवरेट एक्टर हो ही सकता है, पर हग वाली बात इज टू मच. आपने कहा शाहरुख खान, मैंने कहा पर अगर सिनेरियो है ही तो बंदा तो मेरी चॉइस. मैं तो मजाक कर रहा था, आप दिल की बात मैंने बोल दिया आपने. मंदिर जी बोलेंगे ना सर हग इज टू मच. अब समझ में क्या बोल रहा हूँ? सॉरी मंदिर जी, डोंट फील बैड. ओके, जो मर्जी करो, आई डोंट से एनीथिंग. रणबीर कपूर कौन है? अच्छा, ऋषि कपूर का बेटा. रणबीर सिंह इज द macho man. रणबीर कपूर इज द चॉकलेट बॉय. अभी आजकल मैंने सुना बॉडी बना रहा है वो संजय की मूवी के लिए. संजय दत्त की मूवी के लिए वो बॉडी बना रहा है आजकल. आजकल कैटरीना रणबीर कपूर है एक साथ नहीं? ओ, तो फिर कौन है रणबीर के साथ? अच्छा, मैंने जो फोटो देखा फेसबुक में, फोटो आया था ना कि माहिका क्या, माहिरा खान ने बीडी, वो जो बीडीपी का जो फोटो दिया, हिंदी में बीडी होता है. वो सुना माहिरा ने गाली कैसे दी फेसबुक, किसी ने देखा? Do you know how Mahira responded to you guys? I mean, to people who criticize that? You don't know? You don't know her tweet? उसने गाली दिया, गाली, every single person who criticized, and the gali was horrible. You know the favorite gali you guys use, Punjabis use? I'm not saying anything, okay? Punjabis को पता है कौन सी गाली. Punjabis के लोग गाली बात शुरू करने से पहले एक बार, बीच में एक बार, लास्ट में. मैंने पंजाबी की बात करते हुए सुना, मतलब दिस इज अ कॉमन लाइक ये नो, जैसे पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, चाय पीते हैं. किसी ने बोला इसको गाली नहीं मानते उसको हम, ये लाइक फिलर्स, यू नो, कम्युनिकेशन में. I'm sorry to say that, निखात जी, I'm sorry, I'm coming to the class, okay? Don't be upset. हम पढ़ते भी है, ठीक है? पता है बेचारी के सहेली का स्कोर आएगा ना कल, प्रीति का, इसके बाद से अपसेट है. खुश हो, मोटिवेटेड, दैट इज स्पिरिट. प्रीति मेरे बहुत अच्छी स्टूडेंट है, आपको पता है. 7 इंच के लिए आई थी सनशाइन में, 8 इंच के, मेरा दिल भर गया उसका स्कोर देख. आई वाज लाइक वाओ, मतलब शी इज डिवोटेड, नॉट लाइक यू. ऐसे बोल सकता हूँ इंशाल्लाह. ऐसे गुस्सा दिखाओ, मैं तो इसलिए बताया था कि आप गुस्सा दिखाकर मुझे प्रूव करोगे. सर दिखा दूंगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगा स्कोर करके दिसंबर के अंदर. बुक किया दिसंबर के अंदर, डेट नहीं मिल रहा है. डेट ढूंढो, निकालो जमीन के नीचे से डेट, ढूंढते रहो सुबह शाम. दिसंबर में हमें स्कोर चाहिए इंशाल्लाह. कोई बात नहीं, डोंट लूज होप. इफ वी डोंट गेट द स्कोर इन दिसंबर, विल गेट इन जनवरी इंशाल्लाह. समझ रहे हो? अरे अल्लाह ना करे, अगर 80 स्कोर ना आए, 70 तो आएगा, 60 तो आएगा. ना आए हम क्या करेंगे? ना आए तो नहीं, ना इसे अल्लाह ने ऐसे रखा है. हम तो हार्ड वर्क करना हमारा काम है, स्कोर लेने का थोड़ी हमारा काम है. वो जिम्मेदारी अल्लाह की, अल्लाह देंगे. अल्लाह जो सही समझेंगे, मुनासिब समझेंगे, अल्लाह हमें वही देंगे. हो सकता है अल्लाह हमें 68 देंगे इस मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 100 दे देंगे. सही बात है कि नहीं? कितने हफ्ता देख जाते हो कि तुम्हारे टैक्सी में, टैक्सी वाले कोई है, टैक्सी वाले बात ज्यादा समझेंगे. एक हफ्ते में तुम सिर्फ 500-600 कमाया, तुमने बहुत क्वाइट, नेक्स्ट हफ्ते 1500 कमाया. ऐसा होता है कि नहीं? तो एक किस्मत की बात है, इसको तुम फोर्स नहीं कर सकते. अल्टीमेटली अल्लाह देंगे, हम हार्ड वर्क करते रहेंगे इंशाल्लाह. लूज होप हम कभी नहीं करेंगे. ऐसे नहीं कि दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ, दैट्स द एंड ऑफ लाइफ. नो, नेवर देयर इज एन एंड ऑफ लाइफ. इंशाल्लाह हम कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे जब तक नहीं जीतेंगे. जीत के फिर जीत के फिर छोड़ देंगे, चलो बस अब काम खत्म, पीटी के टेंशन खत्म. इसके पहले हम टेंशन खत्म नहीं है. वी आर इन आवर जर्नी. And the journey keeps going, every day the journey is moving. मैं जुम्मा नमाज पढ़ने गया ट्रेगनीना मस्जिद में. मस्जिद के बाहर दानिश याद है ना, लास्ट वीक स्कोर दानिश को मस्जिद में मिला. फिर बोला, फिर मैंने पूछा दानिश कैसा लग रहा है. मैंने सिर्फ पूछा कैसा लग रहा है. सर बहुत अच्छा लग रहा है. इसके पहले 2 हफ्ते पहले मिला मस्जिद में, सर कुछ करो. 2 हफ्ते पहले, ट्रस्ट मी.
सर कुछ 5 मिनट टाइम दे दो मुझे, कुछ के मैं बोला कि लगे रहो, आते रहो, बस आते रहो आते रहो। अभी देखो स्कोर आ गया। फिर मैंने पूछा शादी की, हाँ शादी सर पहले की, वाइफ भी यहीं पे है। तो देखो अभी लाइफ, लुक एट हिज लाइफ नाउ। 2 हफ्ते पहले एक टेंशन में था, मुझे पूछ रहा है मस्जिद में मिलता ऑलवेज मुझे, आज 6 बंदा मिला मस्जिद, मंदिर जी, अल्लाह की मेहरबानी, इतने बच्चे हैं हमारे उस एरिया में। 2 हफ्ते पहले सेम बंदा, कितना स्ट्रेस था, लुक एट हिम नाउ, ही इज सो रिलीव्ड। उसने बोला सर आपको अल्लाह ने जरिया बनाया हम सब के पास करने के लिए। मेरा दिल सुन के अच्छा लगा ना, बात तो सही है। मैंने क्या किया, अल्लाह ने जरिया बनाया, अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा मीडियम बना दिया तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, बट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ नाउ। तो आज जो मिल्क आज जो लिंक मिलेगा सबको, आज जो लिंक मिलेगा सबको। अरे इतने सारे बात करते हो, उल्टा सीधा निकल जाती है, मुकल जाती है, क्या हुआ Okay, now as you link me, like whatever link you're gonna get today, inshallah, you have to go home and memorize every single blank. Because today I'm not gonna remove anything like last time. Remember last time I removed everything? Today I'm not gonna remove anything. Inshallah, everything will be there. So you go home and then you memorize everything. Okay, don't be clever. Okay, let's take the screenshot. Even if sir changes the link, I can access them. ऐसा 2 नंबर नियत करोगे इंशाल्लाह, you will fail. मेरे दिल से दुआ है। जिसके दिल में चोर है, मतलब है दिल साफ नहीं है ना, पता है आपको, तो दिल साफ नहीं है, ऐसे इंसान कभी खुश नहीं होते। इनको पीआर मिल जाती है, हस्बैंड मिल जाते हैं, जबरदस्त पार्टनर मिल जाते हैं, सब कुछ है, बट दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। डू यू नो व्हाट इट मींस? आप खुद सोचते रहते हैं ये लोग, आई हैव गॉट मनी, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड रोमांटिक हस्बैंड, जो भी है जिस हिसाब से हो, आई हैव गॉट अ हाउस, आई हैव गॉट माय पेरेंट्स, बट स्टिल देयर इज एम्प्टीनेस। क्यों? बिकॉज दिल साफ नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है, मुस्लिम हो, हिंदू या क्रिश्चियन हो, if you are shrewd, very clever, opportunist, you always think about getting help, not helping others. Always too smart, clever, deceive others. You will never be happy in your life. पैसा कमा लोगे, पैसे से happiness नहीं मिलेगा। PR आ जाएगी तो you will get your PR ज्योति, but your husband will run away. What is the point of your PR? तुम कागज में क्या करोगे? घर पे बैठ के तुम क्या करोगे? PR आ गई, there is no husband. Do you have a kid? आप दूसरा लड़का ढूंढ के शादी करना is huge, I'm just telling you, what if, until and unless you change yourself, you make yourself a better human being. Every day is a better day. Yesterday 2 झूठ बोला, आज 1 झूठ बोलो, परसों झूठ बोलना बंद ही कर दो। You helped 1 person yesterday, today help 2 person, at least the same 1 person, at least same रहो, बुरा ना हो जाओ बस, ठीक है? Then you are my devoted follower. Inshallah, you will score quickly. You will be happy. बाल ठीक है, डिस्ट्रैक्ट, अब सब मिलकर बाल ठीक करना शुरू कर, बोलो क्लास का क्या होगा? पता नहीं, गर्ल्स डिस्ट्रैक्ट सो मच। एक तो मेकअप देके आते हैं गर्ल्स, टू मच मेकअप, डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं मनदीप जी। आप लोग देखोगे हमारे, क्या हुआ, मतलब मैं प्रॉब्लम मुझ में है, करते हैं इतना सारा मेकअप देके, अचानक लगता है ना टू मच मेकअप होता है ना, यू फील, तो तुम देखो मेरे आसपास जितने टीचर्स है, देखो मेकअप देख रहे हो, so, मैं आई हैंड पिक देम पीपल टू बी अराउंड मी। देखो शामा मेरे आसपास नहीं है ज्यादा, क्यों बोलो? क्षमा को बोलना बात, रुचि क्षमा को बोलना मत, ठीक है? डोंट टेक्स्ट हर। चलो कोई बात नहीं, रुचि बहुत खुश है ना, हस्बैंड आ गया ना इंडिया से। चलो ज्योति सुधर जाओ, अभी टाइम है। ये बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कौन क्या सोचते हैं। 7 आने के बाद तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं किया ना। When you scored 7, you didn't inform me. I didn't forget that. जब तुम्हारा 8 आएगा, जब तुम्हें 8 आएगा, तब मैं ये बताऊंगा सबके सामने। इस लड़की ने 6 मंथ बाद क्यों 8 आया, इसीलिए। When you scored 7, you didn't inform me. I deserve to know that because you are my student. I taught you. You didn't tell me. तो ऐसे तुम लोग बदलना जाओ स्कोर के बाद, प्लीज। स्कोर के बाद बदलना जाओ। वो लोग बदल जाते हैं स्कोर के बाद, स्वीट्स लेके नहीं आते बेशरम लोग, कितने स्वीट्स खा के जाते हैं बाकी लोगों का। इसलिए जब whenever someone scores, I text them. जब बच्चे मैसेज लिखते हैं ना, कल भी एक लड़का ने स्कोर किया 7 इंच, जो 70 हमारा स्कोर 7 इंच के, मैं बोला कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग स्वीट्स।
वो जो हैदराबादी श्रीनिवास है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक हैबिट बन जाए बच्चों का ना, क्योंकि ये स्वीट वाला जो हमारे इंडियन हमारा कल्चर है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ऑलवेज बने रहे। एक अच्छा फीलिंग होता है कि बच्चे ना, ये ग्रेटिट्यूड भी है ना, ग्रेटिट्यूड भी। आप लेके आओगे ना स्वीट्स, सब लोग स्वीट्स लेके आना है बस। तो इसको लेकर बदनाम ना करना, 1200 की नहीं 1300 के साथ एक ऐड कर लो स्वीट्स का भी। इनके फी 1400 है, 1300 है। अल्लाह सबको सही समझ दे। सो प्रॉमिस किया सबने घर जाके मेमोराइज करोगे, राइट? Alhamdulillah. Okay, now let's start the link. Now, Mandeep ji, you gave the link, right? Can you write the link, the 35 link first? And then I will add all these questions. So today what I'm going to do is, in the next 2 hours, okay, what I'm going to do is I'm going to give you all the links. Now, in the same file, at least जो काम मैं lazy होके कर नहीं रहा हूँ अकेला, है ना, वो तुम लोगों के साथ हो जाएगा, at least एक साथ सारा link हो जाएगा. I know it will be distributed unfairly to others. Some of you are so chore. इतनी बात सुनने के बाद भी कुछ लोग शेयर करोगे बाकी लोगों के साथ. If you do that, you are not my student. Don't call me your teacher. I'm not your teacher. You cannot share them with anyone in the world, not even with your housemate who is our student. You don't do that. If he wants the link, he has to be in the class. If he's not in the class, you don't share that. But we are giving it online as well. Yeah, they are watching us. ऑनलाइन बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर ये क्लास हमें भी दे दो, फिर मैंने सोचा दे दे कोई बात नहीं। ऑनलाइन में चोर ज्यादा है ना, कुछ लोग ऑनलाइन वाले हैं ना, लिंक देके ना एक बच्चा भरते थे 6 ना सीज पाई नहीं। someone pays and 6 students study at the same time. अब $2000 पे ऑनलाइन पे करना पड़ता है। अब एक बंदा कितना होता है, 300 करके 350 करके। और we got a student in Sydney who even sells the link, बेचते हैं, एवरीडे का लिंक बेचते हैं अपने दोस्तों को। I don't believe ये ऐसा भी कोई कर सकता है। कितना पैसे कमाता होगा वो पता नहीं। घटिया कम। दे दिया मनदीप जी लिंक? 35 वाला? Okay, good. Now everyone, I know you have done this. You have done this with us yesterday and day before yesterday, but don't worry, we're going to revise them quickly and then move on to the next questions. So can you see question number 1 to 35 in this link? Tell me quickly, everyone. मनदीप जी कमरे लेके आ जाओ, कमरे लेके बैठ जाओ। गरिमा चेयर लेके कमरे लेके आ जाओ, मारो को अटेंडेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो करेंगे। Bring a computer from Nadeem bhai quickly as soon as possible, and then we will do it. Is it opening? अर्श बताओ क्या लिखा है? पहला blank क्या? What's the first blank? Job hunting. Good. What's the last blank? 35. Remember the last blank? Higher education qualifications. We didn't do that in the class yet, right? We just okay, very good. Now, can you come to blank number 1, everyone, with me? Talk to me, everyone. Nikhat, are you there? If you cannot open the link, please talk to me now. Once I'm in the blank, then it will be distracting. Yeah, he needs help. Zahid bhai, come inside quickly. We need people. We need more support. Quickly come inside and help these people. If someone cannot open the link, you have to go quickly and help them, okay? Can you raise your hand if you can't open the link? Guys, but go quickly. Yeah. Let me smile. Good. Yeah, go, quick. Shall we start? No matter how long it takes, even if it is 7 p.m. today, I'm not going to leave until I'm done with all the blanks. Inshallah. Okay. Last time I know I couldn't do it, but this time I'm going to do it. मैंने मेरी वाइफ को आज बोल के आया कि अगर 8 भी बज जाए मैं इस क्लास खत्म करके आऊंगा। इंशाल्लाह उसने परमिशन दिया तो नो प्रॉब्लम। एक ही जगह से परमिशन चाहिए मुझे, my wife's permission. Other than that, everything is all right. My mom, my dad, I can convince them easily. My wife needs a little time. Okay. If she says yes, no problem, inshallah. और ये हम लिंक नहीं देंगे, साथ साथ we will keep studying them as well.
Okay, we'll study them 2 minutes per blank, inshallah. So, Sami, batao first blank kya? When it comes to job hunting, very good. Sami ko ek mic do, Mandip ji. Give a mic to Sami and give a mic to Monica. These two will be our, like two representatives. Yeah. Thank you, नहीं बोला तूने Mandip ji को. That's you didn't say. Give it back to her again, Mandip ji. फिर से. क्या सिखाते हैं हम बच्चों को? ऑस्ट्रेलिया में ये बात बहुत जरूरी है. हमारे कंट्री में आप तो कुछ नहीं बोलते हैं. यहाँ पे आने के बाद थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी इज ए मास. वरना लोग क्या बोलेंगे कि इसने कुछ नहीं सीखा. तो पता है सिंपल थैंक यू एक्सक्यूज मी ना बोलने का तुम्हारा जॉब नहीं होगा. इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब नहीं मिलेगा. बोलेगा ये कल्चर इस कल्चर के लिए सुटेबल नहीं है. मूड बहुत बुरा है, घटिया मूड लेके तुम्हारा इंटरव्यू देने का, फिर भी यू हैव टू स्माइल. क्योंकि तुम्हारे घर पे तो हस्बैंड ने क्या किया, दे वांट बॉदर, है ना. दे आल्सो वांट यू टू बी impartial, practical. Okay, so smile. ठीक है, good. Now, Sami बताओ पहला blank. When it comes to job hunting, first impressions are critical. मारोगुली बाकी पूरा बस नहीं चाहिए हमें. First answer is impressions. First one is impressions. Say it 5 times. Impressions, 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 impressions. Second one, attire. बोलो ना मुंह खोल के क्या हुआ मुझे. मैं बोलो, बच्चे नहीं बोल रहे, मुझे स्कोर चाहिए. तुम लोग बोलोगे attire. Positive. Investigating. Prospective. 5 blanks. 5 blanks बोलो बिना देखे. सुखबीर है ना. सब लोग चुप करो. सुखबीर बोलो बिना देखे 5 blanks. Impressions, attire, positive, prospective, investigating. उल्टा हो गया. Investigating, then फिर भी सही बात है. सभी बोलो 5 blank एक साथ देख के बोलो, कोई बात नहीं. क्या माइक बंद ना करो. माइक keep it on, don't turn it off, keep it running. Impressions, attire, positive, investigating, perspective. Perfect. So if you get Akash, I forget your name. Hardit baat na karo. Okay. Now next one, 4 blanks, 4th one missing. Private schools in the UK are Already. Yeah. So already, unwilling, and shift. Already, unwilling, and shift. Already unwilling and shift. I got a feeling, I got a message from an online student, I forgot her name, Deepika, I think, Deepika. And she texted me the 4th blank. Let me double check, guys. Give me a minute, I can find it for you. If Deepika, you are in the online class, can you text me? Account. Do you have account there? No, we don't. Now, can you write the 4th blank? I'm writing it, okay? 4th one. Account. Okay. Account, which means the passage is incomplete. Yes? So, we need to verify it from you guys. So, because we have got so many students, I'm sure one of you will get it tomorrow, day after tomorrow. Can you verify this? Wake up, baat to karo. Yes? Yes, sir. So remember that. Already unwilling shift. The 4th one, account. This is someone's recommendation, and that girl is very smart. I'm telling you why. Because this very girl gave me at least 3 blanks, and 3 of them are lamb. So she has got an excellent memory. Okay, so I trust her memory. Now, if someone has got a better memory or someone can verify whether it's account, please let me know as soon as possible. Whenever you get this blank or any blank, you have any recommendation or any update to give us, text me on this number. That's the best number. Okay. Now I'm soon going to change this number from text to WhatsApp. Text to WhatsApp. WhatsApp is better for us because we've got people from Patiala as well. Some people WhatsApp, some people message. It's a confusing thing. Maybe I'll make it WhatsApp for all. How about that? I think WhatsApp, everyone uses WhatsApp, yeah? Yes, sir. Yeah, WhatsApp is good. Now, number 3. Bata Monica. Off to with into.
Of to with into. पर question बोलना पड़ेगा ना. All approaches aim to increase. blood Now flow. yes, so I will give you 5 minutes to go through them all very quickly, okay? But before that, come to the last 3 blanks. 3 or 2? 3 नहीं किया हमने ना? हमने 32 किया था क्लास में, नॉर्मल क्लास में? So 31 to 30. 31 नहीं किया ना? Okay, very good. So guys, from 31 to 35, these are completely new blanks which I did this only in this session yesterday. I haven't given it to you guys in the normal classes. So these are the new blanks. Let's study them now. Number 31, please. Samir, बताओ 31 का in our study. Sorry, Sydney is becoming effective in making. Yeah, so remember that. Patronage, affordability, consumption. Comparable, patronage, affordability, and Consumption. and these are lambs, meaning 100% sure. You just have to memorize them. Sydney is becoming effective in making. Bas, that's it. Sydney is becoming effective. इतना याद रखो enough है कि ये blank जिसने मुझे दिया है मतलब this is 100% sure blank, 100% same शुरू same line. Sydney is becoming effective. Sydney is becoming effective. अभी 4 blanks क्या क्या है फिर से पढ़ लो. Comparable, patronage, affordability, consumption. Okay, 32, Monica. In our studies, those people on a high protein diet observed participants provide supplied. Observed participants provide supplied. In our तो clue क्या है? In our studies, those people on a high protein diet. So याद क्या रखोगे? High protein diet, high protein diet, high protein diet. चार आंसर क्या? Observed Participants provide supplied. Observe, absorb नहीं. Observed participants provide and supplied. फातिमा बताओ बिना देखे. Observed, provide, supplied. बोलो आपका नाम. प्रियंका बोलो. शर्म की बात है. फेल. बताओ आपका नाम. प्रीतम बताओ. Very good. बताओ जॉनी. And the question is, yeah, those who are on a high protein diet. Yeah, in our study, those who are on a high protein diet. High protein diet, high or low? High protein. Good. Number 33, Sami. A bonus of dendrochronology is that the width of substructure. Yeah, but remember these blanks. Wait 1 second, Sami. I have to tell you something. Dendrochronology. 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 Now, the first line is missing. The first line starts with dendrochronology, comma, then they talk about it. A little definition of it. A little definition of it. Now, the last 3 blanks, I'm not really sure whether the 4th blank is in between season and drought. The 4th blank, the one missing, could be before season as well. I can't confirm that, but luckily I can confirm the passage, and these 3 blanks I'm sure about. Season, past, and drought. So remember that dendrochronology ke baare mein there is this reading summary as well. There is a, remember, there is a summarized written text as well, but this is different. This is a new blank people are getting these days. So dendrochronology wala blank mein ye 4 words mein 3 are confirmed. One is season, past, drought. Season, past, drought. इसका ऐसे याद रखो, past season में drought हुआ था. Past season में drought हुआ था. तब पानी नहीं था. याद करो बस, ठीक है? Let's make connection like this. Now dendrochronology मतलब क्या है? Tree ring है ना? So last season में पानी नहीं मिला, वो वृक्ष मर गया था. Good connection. You see? Last season, past season में drought हुआ था. Tree ring. Tree ring मतलब dendrochronology. Tree मर गया था. बस पानी नहीं मिला, tree मर गया. So the connection is dendrochronology or tree ring. So 3 answers are past, season, drought. Oh, season, past, drought. और कौन क्या बोल रहे थे? Who was asking me something? Yeah, Niyaz bhai. Singara, puri, dosa. Oh, rain-made dosa puri. कितने बनाया? समोसा. समोसा पानी पूरी दो. अच्छी बात है. सर पर डंडा. वाह, सर पर डंडा. सारे क्रिएटिव लोग हैं यार. सिर्फ स्कोर नहीं आ रहे बेचारे की. 34 मंदिर जी. मंदिर जी तो नहीं. मंदिर जी आप तो आज माइक नहीं आपके पास.
Yeah, Monica. The contemporary ministerial staffing system is large, arrangements operating fragmented. यहाँ पे कोई लग रहा है पहला क्लास चल रहा है ना यहाँ पे कौन है, कौन निंदा सर है वहां पे? सुनो मेरी बात यहाँ पे. The contemporary ministerial staffing system. The contemporary ministerial staffing. Easy क्या है? Ministerial staffing. Minister staff. Three arrangements operating fragmented. Arrangements operating fragmented. Arrangements operating fragmented. इसको जैसे मर्जी याद कर लेना. That's it. Sami, 35. Higher education qualifications, advantage, comparative. Advantage, comparative. One of the blanks is missing. There were 3 blanks. One of them is missing. We can't say it, but the passage is the same. If you have got this passage, ab haath kyun utha rahe ho? Acha. And if anyone from any branch has got this blank in your exam, please give us your update. Somya ko bolo niche baith ke hase hum dekh rahe hain. So any blank, anyone agar kisi ka koi update hai, please let me know the third blank. Kinjal, wahan pe dekh. तो क्या होगा आंसर? बोल देना हमें टेक्स्ट करके. प्रियंका, वेक अप. वहां पे क्या देखा? पता नहीं सारे लोग. देयर वाज अ बंक. तो मनदीप जी पीछे से आए. पिछले जो मेकअप करते हैं उनके लिए तो पीछे से देखो हम बोलते हैं ना बांग्ला में बोलते हैं चोरेर मन पुलिस पुलिस. मेकअप बोलने के बाद सुमे ने नहीं हिला, समा हिली. क्यों बोलो? मेकअप बोलने के बाद शमा को ही लगा अच्छा मैंने मेकअप किया. Makeup is not bad, you know. You can hide your pimples and. मैं सोच boys क्या करते हैं? What do boys do when they've got pimples? Huh? Boys tension नहीं करते ना. Girls are so much conscious, है ना. Now boys अगर score करते, if the girls score, they should be appreciated more because they've got so many things to deal with. They can't just come out of their home. Boys क्या करते हैं? लुंगी से trouser change कर दो, pant पहन लो, within a minute dress change, बाहर. No, within a minute. अगर बोलते हैं दोस्त बाहर आ जा, क्या करेंगे? बिस्तर से जंप करके उठ के आया बोल के 2 मिनट के अंदर बाहर. गर्ल्स तो 5 मिनट के मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ. Wait 5 minutes, I'm coming in half an hour. ऐसे होता है मनदीप जी? पूरा दिन में कितने बार बाहर जाना पड़ता है उनको? Especially जो girls cannot do without makeup. Some people are so quiet and calm. Yeah. So मनदीप जी आप क्या बोलना चाह रहे हो? मनदीप जी ने एक जबरदस्त बात बोला. मनदीप जी कुछ काम भी करते हैं आजकल. गुड. नाउ मनदीप जी ने बोला कि प्राइवेट स्कूल्स वाले ब्लैंक्स में मनदीप जी उस पैसेज ढूंढ के she found the real passage. In fact मैंने ही मिला पैसेज. मैंने से वो थर्ड पैसेज मनदीप जी ने क्या किया? मनदीप जी उसको एक्सप्लोर किया because the third passage में उनको मिला एक अकाउंट. There is a very good possibility that they took it from the third passage. Overseas students now account for about 500 million pounds of fee income a year. मनदीप जी ये आप मुझे कॉपी करके दे दो, ठीक है? मैं डाल देता हूँ यहाँ पे. There's a good possibility यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है? वही दे दो, वही पैसे दे दो. ओवरसीज बोलो, ओवरसीज स्टूडेंट मुझे बोलो मैं दे दूँ. ओवरसीज स्टूडेंट्स now account for about 500 pounds. का साइन कहाँ पे है? साइन है कहाँ पे यहाँ पे? टाइपिंग में कहाँ पे? कोई कहाँ ढूंढूं? मैं लिख दूँ पाउंड्स. बस डॉट 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 बाकी समझ लेंगे ये लोग, ठीक है? Can you see the change in number 2? That's it. Number 35 हो गया ना? All done. Now I want you to go through them in 5-10 minutes. Then we will come back with the new blanks after discussing with each other. Number 36. Okay, everyone, study. Make a noise. Make noises as much as you want.
पे जाओ करीमा उस टाइम पे ओपन हो और मुझे कितना हेल्प करो एक ही टाइम एक साथ करते टाइम researchers already know that spending long periods उसमें है इसका मुझे एक काम बताओ मुझे ऐसा भी डाल दो अब मुझे बोलते रहो ना जल्दी जीरो ग्रेविटी में हाइड्रोजन है आप बाकी काम बंद करो यही करो मतलब नेक्स्ट वाले को मतलब मैं क्या बोलूं yes तो चेक चेंज हुआ सर चेंज हो रहा है ना मेरे से ये ना तो ऐसे भी करो गई मतलब क्या 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 नहीं है देखिए और कुछ काम नहीं पॉइंट अगर कागज में लिख के रखो इफ यू लाइक तो ये नहीं है फर्स्ट टाइम नहीं है मैंने समझ में क्या बोला मैं क्या कर समझ गया ना हेलो आगे जाते रहो करेंगे जब पूछो तो बोलना ये बताऊं इन बात करेंगे इन बात करेंगे अगर आप काम देख लें Okay, guys, can you come to question number 38, everyone? DNA barcoding. Can you, looks like this is better if we talk to you guys because many of you have had the same exam. So instead of wasting our time, we should consult you first so you can give us your feedback on this on this question. Number 38 में आ जाओ, DNA barcoding. Can you see that? Everyone talk to me. Yes, DNA barcoding किस exam में आ चुका हाथ उठाओ? Do you remember the number of blanks? 3 or 5? Now, can you check number 38 में जाके? Can you check that? Which one? I was putting the proof maintain sample. Proof maintain samples. DNA barcoding में हमने एक ही वर्जन किया ना? हमने proof उसका अच्छा मनदीप जी पहले काम करो इसको टेक्स्ट पूरा कर देते मुझे बताओ हाँ बताओ ये ए generate ढूंढो दिव्या तुम्हारा कभी नहीं आया तुम्हें डीएनए बारकोडिंग anyone from any other branch बाकी ब्रांचेस में तुम लोगों को प्लीज पार्टिसिपेट करो टीचर्स उनको बताओ अगर किसी का आया है तो जरूर हमें बताए प्लीज और जब ये लोग अपडेट दे तुम लोग टीम में और हैंगआउट्स ग्रुप में करिए डाल दो जल्दी करके ऑलराइट वो तो डिफरेंट है वो तो डीएनए फिंगरटिप है डीएनए फिंगरप्रिंट है ना ये डिफरेंट है ओके एफ
What's your name? Can you remember? You said you got this new exam. Long time ago. In Nepal. Jane. Age? Okay. 38 के बारे में कोई ने अपडेट नहीं दिया हमें, so we keep this blanks like this. Okay, if you want to change them, we'll change them later. At least you've got the passage. When you get the whole passage, it is rather better for us that we've got the whole passage. Means no matter where they ask us the questions from, we can answer. Okay, so when you don't have the passage, we just remember the answers. That's when the doubt. That's when we are a little scared. Why? Because if they change in a blank, we are we are gone. But if we go through this passage 5, 6, 10 times and write it 2, 3 times at least, no matter where the question comes from, we can definitely answer them. All right? बात बंद करो पीछे. Okay, number 39 Mandeep ji. और देखो मैंने और भी 2-3 क्वेश्चन अपडेट किए. देखो 36 and 37. Can you go through them quickly, guys? 36 and 37. Any question? Ask me immediately. Any update, any feedback you had them in your exam, update me immediately so I can correct that. Mandeep ji, number 39 बताओ. लैम अभी तक नहीं है शायद, पता नहीं. हम कर लेंगे लैम बाद में अपडेट करेंगे. रिक्वेस्ट करेंगे तो पूछ लेंगे बाद में. At least let us get the database first. Number 39. ऊपर लगा पे हैं नंबर नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर. Okay. B. C. C. E. Can you come to question number 39 everyone? 39. अगर मैं देखूं तुम लोग बातचीत कर रहे हो, एक्टिव नहीं हो तो क्लास से निकाल दूंगा, मैं बता रहा हूं. ओके, डोंट डू दैट. या बताओ किंजल. 36 तुम्हारे एग्जाम में था, इंग्लिश में आया था, गुजरात में नहीं आया था. तुम्हें पूरा याद है? बताओ कितने ब्लैंक्स थे? हाँ, कौन से 3 थी बताओ. जीरो ग्रेविटी, यू आर श्योर? मैंने क्या क्या भूल जाओ, तुम्हें क्या एग्जाम में बताओ. Failure was okay. So we got an update from a couple of students. They are saying vision was not the answer; it was actually failure. What we're going to do? We're going to put both of them. Okay, to be on the safe side. To be on the safe side. हमारे Nepalese लोग बोलते हैं सा को शा, शा को सा. Raju said sunshine. You see that? Nepalese is like a, Nepalese पहचानने का अनमोल तरीका. अगर कोई स्पाई मूवी में बोलते हैं आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल, ओके से सनशाइन. सनशाइन बोल नहीं पाए, मतलब है फंस गए. दिस इज जबरदस्त तरीका. ओके, नंबर 39 देखो सब लोग. 39 में आ जाओ. फ्रॉम द वुल्स पर्सपेक्टिव, दिस इज क्लियरली, दिस इज अ कॉमन ब्लैंक. नाउ फर्स्ट वन, सब लोग पढ़ो मेरे साथ. कोरिलेटेड 3 बार बोलो. 3 बार. ये अवॉइडिंग. सुमेरा जी, सुमेरा. Third one, bolo, claimed. Colonies, colonies, colonies. Struggling, struggling, struggling. Grazing, grazing, grazing. Now, if I see, Yasmin ji, if I see you are not reading with me, Tosif bhai, then I'm going to punish you. I'm telling you, punish you hard. Now, मुझे बताओ प्रियंका, 5 blanks क्या क्या है बताओ. 5 6. Struggling and
Grazing, very good. Correlated, claimed, correlated, avoiding, claim colonies, struggling and grazing. That's it, number 40. Does anyone have any update to give on this question? No? 35th को किसी ने अपडेट दिया? स्प्रिंगवेल से अपडेट दिया किसी ने? क्या दिया बताओ? Unemployed. Wow, this is a new blank. Just someone got it yesterday. So I'm happy with this. Everyone, follow me. 35 number blanks ke bare mein. Someone just gave us an update from Springvale that she or he had this in her exam, and they're sure about which one, Madhip ji? Unemployed and Second line, right? yeah, and higher income. This next one. Higher. So was it 4 blank or 3 blanks? 4. Okay. How sure is he or she? Incomes or higher? Which was the answer? Higher. Higher was. Higher is the answer. Okay. Can you see the changes, guys? So this is a very good opportunity for us that we got the real passage and we got 4 blanks. Someone confirmed, 1 girl confirmed 2, and the other one from Swingwell confirmed another 2. So maybe looks like these are the real answers. We won't say they are lamb because we want someone to confirm as well, the third person to confirm. So advantage, unemployed, higher, competitive. Advantage, unemployed, higher. They got it yesterday. Yesterday means the memory should be horrible. Yeah. अब yesterday के बाद एग्जाम के बाद मैं पूछता हूँ बच्चों का, आपको पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं मनदीप जी. Someone texted me, believe करो, कल मुझे SMS किया है, sir, I'm sorry, I got 3 blanks but no listening summaries. सुन, इसके बाद आधा घंटे बाद, sorry sir, I got 2 listening summaries. मतलब क्या है? He didn't memorize. He doesn't even know that they are in our summaries. चोर पकड़े गए ना, उसको लगा I didn't get any summary. आधा घंटे बाद मैसेज आया, मतलब उसको अंदर जाके देखा. मेमोरी तो बात की बात है, उसने पढ़ा भी नहीं होगा. How come he can't even remember? So तुम लोग ऐसे करते हो. सही है, सही हो रहा जो हो रहा है. अभी तक आ रहा मतलब फेल किया तुमने, फेल करते रहो इंशाल्लाह. Keep doing. So don't memorize, keep failing. समझो? Good on you. Keep doing it. हमारे तो अच्छा है मनदीप जी. I like a full class. I like the classroom to be full like this. Sir, fail करके आते रहो. I'm happy. तुम मुझे कभी नहीं दोगे I'm upset with you because you failed. I would always say, don't worry, Naval, keep coming. I love your company. I love my old students more because I develop intimacy with you. We become good friends. It's good for us, but then not good for you. Okay, fail karte I don't mind. Number 40. Okay, so memorize it. Memorize number 35, the new 2 blanks, and 39 in 2 minutes time. I'm going to give you number 40. Mandip ji, quickly batao. Everyone come to question number 40. 40 ke bare by the Bronze Age ke bare mein. Does anyone have any update? How many blanks have you had in your exams? Yep, Arsh batao. Which 4s?
No vessels. Okay, no vessels. How sure are you? 110% तो डाउट करते हैं. I can trust you. Yeah. Vessels तो हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं. Next बताओ. Colony. Then wine. Added नहीं था. Okay. Containers नहीं था. कहाँ पे containers? Fourth कौन सा है? Fourth. That's it. Yeah. You had the same thing, Monica. अब क्यों बोल? पहले क्यों नहीं बोला? अब क्यों बोल रहे हो? तो 40 के बारे में we got an update. Colony, wine, containers, and traded. So have you all got it? So if you have any other blank, extra blank, update us. But in the meantime, keep them in your memory, memorize them, spend more time at home and memorize them. 39 के बारे में update मोनिका ने दिया. मोनिका बताओ. Second para was not there. तुम भी confirm करो अर्ज. How much can I trust you? 100%. चलो दोनों गर्ल्स अगर बोला तो फिर हमें डाउट कर ही सकते हैं. कोई बात नहीं. So 39 के बारे में these two girls confirmed that we got this wolf's perspective में first para was the only passage, then they had nothing, 4 blanks correlated, avoiding, claimed and colonies. काश मैं भी स्टूडेंट होता, मेरे भी टीचर ऐसे हमें ब्लैंक्स बना के देता और बोलता घर जाके मेमोराइज कर लो. काश कितना अच्छा होता. और ये भी होता कि ये मेमोराइज करने से मुझे 80-90 आ जाना था और मेरे पीआर भी आ जाने थे. पीआर आना था, आनी थी, जो भी है ना. ऐसा नहीं था हमारे जमाने में, हमारे टाइम में. क्या जबरदस्त एग्जाम तुम लोग दे रहे हो. पीटीए अनबिलीवेबल. आई डोंट बिलीव कि ये जमाना भी आएगा, पियर्सन ऐसे करेगा. आई डोंट बिलीव इट. इज इट बिलीवेबल? इट्स नॉट बिलीवेबल. इट्स रिडिकुलसली अनबिलीवेबल. Okay, now next on number 40. 40 done. 41. So in the meantime, 39 and 40, spend 2 minutes to memorize. Mandeep ji batao. Now, does anyone have an update on question number 41? Controls, changed, enterprise, stocked, and potent. Anyone? Have you had this in your exam? Yeah. Do you have anything to say about this? If you have nothing. Okay, so far हम इसको ऐसे रखते हैं फिर. Good on you. Memorize करो जल्दी करके guys within 2 minutes time. मंदिर जी नहीं, गरिमा बताओ next.
Everyone look at question number 42. Mental consumer. इसके बारे में does anyone have an update to give us from your own exam experience? No? Good. Estimates, tremendous, consumers, effectiveness and alternatives. Now बोलो पांच आंसर बताओ मुझे पीछे. आतिक भाई बताओ पांच क्या क्या है, बिना देखे बताओ. तो देख के बता दो. अब नहीं हुआ, शर्म की बात है. बता दो किरण. किरण and alternatives. अब रवनी बता बिना देखे. Consumers, effectiveness, tremendous. शुक्र है ये सारा बोला तो घूम फिर के. Estimates, tremendous, consumers, effectiveness and alternatives. क्योंकि ये lamb नहीं है, so we cannot just memorize with a particular sequence or something. So let's see. Just word याद कर लेना. 42. Memorize करो within a minute, everyone. So use this time to memorize. Don't waste it. ठीक है? Now look at question number 43, everyone. The most vital ingredient in Indian cooking. The basic. The first one, vital. Second one, basic. Third one, Fatima, baat to karo. We have to say. Baki piche log so क्यों रहे? Kiran, wake up. Ramnik, Harry. You have to respond. You have to participate. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, last one. Ria, Ria बोलो बिना देखे. Very good. Look at the memory, guys. सीखो सीखो. Jealous बनो jealous. तुम लोग jealous बनते हो. किसने गाड़ी खरीदा, किसी ने घर बनाया. jealous. अच्छा काम में jealous बनो. ये अच्छा काम है. वो लालच अच्छी बात नहीं है. वो भी लालच अच्छी बात ही नहीं हुआ है कि I will also buy a car. I will also become. I will also buy a house. वो भी अच्छी बात है कि उसने किया. अच्छी बात है, मैं भी करूंगा, है ना. हार्ड वर्क करना पड़ेगा. लालच करके jealous बन के तुम बैठे हो, कुछ हार्ड वर्क नहीं करो, कैसे क्या करोगे, है ना. So you have to work hard to enjoy success. Otherwise, ऐसे लालच करते रहोगे, बाकी लोग सक्सेस लेके दुनिया भागते रहेंगे, हम तुम पीछे रह जाओगे. समझे प्रभजोत? चोरनी क्लास की मिस कर दिया एक हफ्ता. क्या हुआ इसमें? हस्बैंड ने किस साइज में मारा? स्ट्रेस की वजह से.
Everyone come to question number 44. We are taking roughly 1.5 minutes per blank, maybe 2 minutes maximum. So this space is not too bad. We're doing well, doing all right. Now the 44 blanks में आ जाओ. Founded after World War II. Now किसी को कोई update है इसके बारे में? Excuse me. And same blanks. So Johnny is saying he got the same blanks. Now we cannot. Exactly. He's got a good memory. Let's see. I can't 100% say lamb yet. Yeah. But this is like someone is confirming and he is a regular student and his memory is good also. So we can maybe trust him. So remember that. Okay. So this is like very much lamb, but you can't say it. So found it after. So first one. But our first blank क्या है? मेरे साथ बोलो मनदीप. मेरे साथ. First blank. Second blank. Third one. Fourth one. Last one. Very good. Okay, now let's order pizza. नदीमा को बोल दो, राइट को बोल दो पिज्जा ऑर्डर कर दे बच्चे के लिए. 6 बजे अंदर पिज्जा आ जाए. 6 बजे पिज्जा आ जाए. 50 लोग हैं. 50 लोग हैं. पिज्जा के लालच में आधा घंटा सही रहेंगे बच्चे. ट्रस्ट मी, क्योंकि घर जाके खाना है तो बहुत टेंशन है. घर जाके क्या बनाए खाना है ना. जितना मर्जी पिज्जा हम कुछ नहीं बोलेंगे. खत्म कर दो पहले. लोग नाम आई डोंट केयर. खाना टूट पड़ो. खाने वाले में कोई लालच, कोई वो नहीं है. नो कंट्रोल. बातचीत बंद करो. एक ही कंडीशन है, बात करोगे तो पिज्जा नहीं मिलेगा. काउंट कर लो कितना है. बोल दो जाहिद को कि 70% वेज है, बाकी नॉन वेज. हाँ, वेज नॉन. 70% वेज चाहिए. पता है नॉन वेज बेशरम वेज भी खाते हैं, पर खत्म हो जाते खत्म हो जाते. ऐसे करो 60% वेज. अर्श को बोलो ऑर्डर कर दे. अर्श को बोलो पैसा हम देंगे, तू ना देना. अर्श को बोलो कि जाहिद के साथ अर्श जाके तुम ऑर्डर करके आ जाओ. फिर जाहिद भाई पिज्जा कितना चाहिए हिसाब कर लो प्लीज, दे दो. ठीक है. बाकी ब्रांचेस तुम लोग टिश्यू ले लो, मुंह पोंछ लेना जब हम पिज्जा खाएंगे. डोंट स्पिल एनीथिंग फ्रॉम योर माउथ ऑन द टेबल प्लीज. मेक श्योर करो. बाकी टीचर्स टेबल में टिश्यू दे देना मुंह पोंछने के लिए. देखो हम इतना हम टेक केयर करते हैं बच्चों. कल हमने स्वीट्स दिया है तो आज हम और कुछ नहीं देना चाहते. नंबर 45. गरी में चले, गरी में जल्दी आ जा. 44 मेमोराइज करो विद इन अ मिनट. आई एम कमिंग. नंबर 45 कुछ बोलना है. अदनान, अदनान क्या बोलना है बताओ. तुम ये बताओ मुझे अदनान. अब जॉनी बोलने के 6 मिनट बाद क्यों बोला तुमने, पहले क्यों नहीं बोला. आई नो वोडाफोन इज हॉरिबल. मस्जिद में गया, मस्जिद में नेटवर्क कुछ नहीं है. आई डोंट बिलीव वोडाफोन का ये नेटवर्क है आजकल. चल नहीं रहा. आई नो वाईफाई लिया, हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है. गाइस इमदाद पीटी स्टूडेंट्स, इमदाद पीटी स्टूडेंट्स 1 एंड स्टूडेंट्स 2, ये दोनों वाईफाई सही चल रहा है. तो तुम लोग इमदाद पीटी स्टूडेंट्स, अच्छा, इफ योर इंटरनेट इज वर्किंग फाइन डोंट वरी. अगर काम नहीं कर रहा हाथ उठाओ. इंटरनेट इज प्लेइंग अप, रेज योर हैंड. ओके, अभी डिवाइड कर दो. इस साइड इस आधा लोग स्टूडेंट्स 1 में ज्वाइन करो, आधा लोग स्टूडेंट्स 2 में ज्वाइन करो. इज इट क्लियर. सेम पासवर्ड, सेम पासवर्ड. अभी देंगे हम पासवर्ड, पर सब लोग एक में ज्वाइन ना करो. बाद में फिर मॉडेम बिजी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा. सो ये साइड में जितने लोग हो गरिमा, इनको बोल दो स्टूडेंट्स 1 में ज्वाइन करो. स्टूडेंट्स फाइल, स्टूडेंट्स 1 पासवर्ड बोल दो गरिमा. हाँ बोल दो. Yeah, 30 foot square 11, 30 foot square 11 foot square F capital.
ये वाले जो है राइट में जो हो इंक्लूडिंग राजू 2 में सेम पासवर्ड बट 2 में ज्वाइन करो. डन. बताना जब हो गया. 30 फुट स्क्वायर 11 फुट स्क्वायर का सिर्फ एफ कैपिटल, बाकी सिर्फ बाकी सारे लोअर केस. Yep, students 1, students 2. All done. Now next question में आ जाओ 45 में. गरिमा आ जाओ जल्दी. अगर बाकी लोगों का हो गया तो फिर रवनीत का इशू है. Restart the phone and then don't turn it off. Don't turn it on. Too many already? I know what you're saying. Sir, हमें तो और किसी को ना दो. At least open तो कर पाएंगे. वोडाफोन ओपन ही नहीं हो रहा है बेचारे. जल्दी बोल दो. वाईफाई से है सब अभी सबने वाईफाई ज्वाइन कर लिया अभी सो जाएगा. Everyone come to question number 45. Quickly साहिल 45 में आ जाओ. थिया प्रोक्टर के बारे में जो ये 5 ब्लैंक्स 5 और 4 5 ब्लैंक्स हमने दिया है. Do you have any doubt? First one, recruits. Second one, remain. Third one, aspect or aspects. Singular, yeah, one aspect. Fourth one, limit. Fifth one, varied. Did anyone yeah? Did anyone get this in your exam? Raise your hand if you have them. No? No one. Okay. कोई बात नहीं है. Please memorize this in a minute. Then we're going to go to 46. रिस्टार्ट करो रिस्टार्ट करो. Okay, now 46A. बोल देना किसको याद है तो जल्दी करके. During the day. बोल दो. गरिमा याद है? Monica, go to question number 46. During the day, sun heats up. First one, water, yeah? Good. B, warmer. C, compensate. Who's that? Very good, Joanna. ऐसे चाहिए हमें बच्चे. Difference. Very good. Now, can someone verify all these answers from your exam experience? No one in foot square. Joanna, do you think they're the same or same blanks? Okay, Jyoti ने भी बोला है कि Joanna बोला. Very good. Now 4 blanks फिर से याद कर लेते. During the day, the sun heats up. The sun heats up. Water, warmer, compensate and difference. मैं सही लिखा ना spelling? सही है? Perfecto. 46. रट्टा मारो guys. नियाज भाई. Score कभी नहीं आएगा. प्रियंका, everyone memorize them. Memorize. कासर भाई, memorize them. आवाज करो, शर्माओ मत. यहाँ पे सारे लोग स्टूडेंट है. यहाँ पे चिल्ला के पढ़ो. Make a noise. Yeah.
Everyone come to question number 47. Guys, ये जो टाइम मिलवा ना 1 मिनट बीच में, use this time effectively, memorize करने के लिए. Yasmin ji, next question now 47. Colorful poison frogs. Can you see that? So colorful poison frogs को इस नाम से याद रखो. Colorful poison frogs में how many blanks? 5. Diversity, reservoirs, counter, tropical basin. Diversity, reservoirs, counter, tropical basin. Anyone has any update? Please give us. No one. Not too bad. Move on. Number 48 हम करते हैं. तुम लोग इस in the meantime memorize कर लो. Okay, come to question number 48 everyone. Ursh 48 में आ जाओ. Persistent transition के spelling mistake हो गया. Transition, then forced, optimistic and risky. Can someone remember or verify? Did you have them in your exam? No one in this class had them in your exam. Okay, at least हम इसको याद करके आगे जाते हैं. If you have them in your exam, please update us. If you remember later, don't worry, update me on my number, please. WhatsApp is better. WhatsApp me, okay? Persistent, transition, forced, optimistic, and risky. मुझे बिना देखे बताओ किरण. बिना देखे means without looking. You can do it. So, okay. Look at it now once and then without looking. Persistent. Say it, Kiran. Optimistic and risky. अब बोलो, देखते हैं तुमने हंसा उसके ऊपर. बोलो. Very good. फिर भी हंसना नहीं चाहिए था. Number 49. हम करते हैं तुम लोग इस रट्टा मारो please. Everyone come to question number 49. The morality of the welfare state depends on, the first one depends, then comes contribute, then educate, against and observes. Against and observes. Okay. Okay. Now the morality of the welfare statement depends, contribute, educate, against and observes. Very good. Rattamaru within a minute. 50. Garima. देखना क्वेश्चन नंबर 50 the trigger point causes. The trigger point के बारे में stretched, contraction and pushed. Can someone verify? सारे बुद्धू लोग एग्जाम दिया कभी? How come you didn't? मुझे लगता है एग्जाम दे तो आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लेके जो आएगा देखा जाएगा. कुछ याद भी नहीं रखते सारे, इसलिए तो स्कोर नहीं आता. मेमोरी भी हॉरिबल है. आया कि नहीं ये भी नहीं पता, आया कि नहीं आया.
अरे मेरे 2 साल पहले आ गए, मुझे अभी भी याद है कि क्या आया था मुझे। प्रवनीत, और एग्जाम नहीं दिया तुमने। वेरी गुड, तुम ही अच्छे हो। फर्स्ट वन स्ट्रेच्ड, कंट्रैक्शन एंड पुश्ड। मेमोर हरदीप बोलो 3 क्या क्या है, बिना देखे बोलो, बिना देखे। 2 मिनट्स लेटर। फिर भी नहीं हो रहा, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है। टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। एटलीस्ट आपने तो हो रहा है, शुक्र करो। हाँ, Are you 48? I don't believe it. डॉक्स में जल्दी आ रहा है ना, सफारी में? डॉक्स में अभी नहीं हो रहा है। तुम डॉक्स में हो? डॉक्स में जब नहीं चलता है उस वक्त बंद नहीं, थोड़ा सा वेट करके रीस्टार्ट कर दो उस ऐप को, फिर ठीक, एक बार ठीक हो गया डॉक सही चलता है। फिर भी सफारी में नहीं अच्छा है। देखो डॉक्स के बारे में देखो, लोग अच्छा फीडबैक है। सफारी डॉक्स यूज करो, प्रभजो डॉक्स यूज करो एवरीवन। 50 आ गया कि नहीं? आ गया सबका 50? हरदीप अभी आ गया ना? वेरी गुड। स्ट्रेच्ड, कंट्रैक्शन एंड पुश्ड। अभी कैसे याद करोगे? द ट्रिगर पॉइंट, द ट्रिगर पॉइंट। अब मुझे बताओ हरदीप, क्या क्या आंसर? 3 बिना देखे। स्ट्रेच्ड, कंट्रैक्शन एंड पुश। नंबर 50 हम 51 करते हो, तुम लोग जल्दी रट्टा मारो विद इन अ मिनट। Come to question number 51, everyone. 51. Essays are used as an assessment. Essays are used as an assessment. सब लोग मुंह बंद रखो, यहाँ पे देखो, मेरी तरफ देखो। यहाँ पे क्या पनिश करूं? वाई सर, बात क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो। आप किससे बात कर रहे थे? आप किन से बात कर रहे थे आप अभी? चलो याद करो तो ठीक है। 51 एसेज में देखो कितने ब्लैंक्स हैं? 6. Evaluate, argument, throughout, depth, particular and certain. Now can is 100% wrong क्योंकि 6 ब्लैंक से भी आ ही नहीं सकता। ड्रैगन ड्रॉप में 6 ब्लैंक्स, 6 ब्लैंक ड्रैगन ड्रॉप में कुत्ता ने काटा है। आई डोंट बिलीव इट्स एग्जाम दिया था तुमने जिस दिन, इसके पहले हस्बैंड से तुम्हें झगड़ा किया होगा हस्बैंड के साथ। आई डोंट बिलीव 6 ब्लैंक ड्रैगन ड्रॉप में, छोटा सा पैसेज में 6 ब्लैंक रह क्या जाएगा इसमें? हाँ, ड्रैगन ड्रॉप में 6 आया है। अभी जो दिन कोई तो सबको सपोर्ट करे ना डिप्लोमा में। चलो कोई बात नहीं है। सो गाइस कोई बात नहीं है। मुझे प्रभजोत ने, अर्श ने, ये दोनों प्रभजोत यही आया था। प्रभजोत इज गुड लायर, यू नो, यू कैन ट्रस्ट हर। प्रभजोत को देख मुझे पता है क्या लगता है? आई गेट अ फीलिंग तुम्हें देखे जब भी मुझे लगता है कि होता है ना कोई जगह में पैसे देकर जो झूठ गवा देते हैं। शी कैन डू वेरी वेल। आई ट्रस्ट यू। ओके, कोई तो ना झूठ भी ऐसे बोले पता ना चले। वेरी वेल डन। इससे पता चले मतलब 100% श्योर है। गुड। एसेज आर यूज्ड, पहला वाला बोल पिनल, इवैल्यूएट, आर्गुमेंट, थ्रू आउट, डेप्थ, पर्टिकुलर, सर्टन। प्रीतम, सब लोग सुनो। प्रीतम बताओ। अगर तुम सारे 6 सही बोलोगे आईफोन 10 फॉर यू। मजा कर रहा था, ठीक है। I was mazaking, okay? But there is a good possibility on Monday I will have, खोल दो पीछे, फंस गया कोई भाई, पीछे खोल दो।
There is a possibility on Monday I'm going to give you an iPhone 10 for one student in Footscray only. बाकी लोग तुम लोग same मुंह पूछते रहो टीचर से. हम चाहते हैं कि एक कंपटीशन करें. There's a good possibility कि हम एक कंपटीशन करेंगे, summary competition. So I will tell you to write one summary only. सब लोग इस क्लास में बैठेंगे, एक समय लिखोगे, सबसे पहले जो सही लिखोगे iPhone 10 for him. हमारे पास एक iPhone 10 ऑलरेडी खरीदा हुआ है. मैं सोच रहा कैसे उसको दूं, वही सोच रहा था. बहुत दिन से मेरे पास है, 2 हफ्ता हो गया. हमने एक एक्स्ट्रा फोन ऑर्डर किया था, जाहिद और मैं. एक एक्स्ट्रा फोन मेरे पास है. iPhone 10 मतलब है सेम दिस वन. थोड़ा सा देखा लालच देखा. I'm sorry, Garima, you're a staff. You can't. So अगर तुम्हें पता नहीं iPhone 10 कैसा है, just लालच देख लो. This is online बच्चे भी देख लो. This is what, and this is the same phone you're gonna get. But like same क्या बोलते हैं, space gray. पर black ही है, पर वो लोग space gray बोलते हैं. Okay? Good possibility. मेरा मूड अच्छा तो मैं डाल दूंगा फेसबुक में पोस्ट. तो मंडे क्या करो तुम लोग, सारा समझ सीख के आओगे. अच्छा आइडिया है ना. कुछ लोग एटलीस्ट इस चक्कर में कुछ लोग अच्छे सीखेंगे समरी, है ना. अल्टीमेटली फायदा हमारे होगा. तो 1800 नुकसान होगा हमारा, आई नो, पर शायद इसमें 18,000 का फायदा भी हो सकता है इंशाल्लाह. बच्चे खुश होंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट में आके 2-3-4 स्कोर ज्यादा आएगा इंशाल्लाह. 2-3-4 बच्चे 20-25 बच्चों को लेके आएंगे. समझ रहे हो पैसा कैसे कमाएंगे हम. ना ये तो मजाक ही है. iPhone 10 that's not true. Okay. I don't know what to say to you. What can I do? Zahid is not getting any date for you. All right. तुम लोगों ने जिसको लिखा उसको पता चल गया मैंने क्या लिखा. किसने मुझे लिखा कुछ. हमारे एक टीचर. Now essays are used. खत्म. 52 में आ रहा हूँ. 1 मिनट के अंदर मेमोराइज करो उसको. Now everyone come to question number 52, 53 and 54. What is a country and how is a country defined? First one is expect. बोलो मेरे साथ में सब लोग. Expect. मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको अगर मैं कैपिटल करूँ तो इसमें इजीली याद रहता है क्योंकि ये दिखता है इजीली. बातचीत बंद करो. Second one explore. Third one varies. Fourth one arises. Fifth one fine. Yeah. अच्छा चलो दो बंदा हमें रिपोर्ट दे रहा है. पहले सुन मनाली बताओ, फिर से बताओ. ओके फिर से बोलो आफ्टर ऑल कहाँ पे है. सो कौन सा दोनों आंसर है और आफ्टर दोनों. वाह इतने लोग अपडेट दे रहे तो सही होगा. ठीक है सब लोग झूठ नहीं बोल सकते. ओके ओके विल टॉक अबाउट इट लेटर. पहले मनाली मुझे बताओ आफ्टर ऑल के बाद एक्सपेक्ट. अच्छा एक्सपेक्ट नहीं था आंसर. 3 वर्जन्स. ये लोग तो पूरा पीएचडी कर चुके हैं ब्लैंक्स के ऊपर.
वाह। अच्छा मुझे ये बताओ कोई नहीं कोनो वर्जन मुझे बांग्ला इंग्लिश पता है पता लगे। Now tell me, in any of the versions, did we have expect or no? Expect था, so we can't cancel it. So keep it expect. Okay, keep expect. Okay, क्या problem है? ज़्यादा सीख लेंगे हम, है ना? Okay, next अभी after all is one of them, right? We can cancel. Next one, explode था कि नहीं था? Explode. Okay. Two people are saying there. I mean, even if there are three, one doesn't matter. We memorize them all. Explode was there, so keep it. Next one. Who said however? Whole as well. Okay, कोई बात नहीं, वो भी ऐड कर देते हैं हम. Whole. Then however as well. Then most. सब दे देते बाकी जो है. Okay, कोई बात नहीं, दोनों डाल देंगे. So most and then anything else. So है कहाँ पे? अच्छा मिल गया. So all done. Other कहाँ पे है? Second para first. Recognize other countries or not that other. Third paragraph you mean to say. Sorry, third para. Recognize other countries. मिल गया. Other. But arises no blank. Arises. Can anyone confirm arises was there or not? So arises निकाल देते फिर, है ना? तो रहने देते, ठीक है. हमारे ज्योति सीनियर सिटीजन टीचर स्टूडेंट बोल रही हैं, तब उनकी बात सुन के रहने देते. ओके. नाउ अदर और कुछ? मनाली, नवल, किरण, no more updates. Pinal. Okay, that's it. Thank you very much. This is a good update because इतने लोगों ने confirm किया, तो जरूर इसमें से इंशाल्लाह we will get more answers. Good. Now number 53 में आ जाओ everyone. 53 के बारे में please give me, because यहाँ पे बहुत सारे blanks हैं, because we were not sure. Many people gave us many updates. We had to add so many of them, as you can see, 7 or 8. Who can confirm it? Wait was there? Okay, very good. रुक जा ला. Wait, then consequence was there. Okay, so let's keep it. Consequen. Okay, consequences, right? Diverge was there. Very good. Divergent. And then decimate, dissipated. So nothing else before that. Let me get rid of everything. Scrutinize, बंद कर देते हैं. Scrutinize, then eliminate. Eliminate कुछ नहीं है. Eliminate. क्या कर रहा हूँ मैं? Alleviate. क्या कर रहा हूँ मैं? Dissipated था, right? Okay, dissipated. Waste नहीं था, waste. You got waste? Okay, someone got waste, so let's keep it. Where is strike? Okay. Suffering नहीं था. Suffering था, suffering. Can someone confirm suffering? No, okay, no suffering. अच्छी बात है. Let's move on then. Again, फिर से बात करते हैं. हाँ बोलो. पहला पारा कुछ नहीं था, तो किसने दिया वो? कौन है? वेरी गुड. कोई बात नहीं. स्ट्राइक कंफर्म कर रहा है अर्श मुझे, तो मतलब है हम दोनों रख देते. गुड. सो वी गॉट द कंफर्म्ड वर्जन नाउ. Maybe there are 2-3 versions, doesn't matter. The more options we hear from you, the better for us. First one, wait. Second, Fatima, Kiran, talk. बात करो, पीछे जो मरे हुए लोग हो, प्लीज. हम ऐसे करेंगे ना, जो बात नहीं करते ना, उनको हम नहीं देंगे पिज्जा. How about that? How good is that? हाँ.
हम किसी को रख देते हैं जो चेक करो कौन बात नहीं कर रहा है, तुम्हें पिज्जा ज्यादा मिलेगा। इस कंट्री में घर पे जाके खाना नहीं पड़ेगा, कितना टेंशन नहीं, बच गया। यू नो 3 स्लाइस खाओगे तो घर जाके खाना नहीं पड़ेगा। हस्बैंड है इसलिए यही प्रॉब्लम है। तुम्हारी बदकिस्मत है, मुझे क्या। I'm joking, okay? खुशकिस्मती हस्बैंड है ना, एटलीस्ट कंधा है रोने के लिए। सिंगल लोग देखो, दिव्या बेचारी किसको ढूंढते रहती है, कंधा मिलती नहीं है बेचारी। अब कितना अच्छा लगा ना कि मतलब कितना बुरा लगा कि तमीज भी करते थे उसके साथ, है ना। एग्जैक्टली, इसलिए समटाइम दूर चले जाओ। हाउ रोमांटिक, हाउ रोमांटिक। देखा, ऐसे बात ना करो, सिंगल लोग रोएंगे अभी, बोलेंगे सर हमारे पास, सर उसके पास हस्बैंड है, हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास इमदाद सर है। सर को ऐसे सोचना कि सर ने पढ़ने को बोला है, तो सर की दुआ हमारे साथ है इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 54, बताओ। इम्प्लिसिटी, एनी डाउट्स इम्प्लिसिटी के बारे में? इम्प्लिसिटली, सॉरी, इम्प्लिसिटली। मेरा एग्जाम वर्षन है, शर्म की बात है, मेरा एग्जाम वर्षन 2 नंबर क्यों दिया फिर मैंने, मेरा अपना एग्जाम है। इफ ओनली, कुछ नहीं, इम्प्लिसिटली है ही नहीं कुछ। 100 मैंने अगर दिया तो 100% है। 2 कोई से शुरू होगा। आई नो अब मुझे याद आया रे, और देखा मुझे पूरा याद है, मैंने याद, पता है कैसे मैंने मेमोराइज किया था शुरू से, टू वन अनदर इम्प्लिसिटली तक ही मैंने याद किया था, फिर मुझे बाद में हुबहू मिल गया आंसर, जबरदस्त। थिंकिंग, नेक्स्ट के बाद सीड्यूस्ड, सीड्यूस था, इनकाउंटरिंग था, टेल्स था, 100% मुझे अभी याद आया। Yeah, I got the same, you should get the same as well. So this is lamb, God, this is lamb, बहुत दिन बाद lamb आया, अच्छा लग रहा है कितना। Lamb means look at me, look at me means 100% sure. I think I didn't have that either. I also get a feeling that tells the story में बात खत्म है, that's what I can remember as well. So ही करते चलो, next 54 55 बोल दे करीमा। Everyone come to question number 54, देखो बताओ, जल्दी बताओ, मिल गया? इस्लाम, मेरा एग्जाम था, बैलेंस, मोटिवेट, मेक एंड कॉन्टेक्स्ट, मेरे एग्जाम में था, मेरा नहीं आया, मैंने लैम्प लिखा पहला फाइल में, लैम्प फिर मैं ही बोल सकता हूँ ना, जैसे तुम्हारा लैम्प है तो मुझे डाउट है, मैंने तो कभी नहीं बोला, लैम्प मेरा वर्ड है, वी कैन यूज इट। फिर से बोल, बहुत डिवर्स भी करिए, हाँ बताओ। In the same blank, what is medicine? Okay, now who gave you the other version, batao? You know what I'm going to do is,
when we've got, that's a good idea. If we have two versions in the same blank, what we're going to do is we're going to get one lower, one upper. One lower, one upper. So lowercase is good, and that one version, and the other version, let's make them uppercase. Okay. कुछ तो सोचो आप lowercase. I'm sure you know what lowercase uppercase mean, yeah? आज के ज़माने में लोअर क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा, लो कहाँ अपर. So lowercase मतलब है small letter, आप मतलब है okay. Medicine then. Medicine. Yep. Next one, diverse कहाँ गया बताओ. Diverse, okay. Diverse कर देते हैं. Decision last वाला है ना. अच्छी बात है. Decisions. Then that's it. Okay, that's it. बताओ. Exam में आया था. Exam में. Good. Medicine. Able. What is able? Able, not too bad. डाल देता हूँ मैं. Able. और कोई किसी बात नहीं सुनेंगे, सारा खत्म हो जाएगा वर्ड्स. सब diverse stuff and then आई एम श्योर ये दोनों में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहा है ना, कि दोनों पास पास है ना. मेरी बात अच्छी बात है. The more the better. अच्छा अच्छा हाँ, मैंने शायद वो कितने फाइल चेक करूंगा पागल. So done everyone. So go through them in a minute and then okay. बाद में go through करना. अभी आओ जो next question 55. 55 में किसी का अपडेट है बताओ प्लीज जल्दी करके मुझे. किसी का अपडेट है कोई? टाइनी या जेट्स? जेट्स है तो फिर हम जेट्स को डाल देते हैं. जेट्स याद भी रहेगा, जिम वाला जेट्स. Swarm as well, swarm. So let's make swarm then. Swarm के बाद जेट्स था. Then मतलब everything was there. Times 2. Altitudes, time, swarm, jets, everything. Swarm किसी ने कंफर्म नहीं किया. तो ना करते हम भी. Swarm ही था ना? स्पेलिंग करेक्ट ऐसे था ना? Swarm ऐसे था ना स्पेलिंग? कहिए सही है. Okay, so times, jets, altitudes, collision, satellites. So let's make, because we don't have two versions, let's make it only one. So times, altitudes, collisions, and the last one is satellites. Perfect. 56 में आ जाओ. मैथ्यू जोसेफसन के बारे में प्लीज अपडेट करो. हुबहू सेम. वेरी गुड. सो जॉनी अपडेट किससे बोला? नो इतना रैप जो चुप नहीं रह सकती है. So where do we start? Okay, so let's remove the first part. Yeah, good. Then tremendous, novelty, developed, improved, tribute. प्रभु बताओ, तुम्हारा अपडेट बताओ. बोथ है कहाँ पे? So both को हम फिर डाल देते हैं, है ना? बाकी सेम. चलो, अगर if you can update us, if you can update us from your exam experience, please do us. Then हम उसको अपडेट कर देंगे, लैम्प बना देंगे.
डबल चेक कर लेने एक बार. Both tremendous, novelty, developed, improved and tribute. नंबर 57 में आ जाते हैं हम. इन द मीन टाइम आप लोग मेमोराइज करो प्लीज जल्दी करके. 57. Okay, everyone come to 57. 57. Sukhveer, 57 में आके मुझे बताओ 2 decades ago में Kashmiri houseboats, Pinal, Kashmiri houseboats में prospect tourists owned and lives. Who can confirm, verify? Can anyone confirm? कोई नहीं confirm कर सकता. बाकी branches में? No one. So let's keep it like this, okay? Prospect. Then tourists owned. Then lives. All done. 58 में आ जाओ. While Florey researchers have also created. अब बताओ इसका क्या है? किसी का अपडेट है? किसी के पास कोई? Has anyone got any update? None? Okay, so पहला वाला हम चेंज कर देते हैं फिर थोड़ा सा चाहे तो. Application बताना मुझे. I need someone to type. Sure. How can I do that? But I have to change the whole passage then. No, sir, control B. So why didn't you tell me then before? किसने नहीं बोला? Punish करना चाहिए ना पकड़ के. If you knew it, why did I? Why did I? Google Doc के इतने सारे ऑप्शन थोड़ी हमें सबको पता है. अगर ऐसा ऑप्शन है Google Docs सर्च करो सर्च. किसी को पता बता दो. आईटी लोग आईटी के कोई बंदा नहीं है हमारे यहाँ पे. ऐसे अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा. नॉर्मल सर आई डिड मास्टर्स इन आईटी. गूगल डॉक्स में लोअर केस को अपर केस करने का कोई शॉर्टकट तरीका है इंस्टेड ऑफ टाइपिंग? सर्च करके बताओ. एटलीस्ट सर्च तो कर सकते हो. गूगल डॉक्स लोअर केस टू अपर केस. किसी ने लिखा वन और एसेंशियल फीचर मिसिंग फ्रॉम गूगल डॉक्स. मतलब है दिस फीचर इज मिसिंग फीचर्स. एड ऑन है एड ऑन है. एड ऑन कर सकते हैं हम. चेंज केस फ्री. लेट मी ऐड एंड सी इफ इट डज एनी जॉब. Change case. But I can't add it. ये देखना हैंगआउट्स पे मैसेजेस आ रहे हैं. कुछ लोग मैसेज दे रहे हैं. प्लीज देख लेना. पेमा ने अच्छा परफेक्ट.
हमें लगता है हम वेस्ट कर टाइम. No time to waste. Move on. So, where was I? 58 effectiveness. Then while diagnosed, distinguish, and then can someone type faster than me? Yeah, Niaz bhai. Good. Come here. It's okay. I'll tell you when I'm tired. 59 में आ जाओ. तब तक मेमोराइज करो प्लीज. Can you come to 59, everyone? Funerary violin, remember? Funerary violin हमने इसके बारे में किसी को कोई update है? Can someone tell us if you have got this in your exam? If you haven't, tell me no. Okay, good. Accounts, first one accounts. मेरे साथ पढ़ते रहो. Accounts, accounts, accounts. Good. दूसरा बताओ. Exemplify, exemplify, exemplify. Surprisingly, surprisingly, surprisingly. मैं भी एग्जाम दूंगा. Grandiose, grandiose, grandiose. मैं भी एग्जाम दूंगा, मुझे पास करना है. गरिमा, पता है नेक्स्ट टारगेट ये है, मैं किसी ऐसे बंदे को पास करूंगा जिसकी इंग्लिश नहीं आती है. वहाँ नेक्स्ट टारगेट है जिसका लेवल 5 to 6 है, उनको हम 8 कराएंगे करके फिर हम इसको वो करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, पोस्ट करेंगे फेसबुक में. न्यू चैलेंज आई एम टेकिंग. इफ योर लेवल इज 6 in each, है ना, चैलेंज. You pay me $3,000. It is within 2 months. 8 in each. हाँ, पर कंडीशन मेमोरी अच्छा होना पड़ेगा. थैंक यू मनाली. गुजराती है ना, सोचते सर लॉस ना हो जाए. हम क्या करेंगे, मेमोरी टेस्ट ये करेंगे. तुम्हारा रिक्वायरमेंट मेमोरी टेस्ट करना पड़ेगा. मेमोरी टेस्ट पीटी में यू नो दैट वेरी वेल. कुछ आए ना आए, रट्टा मारो, इंशाल्लाह स्कोर आ जाएगा. और हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और एक मेरे दिमाग में आइडिया है, करना पड़ेगा. दैट इज टू सेंड वन ऑफ आवर टीचर्स हु गॉट 90 in writing, to send them and tell them to write an essay, fixed essay, but not the one that asked you, not the one in the exam, something else. A fixed memorized essay in the exam. You do everything else 100% the same, correct, but the essay, one fixed essay, not the one you had in the exam, something else. I want to see what happens. If luckily we win, what it means is अगर 85 भी आ जाए, इसके मतलब है बाकी सब ऐसे भूल जाओ, एक ऐसे ले लो, रट्टा मारो. कितना जबरदस्त होगा, सोच के देखो एक बार. अल्लाह करे ऐसा हो. मुझे अगर बिलीव दैट अगर 100% कॉपी करके ना भी हो, if you just edit some words, you know, like topic वाला word, topic में अगर like corruption है, डाल दो corruption. TV है, डाल दो TV. अगर even if they don't make sense, cohesion ना भी बने, अगर word same है, I'm sure we will end up passing the test 18 each. ये करना पड़ेगा. अच्छा आइडिया है. So who can take the test experiment करने के लिए बताओ, हम एग्जाम पे करेंगे. हम पे करेंगे. जनवरी में दे दो, कोई बात नहीं है. जो अभी भी नहीं चाहिए जनवरी में दे दो. Good, Sahila, I'll do that. पर ये भी चेक करना पड़ेगा जिसके स्कोर पहले अच्छा आ चुका है ना, ये भी देखना पड़ेगा. तुम लोग रहने दो, हम देखते हैं, हम टीचर भेज देंगे किसी को. अगर तुमने किया तो फिर 70 से हम करेंगे तो 90 आएगा हमारा. अगर नवल ने किया 76 आया, और अगर ऐसे हम करें, मैं करूँ तो 90 आएगा. बिकॉज मतलब देखो, ये ऐसे आइडिया सब लोग सोचते हैं ना, मैं अकेले नहीं सोचता. हमारे बच्चे सोचते हैं कि अगर बकवास करके 90 आ रहा है स्पीकिंग में, बकवास लेके 90 राइटिंग में भी आ सकता है. गुड आइडिया. हम करते एक्सपेरिमेंट.
Now I'm positive because उसने बोला उसका आ चुका है 76 है ना. I'll do that inshallah. So number 59 done. 60 में आ जाओ. तब तक please इसको memorize करो. EXA. ये कुछ और है बुद्धू. Example noun exemplify verb. Different है. ठीक है. Okay, number 60. बोल. Zahid bhai, 6 बजे तो पिज्जा ना था पिज्जा. On the way? Very good. Sorry, other branches, we can order pizzas. तुम खुद खा लेना घर जाके. So we got the next one. Everyone come to 60. None of the books in my father's dusty old bookcase. Now, can someone verify it? No one. कोई काम क्यों नहीं तुम लोग? You got that? Okay, let's check it. Yeah? एक डजन बहुत सारा बहुत टाइम पहले कोई गल नहीं है. Forbidden, right? Forbidden सही है? हाँ? Sure? तो उस पे क्या देख लेते हैं ना. What can you remember? What can you remember? Forbidden, yes. Good boy. So forbidden, yes. Good. Massive. Shelves and steadfast. Very good. Johnny is saying, and Johnny's memory is good. Hopefully it is Lamb who will confirm after someone else reports to us. Okay. Now, so far so good. None of the books wala blanks में 4 confirmed: forbidden, massive, shelves, and steadfast. So son, रट्टा मारो इसको घर जाके. ठीक है. बताओ. You got most as well. कहाँ पे most? इसमें है. एग्जाम में आया था. कितना श्योर हो तुम? सिंगल और मैरिड तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते. मैरिड लोग को मेमोरी इज हॉरिबल. हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा होता है. इसलिए मिल नहीं रहा किसी को. What about that? Correct. So most प्रियंका, right? प्रियंका ने बोला most सही है तो हम most पे ऐड कर दिया. ऐड करने में कोई दोष नहीं है. So 5 options you've got from people confirmed: forbidden, most, massive, shelves, and steadfast. Let's do 61 now. In the meantime, please memorize it. Okay, now come to 61 everyone. 61 के बारे में किसी का अपडेट है? कोई जल्दी बताओ. Entrepreneurs.
entrepreneurs, किसी का कोई नहीं? Okay, कोई बात नहीं है. Coordinate, बोलो क्या क्या blank है? Coordinate, visualizes, process, met, innovating. Okay, memorize it. Now move on to 62. Memorize it quickly. Okay, come to 62, everyone. In the last years of the wheat boom, tell me, has anyone got it in their exam? Any other branches? Unfortunately not. Frustrated, the first one. Can you read it with me 3 times? Bolo. Sublog, sublog, sublog. Sublog. Next one. 3 बार, sublog 3 बार. Next one. Misleading. Next one. Not thunder, thunder, thunder. What is thunder? इडी था, मैं भूल गया. Thundered. Remember, don't say 3. Not $3,000. $3,000. 3. Bolo, Divya. Bolo, thunder. Not thunder. Tha. Thunder, thunder, thunder. Yeah, better. Frustrated, exploitive, misleading, thunder. I'm trying to copy you. हैदराबाद में जाऊंगा ना, काम आएगा. Hyderabadis कैसे इंग्लिश बोलते हैं? Many Hyderabadis, many Hyderabadis have got a weird accent as well. So they say, they don't say a, they say yeah. Yeah? Am I right? Yeah. कितनी बार मैंने बोला spell करो इसका? So yeah. What is yeah? A. वो बोलते उल्टा. A, नहीं yeah. Trust me, मैं बना के नहीं बोल रहा. नहीं, कितनी बच्चे अच्छा मैं कैसे जानता? मुझे कैसे पता चला? I'm not from India. Your friends from Hyderabad taught me, like Punjabis, your Punjabi friends, Jyoti, taught me that it is Satreet. How do I know his street is Satreet? मैं सुन के पहले believe ही नहीं किया. What is he saying? मैंने एक लड़का आया था घर पे पढ़ने को, मैं बोला तुमने गाड़ी कहाँ पे पार्क की? So I parked in the other street. What the other street? So others, not this one, the other street. फिर मैं हंसा 1 मिनट पूरा. फिर मैंने पूछा what is Satreet? Why sir? Satreet. फिर मुझे पता चला अच्छा ये लोग स्ट्रॉ नहीं बोल सकते. स्ट्रॉ बोलो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ. स्क्रीन, स्क्रीन. वो लड़के बोल नहीं पाया, एक लड़का था. दिस इज कॉमन प्रॉब्लम. और पंजाबी में भी है व्हाट को बोलते बट. बट डू यू वांट? बट डू यू वांट, नॉट व्हाट डू यू वांट, बट डू यू वांट. एक लड़के ने मुझे स्कोर के बाद बोला, स्कोर आया मुझे मैसेज है फेसबुक में, सर बट डू यू लाइक टू ईट? एंड ही टेक्स्टेड मी विद बीयूटी बट. मैसेज दिया, सर बट डू यू लाइक टू ईट. मैंने सोचा था बोलना सही है, व्हाट को बट बोल रहा है, पर लिख भी रहा है बी से बट यू लाइक टू ईट. स्कोर 6 था उस जमाने में, आईएलटीएस में 6 चाहिए था. आजकल ऐसे भी ना करो, आजकल 8 है उसके 6 के बराबर. आप लोग जैसे करके 8 ला रहे हो, आपको लगता है कि ये रियल एग्जाम है? अल्लाह ना करे, वैसे मजाक कर रहा हूँ. अल्लाह ना करे अगर इमिग्रेशन बोल दिया after November whoever scored A you have to take a IELTS again. suppose तब बोलो क्या करोगे? You have to retake your test because we got huge flaws coming, huge flaws found in the PTE testing system. You all have to take your exam, either IELTS, TOEFL or CAE. तब क्या करोगे? इमदा सर के पास आ जाओ. IELTS में 8 ला रहा, किसी बाप की बात, किसके बस की बात. IELTS में 8 तुम्हें पता है क्या है? लिस्टिंग में आ जाएगा, रीडिंग में भी आ जाएगा, राइटिंग में भी आ जाएगा, उस बस स्पीकिंग में नहीं आएगा. जिस बस स्पीकिंग में आएगा इंशाल्लाह, उस बार राइटिंग में नहीं आएगा. So IELTS is a horrible exam as well क्योंकि वहाँ पे bias ज्यादा है. Examiners are biased. One examiner is lenient, other one is horrible. फंस जाते हैं. IELTS में कितने मुश्किल है. पर अगर ऐसा, हाँ यही है एक भरोसा.
एक साल जाए तब तक बुढ़ी हो जाओगे, शादी नहीं कर पाओगे जो सिंगल लोग हो। दिव्या भूल जाओ शादी, नो प्यार नो शादी, और चले भूल जाओ, कोई बात नहीं है। इज योर बॉयफ्रेंड हियर? तेन तो कोई चिंता नहीं है, बॉयफ्रेंड के बेस पे तुम प्यार हो जाएगा। अभी है मतलब क्या टेम्पोररी? Too modern people are, you know? But you're not sure. Oh, okay, very good. क्या जमाना आ गया, हम ऐसे यू नो, हम पुराने जमाने के हैं ना, हम ऐसे बात सुन नहीं सकते, बिलीव भी नहीं करते ऐसे क्या है। Either I am with you or I am not. I'm checking whether I can be with you. This is like, you know, this is too modern, too western for me. I can't take that. दिव्या को निकाल दो ना, नेक्स्ट पीछे बिठा देना उसको। I'm just joking. हो गया, मैं मजाक कर रहा हूँ, बच्चे सीरियस हो गए। कोई बात नहीं, बता 63। सुमिया को यहाँ पे आना था ना 5 बजे। सुमिया क्या कर रही है? च्युइंगम खा रही है। नितिन भाई को बोल कस्टमर भेज दो, पे सुमिया आ जाए, हमें हेल्प चाहिए हमें। ओके, ये बोल के जाओ मुझे। वीट बूम कर लिया ना मैंने। हाँ, नेक्स्ट क्या बोलो? रोमांस वाला। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। Okay, now the romance glorified the bravery shown. Bravery and the doubts? Graphically? Tendency? Sure? First क्या था बोलना कुछ? Oh right, we changed किया special session में. But does someone have the real file? Can you bring it please? Because I remember that we got this lamb as well, yeah? We got a few blank lamb, maybe not all of them. Let me get you the file, wait. If you're new, you don't know what we are doing, this is a real blank we are doing. All these special blanks, you are likely to get them in your exams, and if you're lucky to get 4 or 5 of them, 80 plus is a guarantee. All you need to do is to memorize them. Agar 4-5, if you get 4 or 5 of them in your exam, but you don't remember anything, कोई फायदा नहीं है. So you have to remember the answers we did in the class. Like exam से निकल के बाद में बोलेगा सर सारा कॉमन था और कुछ सीखा नहीं था मैंने. So nothing is gonna help you. Yeah, I know. I'm just going there. I'm just going there. Yeah. Special suggestion. Yeah, Roman. What is Roman? Okay, many popular ideas. Yeah. Oh, I got it. Lamb तो नहीं दिया मैंने. Lamb नहीं दिया पर थोड़ी बहुत मैं confirm था, मुझे याद है. Okay, now I remember that. Let me change this, everyone. We got a new version here for the Roman thing. Yeah. Can you see that, everyone? Good. Many popular ideas about the Roman arena were formed. So the first one is depict. So let me bold it and make it capital. Next one, graphically. Third one, represented. Fourth one, tendency. Last one, empathy. So tell me, depict, graphically, represented, tendency, and empathy. So who can tell me without looking at it? Without looking at it, who can tell me the 5 blanks? Yeah, Prabjot. Very good, smart girl. 64 करते हैं तब तक आप लोग इसको रट्टा मारो. Okay, now let's look at question number 64. Your teenage daughter. Teenage daughter. Has anyone got it? Anyone got it? No? Okay, so we will keep them as it is, yeah? So at the same time,
then exploring, and then development. Now, in the meantime, Garima, why don't we do something here? Because there are so many people coming here, and many of them are going to leave in the middle because they've got jobs and they've got other commitments. Now, let's post the reordering special material today, what we're going to do, what we were supposed to do in the morning, yeah? So we're going to give you the link to the special reorder paragraphs, 10 new reorder paragraphs we did in the morning today. So save this link and study them at home. So we gave you 37 links before, yeah? We gave you 37 before. We gave you another 10 today, so 47, and we're going to give another 13 or 14 inshallah on Monday. We got all these new blanks from special sources, so you will get roughly 60 plus altogether by Monday inshallah. So Karima, link the please board mein. Baki branches ke teachers, sare teachers, please write the special reorder link on the board. Thank you. Now in the meantime, memorize karte raho baki log. I'm coming to 65. So yeah, look at the blank on top. Look at the link on top. 7 lowercase e lowercase a, number 4 lowercase f, and number 9. This is the link to today's special 10 reorder paragraphs. Go home and memorize them. One more thing I should say, in reorder paragraphs, you cannot just memorize A, B, C, D, C, B, D. Because this is not lamp, which means the question can be, or the order can be different. So you have to read the whole story and understand the development of the story. Mirza is here, very good. So that's it. Now come to 65 everyone, 65. हम पिज्जा खा के ब्रेक देने के 5 मिनट के इसके बाद बाकी करेंगे बहुत मुझे बहुत भूख लगी. Oh, we keep going in the class, yeah? पिज्जा बांटते रहते हैं, but please spill ना करना. Don't be a kid, हाँ? आराम से खाना. अगर किसी का नीचे गिर गया तो बाहर चले जाओगे. आराम से खाना देखिए. 65 in animals. जब तक हम पिज्जा खाएंगे कैमरा चेंज कर देना. हमारे बाहर के ब्रांच हमें नजर ना लगा दे, बाद में पेट खराब होगा हमारा. We don't want that. स्मेल तो नहीं जाता है ना बाहर के कैमरा में स्मेल जाता है. Okay. First answer is contract. दूसरा हमारे पंजाबी बोलते हैं पैटर्न. पंजाबी पैटर्न पैटर्न कैसे बोलते, पता नहीं कैसे बोलते हैं. I can't even say it. पैटर्न पैटर्न not पैटर्न. पैटर्न कुछ और है. पैटर्न not टर कुछ नहीं है. Pattern. Okay, pattern. So on the pattern of okay, next one, different modes. That's it. So any update on this? No update. Now, one more thing I should say, there are some blanks which are not very frequent in recent tests. Some blanks are not very common. Don't ignore them because they repeat after a certain interval. Okay, don't ignore them, I'm telling you. This is 65, 64. ये बहुत पहले आता था, पर कभी भी घूम फिर के आता है. उनका अपना एक cycle है. They've got a cycle. They repeat them on a frequent basis. So we don't know what that is. So don't ignore anything. Okay. If you are too tired or too feeling bad, or your pressure is low, some people might be sick, low. You can go outside and walk a little bit. Okay, and come inside. हमारे एल्बियन के हाउस में आप बिलीव नहीं करोगे, एल्बियन के जो हाउस था वहाँ पे कंजेस्टेड होता काफी ज्यादा. हैज एनीवन देयर? सो पिनल थी, पिनल एल्बियन में पढ़ती थी. आप भी थे, विनिश पे आए थे एल्बियन में. वाओ, सनशाइन में. एल्बियन हमारे घर पे ना कंजेस्टेड बच्चे, जगह नहीं होता था घर पे, छोटा सा घर था, पर हमने घर से मूव नहीं किया था. हमें घर बहुत अच्छा लगता था, घर पे पढ़ाना. घर से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना, अपने घर. तो काफी बच्चे कुछ दिन बाद ना they got sick.
मुझे अभी भी याद है नाम क्या था उसका, एक लड़की तो she got senseless, she just fainted in and then we all were worried अब क्या करें उसको. फिर मैंने किसी ने बोला सर कॉल एम्बुलेंस, उसने उठ गया ना ना एम्बुलेंस नो एम्बुलेंस नो एम्बुलेंस. मैं अभी भी याद है उठ गई थी. फिर एम्बुलेंस के पैसा लगते ना तो उसने नो नो आई एम ओके नो एम्बुलेंस नो एम्बुलेंस. ये एम्बुलेंस वाली बात भी डराते लोगों को, बता देते यहाँ पे यार. भैया उसको सोचा है कि एम्बुलेंस कॉल करेंगे, $1000 पे करेंगे, हस्बैंड गुजराती मार डालेगा. अल्लाह माफ करो. आजकल तो आजकल उस जमाने में नहीं था एम्बुलेंस कवर मेडिकेयर के साथ, मेडी बैंक के साथ उस जमाने में नहीं था शायद. आज के जमाने तो शायद इंक्लूड है ना. वेरी गुड. ना 65 गया 66. So guys, we're going to give you 2 new blanks which we didn't do in our normal regular sessions. Okay, we just gave you the answers, just the answers. I thought I will give you the whole passage next day, but then I forgot. Lucky hai ki aaj yaad aa gaya. So this is a real lamb. I'm telling you, lamb, 100% lamb. Okay, so this is fans of biographical criticism. We did this blank before, but didn't do it in this lamb way. Okay, this is the lamb version. I'm telling you again, Zabardast version. So 100% guaranteed. 66, right? Yep. Can you see that? Sorry, 65 already hai. 66 यहाँ पे आएगा. Can you see that now? Now, fans of this is a real question, real blank, and this is something I am more than sure about. Okay, so although I didn't take the exam, but I trust the person blindly, so believe him. So interact is the, and then related, and because I'm going to give you the real text, which means, so even if they give you another version by changing, you can at least tell me the answers later on. Next one is strike. Fourth one, awkward, and gifts. Oh, I'm so happy. Now, 67, then Isabella, I want you to memorize it. God, this is a special version lamb, so please memorize it. L-A-M. Yep, good. Now, can someone tell me? Okay, move on. 67. Before going to the link,
I'm going to ask you something. Arbitration is a method of conflict resolution, which with more. Remember that? Now, did I give you the version or just the answers? You will be happy to know that I got the passage. Okay? I got the passage. I got the text. I'm going to give you the answer, and this is. There was a little doubt, yeah? याद है मुझे प्रभुजोत ने doubt डाल दिया था? But then I said lamb, yeah? Yeah. प्रभुजोत ने doubt डाल दिया था, but I would say it's lamb, okay? It's lamb. प्रभुजोत को trust ना करो. हाँ? दिया था उस दिन? क्या करते? मैं कितना खुश हो गया था मैं. मजा तो मैं खराब कर दिया. चलो कोई बात नहीं है. फिर से हम खुश हो जाएंगे. अभी कुछ और दे रहे हैं हमें. Children who skip पैसे दिया था मैंने? Children who skip. Did you give the passage? पैसे नहीं दिया ना? हाँ दिया था, राइट? इसका मतलब तुम लोग क्लास नहीं करते रेगुलर. अगर दे भी दे डजंट मैटर. अब फिर से देते हैं. सब लोग सुनो ध्यान से. अभी जो 2-3-4 ब्लैंक्स आ रहे हैं, दे आर रियल ब्लैंक्स. कुछ लोग मिला, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है. प्लीज मेमोराइज देम. सो आर्बिट्रेशन वाला ब्लैंक कमिंग नाउ इन 67. ओके. And they are recent question 6 to 7. Oh, ये क्या हो गया? Can you see that? Arbitration. Can you see arbitration? Yeah. Let's do this now. Arbitration is a lamb blank. Now let's read the options. Arbitration is a method of conflict resolution. Just remember this part. Arbitration is a method of conflict resolution, and the answers are characteristics. Batao. Oh, मैं update कर दूं पहले. Bound. Bound. Authority. Law. Suitable. That's it. So 5 blanks. Characteristics, bound, authority, law, and suitable. Arbitration के बारे में मुझे 5 blanks मुझे बताओ. Kiran, tell me. You were not in the class. Harry. फिर भी बोलो ना मेरे साथ. मैंने बोला सुना नहीं. याद करो, दिमाग यूज करो. You have to be sharp. Again, characteristics, bound, authority, law, and suitable. Characteristics, bound, authority, law, suitable. Characteristics, bound, law, authority, suitable. अब बताओ 5 आंसर हैरी. Law, authority, suitable. कौन सा ब्लैंक सही है? Arbitration is. सबा कैसे हो? बहुत दिन बाद आए हो आज. अच्छा सही है. हम क्या करते हैं? हम दूसरे वर्जन देते हैं मैकेनिज्म में. just make them bold. है ना? should be alright. डिम का है. बस अभी खुद ले सोच लेना बस. कौन सा लैम है, कौन सा गोट है. ये प्रभुजोत ने दिया है दूसरा वर्जन. आप कोई एग्जाम में आ गया तो आप कर देना हमें. नेक्स्ट 168. तब तक रट्टा मारो प्लीज. और एक बात मैं चाहता हूं कि आज रात 12 बजे के अंदर सारे लिंक्स ऑनलाइन में आ जाए डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में. प्लीज डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स योर प्रोफाइल. आई वांट एवरीवन टू अपडेट देम इन योर प्रोफाइल सो दैट जितना जल्दी हो सके इस दुनिया में स्प्रेड हो जाए. प्लीज. हमें कुछ पंजाबी बोलेंगे. ये बात है, कर देंगे सर. मजाक कर रहा था मैं. आई वाज जोकिंग. प्लीज डोंट डू दैट. I was just joking, guys. Please don't do that. I don't want you to share them with anyone in the world, not even with your friends.
मैं सोच रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट 68 में आ जाओ। देखो ये जबरदस्त, आप ये ऐसे क्यों हो गया? Now is correct. Yep, can you see that? Can you see that? बताओ. Children who skip schools are increasingly on family holiday. This is a lamb. Oh, I love these lamb questions. मतलब क्या है? इसको वो टूट पड़ो, मतलब इसको मिस नहीं होना है किसी भी तरह, कोई भी लैम ब्लैंक, you cannot miss them. You just have to memorize them आंखें बंद करके. So children who skip school, इतना याद करो काफी है. क्लू क्या है? Children who skip school. 10. अब बाकी 5 और 4. 4. मेरे साथ बोलो. Fewer, 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 fewer. Hardcore, 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 hardcore. Then period, 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 period. Then agreed, 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 agreed. Fewer, hardcore, period, agreed. Fewer, hardcore, period, agreed. इसको कैसे बना, इसको कैसे बना, इसको क्लू. फिर हम पढ़ने आए. क्यों? चिल्ड्रन हु स्किप स्कूल मैच करो ना. फिर हम क्यों पढ़े? ये भी तो मैच नहीं कर रहा. फिर हम चिल्ड्रन हु स्किप स्कूल, फिर हम पढ़ने. नॉट बैड, नॉट बैड. एटलीस्ट स्कूल स्किप स्कूल के साथ है ना. फिर भी हम पढ़ने आए. फिर भी स्किप स्कूल करने के बाद भी हम पढ़ने आए. नाउ इट मेक सेंस. वी स्किप स्कूल बट फिर भी हम पढ़ने आए. मतलब क्या है? सो चिल्ड्रन हु स्किप स्कूल कनेक्शन क्या है? फिर भी हम पढ़ने आए. फिर भी फीवर. हम फिर भी हम पढ़ने आए, भी नहीं है. अरे फिर भी, फिर है एफ पे फिर भी. एफ मतलब फिर भी ना. एफ फिर भी मतलब फीवर. हम हार्डकोर पढ़ने पीरियड आए एग्रीड. जबरदस्त है. थैंक यू मनाली. ये लिख देते हैं. इसको इंग्लिश में कैसे लिखे बताओ? फिर भी हम पढ़ने आए. एफ से नहीं होगा फिर भी. ये फिर भी एफ से. फिर भी हम पढ़ने आए. जो भी है समझ लेना, ठीक है? It's not my first language. Hindi is not my any language, okay? My first language is Bengali, then comes English. हिंदी जो मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, शुक्र मनाओ, ठीक है? Don't make fun of it, okay? और मैं काफी दफा कोशिश की ना पंजाबी सीखने की. ट्रस्ट मी, मैं काफी कोशिश की है. मुझे पंजाबी अच्छा लगता है ना, पर लोग मजाक उड़ाते हैं. घटिया स्टूडेंट्स. अरे अप्रिशिएट करो, हेल्प मी लर्न. मैंने कोशिश की पर लोग मजाक उड़ाते. इसके बाद गुस्सा आ गया, मैंने नहीं बोलना है. You wish. You wish. मुझे लगा कि this is a normal, this is a problem with a particular students, with some particular students, है ना. मुझे लगा कि ये नेपोलिस कोई लड़का नहीं, एक लड़का मिस्टेक करता था, ये शायद उसका कॉमन, उसका प्रॉब्लम है, उसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है. Then what happened is a Nepalese student invited us to their house, okay, and on the TV, Nepalese people can relate to it. On the TV there was a movie, Nepalese movie going on, okay, and the villain was talking to someone on the phone, and the other person said something, and he said, "Oh sit, oh sit," बोल के फोन में. Then मुझे पता चला, अच्छा Nepalese common problem है. सा को सा, है ना. Sunshine को, don't get me wrong, sorry, Nepalese कोई है? हम तो Nepalese ये कम हो जाने का ये भी रीजन है, क्योंकि हम मजाक करते हैं ना, और बोलते सर. तो मजाक नहीं करता हूँ, ये सच बताता हूँ. इससे क्या एटलीस्ट इससे अरे तुम लोग की इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है ना. और देखना ना, नेपलीज पहले बहुत आते थे हमारे पास. जब गुज्जू उसको हमने पैसे के बदनाम शुरू किया, गुज्जू आना कम कर दिया. नेपलीज के जब हमने ये सनशाइन का मसला बोलना शुरू कर दिया. सिडनी में डू यू नो हाउ मेनी नेपलीज आर देयर? सिडनी में डू यू नो नेपलीज मेजॉरिटी है सिडनी में?
सिडनी सीबीडी सिडनी पैरामीटर में जब भी मैं जाऊं, यू वोंट बिलीव मी, मैं पूछता हूँ कितने नेपालीज है, कितने पंजाबीज हैं, पंजाबी 3-4, नेपालीज 12-15। अभी भी क्लास हो रहा है, आई एम श्योर अगर काउंट किया जाए नेपालीज ज्यादा होगा। और हमने भी अनुषा को रखा सीबीडी में ना, अनुषा का नेपालीज है ना, अनुषा भी नेपालीज है, अनुषा के भी काफी फैन है वहां पे, तो नेपालीज बच्चे भरपूर है। डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज जस्ट नॉट टू मेक फन, थोड़ा सा फन भी हम कर सकते हैं ना। जैसे पंजाबी से हम कितने बोलते हैं, सर ट्रीट सकरीन, हमारे पंजाबी सोचते भी नहीं है ना, पंजाबी ये तो जबरदस्त माइंड भी नहीं करते ये लोग, इतने बोलने के बाद पंजाबी नाम कम हुआ, देखो पंजाबी के लिए हम कितने मजा करते हैं, नंबर कम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बोलना तो सर को, हमें क्या। यही है पंजाबीज, द रीजन why I like Punjabis most, because they don't mind, they have got a, you know, most of them have got a very innocent simple heart, they don't really mind, they don't care, it's simple, you know, कोई बात नहीं, सर तो सर है, सर हमारे उस्ताद है ना, they ना, सही बात, they blindly follow, Punjabis follow you, Pakistanis भी, Pakistani Punjabis जो Indian Pakistani Punjabis तो a little smart compared to Indian Punjabis, but Indian Punjabis, you know, they don't ask questions, इसलिए अगर हम बोलते हैं ना, हमारे जो पीटी में मेमोराइज करने से लेकर सब कुछ में, if we talk about these memorizing things ना, सबसे जबरदस्त पंजाबी फॉलो करते हैं, सन ने बोला है तो और कुछ नहीं है, no other opinion, and that's what I love about them। कोई बात नहीं, नेक्स्ट नंबर 69, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल देना, तब तक मेमोराइज करो प्लीज। क्रिकेट है 30 में, सुमिया को तुमने नहीं लगाया, ना ना ना, यहाँ पे तो किया ना, ये एनिमल्स तक किया हमने। पहले मैं चाहता हूँ कि बीच वाला खत्म हो जाए। ओके, जो हमारे पास लिस्ट है 69, एक देखो मिल गया सब लोग, लुक एट 69, इन अ सीक्वेंस ऑफ बेस्ट सेलर्स इंक्लूडिंग द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, कैन यू चेक दैट? Has anyone got this in your exam? Originated, immune, roots, and differ. No, no one got it? कोई बात नहीं, रट्टा मारो बैठ के, रट्टा मारो जल्दी, 1 minute के अंदर। Get my next blank. So everyone come to question number 70, genetically modified foods. Can you tell me if you have got this in your exam? No? No one?
प्रीतम हाँ ना तो बोलो। प्रीतम पिज्जा खाओगे? पिज्जा खाओगे तो क्यों हाँ बोल रहे हो? तब मैंने पूछा ये है कि नहीं, तब क्यों नहीं हाँ नहीं बोला? नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा पिज्जा। noticeably proponents जाहिद को बुला लो। जाहिद भाई पिज्जा डिस्ट्रीब्यूट कर दो जल्दी करके, बच्चों को पिज्जा दे दो सबको, हम क्लास खराब नहीं करना चाहते। asserting consume ना, सबको दे दो एक स्लाइस करके ले लेंगे ना, हाँ क्योंकि हम टाइम नहीं मिलेगा हमें। हाँ टिश्यू ले लो एक। जाहिद भाई हैव समवन एल्स, किसी लड़का को बोल दो खड़ा हो जाए, फिर हेल्प कर देंगे, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर देख लेना इनफ है पिज्जा। एक बार ऐसा हुआ था, मैं बोल रहा था ना कल के स्वीट्स दिया, टिश्यू भी दिया, टिश्यू दे दिया, स्वीट्स खत्म हो गया, तो टिश्यू लेके बैठे हैं बच्चे। इसके हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनफ पिज्जा है कि नहीं। कितना ऑर्डर किया आज? हो जाएगा शायद ना। 18 में कितने स्लाइस होते हैं? 8 × 18 किसका मैथ अच्छा है? 144। बच्चे कितना है? तो 2 स्लाइसेस पर पर्सन। वाओ, ऐश करो। हाँ ड्रिंक्स नहीं लाया? सही बात, ड्रिंक्स नहीं लाया? Oh, I don't believe that. Right, bhai, no drinks. No drinks. जाहिद है हमारा गुजराती, बांग्लादेशी है पर गुजराती जिन पैसे बचाता है। ओके नाउ नेक्स्ट, ये हो गया ना सबका? 70 देख लो। noticeably proponents asserting and consume, noticeably proponents asserting and consume, रट्टा मारो within a minute। एक साथ करो, ऐसा ना करो। सुनो सुनो सुनो, टिश्यू कोई बंदा बांटो तो कोई खाना, क्योंकि एक साथ एक हाथ में 2 टिश्यू नहीं हो सकता। टिश्यू को एक बंदा दे दो, सब पिज्जा डिस्ट्रीब्यूट ना करो। हाँ जाहिद भाई ये होगा चुपचाप, ठीक है? और तुम लोग खाओगे तो आवाज नहीं करोगे, हाँ चुपचाप रट्टा मारते मारते पढ़ो खाओ एक साथ दोनों। 71 everyone, there is a technical error, refresh it will come back. Everyone please refresh it, it will come back. The dock is causing some problems. Got it? Refresh it, quickly refresh it.
Not working because I did it intentionally. Okay. A new link with a new. So everything is there. A new link. For those who left, they shouldn't get it. Post it. I'll give it to them maybe tomorrow or day after. Not easily. They should, just feel that they have missed something. अपडेट कर दो सोमिया, अपडेट कर दो नदीम भाई को कि कस्टमर से फोन आएंगे, मैसेज आएंगे कि लिंक नहीं मिला, लिंक काम नहीं कर रहा है. फिर नदीम भाई को बोल देना पड़ेगा कि we are working hard day and night on this. We will let you know as soon as it gets resolved. लिंक नहीं बोला मैंने? Okay. Upper lower case, sub lower case है पहला तीन lower case XME, lower case XME, then upper case MV, M uppercase V, and number 4. Can you check if it's working, guys? Is it working? Is it barking? Punjabi is work bark bolte hai na. Okay, copy of special reading blanks. Is it the one? Am I right? Which one shall I? Oh, copy of reading blanks. Yeah, perfect. So yeah. So come to 70. Now you can see I updated 71 to 75. Can you see that? So now let's talk about them all. 71, include the inevitable. This is a common blank. This is a recent common blank. The inevitable consequence of include. Now include. Can someone tell me if you had them in your exam? No one. Okay. Include. बता प्रज्वल. Chronic voice तो दोनों तो एक होगा. Chronic और voice. Chronic. Okay. Good. एक तो होगा. Okay. Then सही है. So ये पहली बार उससे हमें कोई मैच किया. प्रभुत के साथ. अच्छी बात है. I like it. कुछ लोग मेमोराइज करते हो सही तरह से. मेरा कंप्यूटर चार्ज नहीं है जाहिद भाई. Give me something. Give me oh, I got a charger, I think. Zaid bhai, can you open? Come here. Are you done with it? Are you done? Okay. Do it first and then come back here. Now, 71 mein aa jao. Include chronic, degradation, and inconsistent. And this is like nearly lamb because Prabjit is confirming it. Okay, right? Nearly lamb. Okay. Now, this is a recent question as well. Many people confirm it. 72. The conducted study serves three objectives. Batao. No one got it. Joanna? No. I mean, have you ever got it in your exam, Buddhu Larki? No. Okay. You're unfortunate, yeah? Every time you go, like you just don't get the blanks. How many blanks did you get highest? How many blanks? How many? How many blanks from the special method have you got in your exam? 3 highest. Very sad. People get 6, 5, 6, 5, 6. How many have you got, Manali? 4. Score kya? Reading score? Sharam karo. Jyoti, how many blanks? 4. Score? Reading score? याद भी नहीं रहता. सही बोला, senior citizen. Pinal, how many blanks have you got? 5. And reading score last time? शर्म करो, बेशरम लोग. 5 ब्लैंक आने की बात भी अगर 78 आ रहा है, मतलब क्या है? I don't believe it. EGDLI? वो आपसे फिर इश्क हुआ. अच्छा. 3 आए थे. स्कोर क्या है? शुक्र है. कोई ना कोई फेल किया जरूर ना, किसी ने. प्रभजोत कंसिस्टेंट, एक में फेल करके आएगी. मतलब कोई सरप्राइज नहीं देगी तुम्हें. नेक्स्ट एग्जाम को नेक्स्ट देखना राइटिंग में फेल करके आएगी. मतलब कंसिस्टेंट, एक में फेल करके ही आएगी वो. देखो एक सही बात, कोई बंदा मिल गया हमें सही. 5 ब्लैंक्स ही गॉट, ही गॉट 87. ऐसे होते हैं, मतलब अच्छे इस ब्लैंक्स का प्रॉपर यूज करने वाला. अल्हम्दुलिल्लाह.
Now 72, आ जाओ. Values. First one is values. Then develop. Not develop, develop. Develop, develop. Don't say develop. क्या बोलोगे? हमारे पंजाबी बोलते develop. Develop. Development है ना? क्या बोलते हो? Develop. Develop, develop. Don't say develop. मैं पंजाब जा रहा हूँ चलो 2-3 मंथ के अंदर. पटियाला पहला ब्रांच में है हमारा. बीवी ने परमिशन दे दिया. Now values, develop, analyzing and spelling and differences. Now conducted study serves 3 objectives. First objective याद रखना. कितने objectives? 3 objectives. What's your name? I always forget your name. सपना. सपना बताओ. आप पिज्जा खा लो पहले, बाद में पूछते हैं आपको. हरदीप बताओ 4 आंसर क्या क्या है बिना देखे. Values, develop. New link. Are you using the new link or old link? New link or old link? Old link. मतलब क्या है? तुम क्लास में हो पर क्लास में नहीं हो. और पुराना लिंक काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो सारा स्टोरी बोल दिया. अल्लाह माफ करो. दूर दूर पर्थ में लोग है, पटियाला में लोग सही सुन रहे हैं. तुम ही नहीं सुन रहे थे पास बैठ के. अरे बुद्धू लोगों, मैंने पुराना लिंक जानबूझ के डिलीट कर दिया. उस लिंक में मैंने कुछ नहीं रखा, नया लिंक में मैंने शिफ्ट कर दिया. ओके, अभी ओपन करो, आ जाएगा. अभी समझ गया, आ जाएगा. अभी नेक्स्ट 72 वैल्यूज, डेवलप, एनालाइजिंग एंड 73 में आ जाओ, जल्दी बताओ. Away from the rumble of Shanghai. Guys, can you go through 73, the whole blanks, because I got a better version from Shanghai. Someone just texted me yesterday or day before yesterday. Let me find out. The other one, yeah, the other cable. I remember that very well. Someone texted me about Shanghai. Shanghai is a common blank, guys. Common. People are texting me again and again, Shanghai wala. So does anyone have the real version? No, it on. तो किसको आ जाने की? I got the converter. Now, can you check the Shanghai blanks? Do we have brick in the passage? Yeah. Do we have booming? Do we have drab? DRAB drab? Drab anywhere in the passage? And do we have teachers? So these are the 4 blanks someone told me on December 14, which means kab? Yesterday I got a text from someone, and this girl scored, this girl got, not scored yet, this girl got, oh, look at her memory, good. She got horned viper, cyclist, invasion, इसे भी लिख दिया, there was a torrent issue. Then Steven Pinker, same blanks जो हमने कल परसों दिया, 4 गया ना, 5 है ये. 5 है ये, Rumble of Shanghai.
So 4 drop down she got from the real special material, and one from dragon drop from, like this one. She's saying Shanghai was the dragon drop. Interesting. Brick one went booming, yeah, but it might be different because of this girl. She just got it yesterday. I trust her more, and look at her. Look at the way she wrote the answers. Look at someone wrote something, and you get a message. You get a picture of someone's personality when someone writes to you. Do you know that? When someone writes, and look at her, उसने पहला 4-5 सब ब्लैंक्स का उसने क्या किया, आंसर लिख दिया ब्लैंक ब्रैकेट में से, ये था. समझ लो, मतलब शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, मेमोरी जबरदस्त है, सीखो. शी इज ओल्ड टू. सो रंबल ऑफ शंघाई में 4 ब्लैंक. हम लैम्प तो नहीं बोलेंगे, पर ब्रिक booming drab teachers. Let me update that. Brick कहा गया? Booming. What is drab? Got it. And then where's teachers? Got it. Yeah. Oh, perfect. I'm the piece and wow. Okay, teachers. So brick, drab, booming teachers, and looks like this is nearly lamb. Why? Because the girl just texted me yesterday, and I got a feeling she has a good memory. Now, one more blank. She just texted me, and I just checked it, and this is like. But she sent me something which I didn't find in Google. She memorized first 8 words. Maybe I'll search more. I can find it. If you remember the first 8 words, then I can find the blank for you. हम भी participate कर रहे गपशप में, तो फिर बात ना करो. हम कौन सा कर रहे थे? शंघाई खत्म हो गया. शंघाई डन. शंघाई डन. मैं यहाँ पे लिख दूं इमदास पीटी हैक्ड. बाकी जो लोग देखेंगे ना, इमदास पीटी हैक हो गया, they will sympathize. Imdas PT hack, don't go there. Don't go there. Imdas PT hack. If you go to Imdas PT, all your login details are with us. भाई चलो हम ऐसे क्यों गए, मजाक कर रहा हूं, हम ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है. Now next one आ जाओ. Shanghai के बाद 74 originated movement in painting that originated in France in the 1860s. Any update, anyone? Okay, now originated में हम originated, then describe. नहीं दिया प्लीज तुम लोगों को. बेचारी पूछ भी रही है हमें क्या. हमें experimented. जाहिद ने लड़की को नहीं दिया, हो ही नहीं सकता. जाहिद are so good with girls. मैंने बोला गर्ल्स, वुमेन नहीं. मैंने मना कब किया? मैच्योर तो है, मुझे तो, मैं तो सबके साथ सेम हूँ. मैं जाहिद की बात की, मैं सबके साथ सेम हूँ. गर्ल हो वुमेन हो, जाहिद की बात कर रहा हूँ. नजर सही नहीं है उसका. The first one, originated, describe, experimented, fragments, experimental, progress, and Zahir, they are not right. They cannot be all right. Now,
Someone must have given us all these answers. We wrote it down. So it's better to have more than less. Yeah. So let's read them all and let's see how it goes. Next, number 75. Go through them in the meantime. I'm doing this. Okay, can you look at 75? The book advances 5 fundamental and in my view, can you see that? Sami? Now, first for all is manifest achievements. Manifest is the first one. Do we, Then? How come? First para is not there. Just the second para is done. तो निकाल देते इसको ना, निकाल देते, फजूल है, शायद कुछ नहीं है, निकाल देते, ये शायद कहीं मिल गया था वर्जन, भूल जाओ इसको. दूसरा, नेचर इज नो लॉन्गर एन एलियन एनिग्मा. इसके बारे में ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन आ चुका था, है ना? एलियन वाज रॉन्ग, द आंसर इज एनिग्मा. एंड देन कम्स opus, not exuberant, nahi, opus. And then reason is the answer. Okay, thank you. So enigma, opus, reason. Enigma, opus, reason. This is a common blank. Every other day people get it. Nikhat, wake up. Common blank, ratta maro. Nikhat, bolo bina dekhe kya kya hai, 3 answer? बिना देखे बोला चोरनी. Aliens, enigma, opus, region. 76. Next one. तब तक रट्टा मारो उसको. गरीब. Okay, now come to 76, and you know that very well, don't you, that this is my own exam question. अगर मैंने बोला लैम है, मतलब ये समझ रहे हो तुम, आंखें बंद करके, तुम, you trust me, at least you should trust me more than yourself. Available था ना, मैं निकाल दिया. Available, answering, time and valuable. बाहर जाके एग्जाम से निकल के सबसे पहला काम मैं जाहिद को बोला कि जाहिद तुम दरवाजे के बाहर रहना लैपटॉप लेके. सबसे पहला काम होगा, I will write all the blanks down, and then अल्लाह की स्पेशल मेहरबानी है, नॉर्मली इतना मैं याद नहीं रखता. ये 3 एग्जाम में मेरा 26 क्वेश्चन मुझे याद था, 25 क्वेश्चन मुझे याद था. So वो 3 एग्जाम अगर मैं ऐसा और 3-4 एग्जाम में दे सकता, अब पता नहीं क्या क्या होना था. अनफॉर्चुनेटली मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया. I can't take any more exams. काश मैं दे सकता था एग्जाम. मुझे लगता है किसी ने कंप्लेन किया होगा ना. एक बात तुम ध्यान से सुनो, इमदाद पीटी मार्केट से सब, इमदाद पीटी एक बदनाम हो गया, कोई ना कोई इमदाद सर का बदनाम कोई निकाल लिया. सपोज इमदाद सर का कोई बदनाम हुआ, ह्यूज इमेज खराब हो गया, इमदाद पीटी बंद हो गया. सपोज, डू यू नो हाउ मेनी पीपल विल बी हैप्पी? एवरी अदर पीटी सेंटर विल बी हैप्पी. सही बात है कि नहीं? एवरी अदर पीटी सेंटर विल बी हैप्पी, क्योंकि मार्केट का बिजनेस का शेयर विल बी डिवाइडेड टू देम. अभी शेयर अलग में बने, हम कितना शेयर हम उनका हम खा सकते. इमदाद पीटी टीचिंग से बढ़कर बहुत कुछ बन गया है.
People love us so much. This is, आप देखना, मैं बता नहीं रहा हूँ, बच्चे मुझे शेयर करते हैं, टैग करते हैं, मुझे बताते भी, फिर मैं चेक करता हूँ उनके पोस्ट्स. एवरी अदर पीटी सेंटर्स का तुम देखना जाके, रिसेंट एक दो पोस्ट पढ़ के देखना. एक दो पोस्ट पढ़ के बेशरम लोगों ने, दे टॉक अबाउट आस एंड आस. तुम अपनी बात करो, हमारी बात क्यों कर रहे हो? वो लोग क्यों बात करते हैं? लोगों को बताना चाहते हैं, क्यों जाते उनके पास? ज्यादा बच्चे तो ज्यादा स्कोर आएगा ही, हमारे पास आओ, हमारे पास कम बच्चा है, हम ज्यादा टाइम देंगे, पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. जो टीचर ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भीख मांग रहा है, हमारे पास आ जाओ भी, टीचर का इमेज कहां पे, टीचर का पर्सनालिटी कहां पे? दे टेक इट एज अ बिजनेस. अच्छी बात है, बिजनेस हिसाब से लो, बट बी स्मार्ट. लुक एट एप्पल एंड सैमसंग. सैमसंग चोरी करता है एप्पल से, सही बात है, पर बिजनेस भी कर रहे हैं सैमसंग के साथ एप्पल. पता है ना एप्पल के सारा स्क्रीन कौन दे रहा है? सैमसंग. डू यू नो दैट एप्पल के साथ डिस्प्ले कौन दे रहा है? सैमसंग ही दे रहा है. सो बी प्रोफेशनल एज वेल. बेशरम लोग, एवरी सिंगल न्यू पैकेज मैं शुरू करता हूं, कोई ना कोई चोरी करता है, बाद में बोलता है क्या है क्या नहीं. तो इतना हमने कभी किसी को बुरा बोला, कभी किसी में मैंने किसी के बारे में बात भी नहीं करना चाहता, बट जब लोग बोलते हैं मुझे बुरा लगता है कि लोग, पर मैं आई एम वेरी प्रैक्टिकल एज वेल. लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे. लोग दुआ करते हैं 10 पीछे कोई बदनाम हो जाए, कोई ना कोई उल्टा सीधा हो जाए, पर इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी हमारे साथ है शुरू से आज तक. इंशाल्लाह हमारा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं. जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कुछ नहीं हो सकता पीटी, इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है. इंशाल्लाह आई बिलीव दैट कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह वी विल ओवरकम एनीथिंग. एनीथिंग मींस एनीथिंग. कि अगर मैं जिंदा हूं, कुछ भी मेरे लाइफ में आ जाए, आई एम टेलिंग यू ऑल, 10 साल बाद यू विल लुक एट मी, आई एम टेलिंग यू, 10 साल बाद देखना हम कहाँ जाते हैं. इंडिया में हमारा एटलीस्ट 20 ब्रांचेस होंगे, एक दो नहीं 20 ब्रांच. मेरा टारगेट है 10 साल के अंदर इंडिया का रेवेन्यूज हमारा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हो. मेरा टारगेट है हमारा इनकम इंडिया से ज्यादा हो, इंडिया में हम ज्यादा पैसे कमाएं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज पॉसिबल. क्यों पॉसिबल? पॉपुलेशन. इंडिया में अगर 20, सही बात है, इंडिया में अगर सही ना डोंट गेट, दिस इज बिजनेस पर्सपेक्टिव. इंडिया में 20 बच्चे भर्ती होंगे आईएलटीएस में, आएंगे 2 3 4, बाकी 10-15 बच्चे दोस्त के साथ भर्ती हो, दोस्त के साथ जाके चलो जाते कोर्स करते, लड़की देखने मिलेंगे, यू नो, अच्छा टाइम गुजारेंगे. आई नो वी ऑल डिड दैट इन आवर कॉलेज लाइफ. सर ऐसे तो करते हैं यंग बच्चे. हमने भी कहा क्लास करने की, हम भी एंजॉय करते, घूमते फिरते थे. सो लाइफ इज डिफरेंट इन दैट एज. तो यही हमारा लाइक मेरा टारगेट है कि इंडिया में हम करेंगे. 10 साल वेट करो. ऑस्ट्रेलिया में तो हम हैं ही, ऑस्ट्रेलिया हमारा मेन मार्केट नो डाउट, पर इंडिया में मेरा बहुत प्लान्स है. पटियाला we're doing well, alhamdulillah. We are making money now. We started making, after 4 months we started making money. अभी हम बोल सकते ब्रेक इवन हो गए. इंशाल्लाह हम करेंगे. जब हम चंडीगढ़ जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, इंशाल्लाह हम जरूर पैसे कमाएंगे. इंडिया में मुझे, और इंडिया तो इंडिया है, जब पाकिस्तान में अगर पीटी आ जाए ना, पाकिस्तान में पीटी आ जाए तो पाकिस्तान में हम पहले ब्रांच खोलेंगे. फहाद भाई तो, नदीम भाई तो एक पैर में खड़े हैं कि कब पीटी आ जाए. नदीम भाई तो बोल रहे कि भाई पाकिस्तान में पीटी आ नहीं रहा है. बांग्लादेश में कंजूस लोग है ना, मार्केट बहुत, यू नो. Bangladeshis don't spend money, trust me. They are like Hyderabad and Gujaratis. Cyprus full, but Cyprus don't earn much money, you know. Hyderabadis as well. They don't, you know, they want to say, I will study in YouTube, not in SPT. We'll see. We'll see, and we'll lose money. What about that? Lose money yours, gain money me. Okay? Let's open a branch. You lose money, it's your loss. Gain money is mine. No. You didn't get my point. You're very bad in business. Because I will open the branch, but I won't have any loss. He will lose it. The investment is his, not mine. Okay? So I will make sure, suppose I'm spending 10 lakh rupees to open the branch. He's spending 10 lakh, I'm spending 10 lakh. Yeah? After 3 months' time, I'll get my money back, no matter what. He will pay me. So? Make sense? Franchise, yeah, something like this. Yeah. I'll do something like this. I'm just waiting for the right person in Hyderabad. I need someone very right. Right means, you know, someone I can trust.
गुजरात में भी एक जबरदस्त बंदा चाहिए हमें, ट्रस्ट वाला बंदा। बंदा मिलना मुश्किल है ट्रस्ट वाला। हमारे कंट्री में पता है ना, पैसा कहाँ से आए कहाँ से जाएगा किसी को पता भी नहीं चला। जैसे कि पंजाब पटियाला में हमारे पास जो है, हमारे पास ट्रस्ट एकदम फैमिली वाले बंदे हैं। मनदीप जी का भतीजा, समझ रहे हो? तो मनदीप जी को हम जितना ट्रस्ट करें उतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं, यू नो। सो ही इज सच ए गुड मैन। श्री सुन के खुश हो रहा होगा ना। तो सो ट्रस्ट फैक्टर है, हम करेंगे इंशाल्लाह। 10 साल वेट करेंगे, हम देखो कहां से कहा जाता है। पीटी को तो इंशाल्लाह हम, किस्मत की बात है, मुझे एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा, दुख की बात। अगर मुझे एग्जाम देने का मौका मिलता, अब तो मैंने तो चुपचाप 3 एग्जाम दिया था। 3 एग्जाम कितना फायदा हो गया था। 3 एग्जाम के क्वेश्चन अभी तो बच्चों को अभी भी आ रहा है। अगर मैंने एग्जाम दिया, क्वेश्चंस याद रखा, एंड आई एम गोना, व्हेन आई गिव यू दीस आंसर्स, यू आर 100% श्योर। स्कोर, आजकल स्कोर क्यों बढ़ रहा है लोगों को? इसीलिए स्कोर बढ़ रहा था। अब मुझे एग्जाम देने का मौका नहीं मिल रहा है। अल्लाह करे मौका मिल जाए फिर से, हम फिर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस देना। So the next question is 77. जल्दी बोलना, गरीब के बाद क्या है बोल? 77. Okay, guys, come back to this. Next question is 77. This is also my jam question. Disadvantage in early. Oh, मैं नहीं लिखा ना. Okay. ILBPC. I love Bangladesh, Pakistan, China. ऐसे ही था हमारा. Which one? Which one? So my bad. I got it now. Don't be surprised if the link changes. Okay, then I forgive you. All right. Okay. Disadvantage in early childhood education. This is my exam question, meaning 100% sure. First one, impacts. Let me change them all. This is a drop down, and drop down ke baare mein, when you get drop down in your exam, special blanks drop down and special blanks drag and drop. Which questions do you get more excited about? Why? Drop down contributes to writing. And I got a feeling that every drop down question gets you about 2.5 or 3 marks in writing. I got a feeling that 0.5 per blank. If there are 5 blanks, 2.5. 4 blanks, 2. 6 blanks, 3. That's what I think. Okay. Impacts. Next one. Lesson. Paro. Impacts. Bolo 5 bar. Lesson. Barriers. Prepare. Commence. अब 5 वर्ड 5 बार बोले एक साथ. Impacts, lesson, barriers, prepare, commence. Impacts, lesson, barriers, prepare, commence. Impacts, lesson, barrier, prepares, commence. Impacts, lesson, barriers, prepare, commence. Impacts, lesson, barriers, prepare, commence. तो क्वेश्चन क्लू क्या है? डिसएडवांटेज इन अर्ली चाइल्डहुड. डिसएडवांटेज इन अर्ली चाइल्डहुड. सपना मुझे बताओ 5 के इंपैक्ट्स. सब लोग चुप. मुझे खुद याद नहीं. प्रिपेयर कमेंट्स. आई लव बांग्लादेश. ये अच्छा है क्योंकि सर बांग्लादेश से है. आई लव बांग्लादेश, पाकिस्तान. ये बहुत मुश्किल है. इंडियंस बोलेंगे नो सर प्लीज. ये और भी बुरा है सर. इंडियन लव, नो, इम्पॉसिबल. ऐसे बोल दो वी लोथ, हेट करना. LOATHE, लोथ. इंडिया, लोथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना. ये मुझे खुश कर रही है पिना. सर को खुश करो तो ना सर खुश रहेंगे बेचारा. क्या की बोलना? ओह अच्छा. तो बताइए. आई वाज जोकिंग. ये तो बात सही है. बेटी होना इज लाइक डिफरेंट. बेटा होना तो बेटा है, समझ रहे हो कि शादी करके भूल जाएगा.
बेटी कभी नहीं बोल, शादी के बाद भी अपने मॉम डैड को याद रखती है। एक डर की बात है कि जब 15-16 साल हो गए ना, जब तब डर लगता है ना, टीनेज में पता नहीं भाग ना जाए किसी के साथ। ऑस्ट्रेलियन जो कल्चर है, मुझे तो है कि अपनी बेटी को थोड़ा सा कपड़े शपड़े ज्यादा पहनाने, समझ रहे हो? बिकॉज आई आई नो अभी तो छोटी है, अभी कपड़ा ज्यादा पहनाते ऐसे ही। बिकॉज आई एम कंजर्वेटिव। इसीलिए आप देखोगे कि हम इसको एसी को पता है ज्यादा ठंड क्यों रखते हैं, है ना? बोलते नहीं एसी, बोल दिया एसी के राज हमने। वी कीप इट कूल, गेस करो, ताकि समर में गर्ल ज्यादा कपड़े पहन के आए। समर इस कंट्री में जो समर 2 मंथ का समर, आई हेट दैट समर टाइम। बाहर तो अच्छा लगता है घूमने के ऊपर, बिकॉज आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। यस, ये हम पहले बोलते थे, भट्टी के वक्त ही बोलते थे ना, बीच बीच में। आजकल हम बोलते नहीं है ना। हाँ, अब नहीं आते, सही बात है। सो बट डोंट गेट मी रॉन्ग, बदनाम ना कर देना मेरा। इंदा सर रिलीजियस है, लोगों को कपड़ा ज्यादा पहनाते हैं। कपड़ा ज्यादा पहना अच्छी बात है। मोर क्लॉथ्स इज गुड। आप लोग देखोगे हमारे सारे डिड यू सी आवर टीचर्स वेयर मोर क्लॉथ्स एज वेल? Actually they're always like this, but after coming to Indus PT होता है ना कि खुद ही सर के आसपास रहते हैं ना, so they automatically मैंने नोटिस किया, स्टूडेंट भी मैंने नोटिस किया, कितनी बार नोटिस किया कि पहले दिन स्टूडेंट्स बहुत but next day they dramatically change because they have to come and talk to sir, they feel a little एक स्टूडेंट 1 साल बाद मिले, अभी उसके, अब बिलीव नहीं करोगे, उसके मतलब अटायर चेंज हो गए, she changed a lot. देन एक दिन नाश्ते से मिले, बोल रहे कि दीदी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि सर को कभी ना कभी मिल जाऊंगी ना मैं, मुझे डर लगता है। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ तो आई टेक एक्स्ट्रा केयर कि सर मिल ना जाए और फील बैड अबाउट इट। तो बिकॉज सर का सर थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। एंड देन शी बिकेम आवर टीचर नाउ, वन ऑफ आवर टीचर्स। आई वांट टू से द नेम, कुछ समझ लेना। सो मुस्लिम रिलीजन में हम पसंद करते हैं कि थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हैं। मेक अ लॉट ऑफ फन, आई नो, वो फन इतना जाता नहीं हमारे रिलीजन के साथ, but I know my barriers, I know my limit. Do I cross the limit when I make fun, when I say citizen, like senior citizen? Do you mind? Mind करने क्या बात है, सच है। Has a spirit. Okay. मुझसे तो बड़ी नहीं हो तुम। I'm 31 only. Then you are 38. I'm 39. I'm joking. Okay. Date of birth सबके पास, सबका हमारे पास है। Okay. 78 question क्या था? Oh, ये तो ऑलरेडी हो गया। So impacts, lesson, barriers, prepare and comments. अब बताओ सपना। Prepare, condemn, commence. Very commence means khatam, end. Yeah. Very good. Commence means start. Start. Punjab mein. School. When do children commence school in Punjab? Commence school, not school. Are you from Punjab? Which part of Punjab are you from? अच्छी बात है। Now 78 next one. अभी इसको रट्टा मारो please. Okay, come to the next one, sustainable job growth, and this is a lamb. You know that why? This is my exam question. Hindering, existing, current, and has anyone got it after this? Oh yeah, Ish. Huh? Last exam? Very good. Same answer? मतलब मेमोरी तुम्हारा काम कर रहा है आजकल। I'm joking. रट्टा मारो इसको। प्रीतम बोलो क्या क्या? Hindering, existing, correct, concerns. What's your name? नितिक बताओ। Existing,
देखा मैंने गलत कर दिया. Thank you. Number 79. जल्दी से रट्टा मारो, हम आते हैं उसको. Okay, look at question number 80 and 79 and 80. 79, in an attempt to lure new students. Yeah, can someone confirm? तुमने एग्जाम दिया? Lure. दूसरा prerequisites. ऐसा ना? ऐसा ना प्लुरल था ना? And then professionals. Oh, sorry. Instead, उसका क्यों होते हो? And professionals. Lure, prerequisites, instead, and professionals. 80. Sound depressing, even apocalyptic. किसी को याद है? एग्जाम आया किसका? No S. Thank you. Yeah, मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहना. Okay, now forecast occupancy deteriorating, declaring, and then, oh, that's it. Now 81. 70 में लाइन लिख दूं? Oh, thank you. किसने बोला? How can I trust you, Adnan? अच्छा ये लिख देते अदनान स्लैम. Okay, अदनान ही है ना? अदनान स्लैम LMB. चलो भी निकाल दिया. अदनान स्लैम. ओके, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम फेल कर गया कि सही नहीं है तो लुक एट हिम, नॉट लुक एट मी. ओके, मुझे ना बोला साहब लुक एट रीडिंग में. तो अदनान स्लैम ना भी लिखने से ला भी लिख सकते, मतलब ये अच्छा कर रहा है रीडिंग में. वेरी गुड, वेल डन. तो फिर वो करो डिक्टेशन रिपीटेशन विद लेक्चर और समरीज. लिस्टिंग के ब्लैंक भी करना पड़ रहा है, तो शर्म की बात है. लिस्टिंग के ब्लैंक करना पड़ रहा है क्लास में. लिस्टिंग ब्लैंक सुनो, लिखो, सुनो सुनो. आई नो डिफिकल्ट वर्ड है, पर इसके लिए स्टडी करो ना. नए नए अच्छा अच्छा टफ 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 लिखने का हैबिट बनाओ, पढ़ने का हैबिट बनाओ. आई जस्ट डोंट बिलीव कि लिस्टिंग ब्लैंक में करना चाहिए. ओके, नाउ 79 गया अदनान. ओके, 80 गया, अभी 81. जल्दी बता करीमा, तुम लोग पढ़ते रहो प्लीज. Okay, now come to 81, guys. According to the literature, who got it? Raise your hand. No one got it. Very good. Vaccination. तुम लोग बोलो 5 बार मेरे साथ. कोई किसी को माइक दे दो ना, कोई एटलीस्ट लीड करे ना. किसका गला मतलब किसका वॉइस तेज है? Who fights well with a husband? प्रभजोत को दे दो.
चलो फिर गिव इट टू दिव्या. दिव्या की इंग्लिश अच्छी है. इसका 100 समय प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा. दिव्या ले लो और एक लड़का को दे दो. एनी बॉय प्रीतम को दे दो. सामी ने एक बार कर लिया. प्रीतम भाई इंग्लिश में बोलना, ठीक है? दैट्स इट. इट्स नॉट हार्ड. आप क्या करोगे? बोलोगे वैक्सीनेशन 5 बार. आप सब बोलेंगे. सब लोग बोलो. स्कूल में नहीं कि पीटी नहीं कि पीटी याद है? बाहर जाके ऐसे ही सबको वैक्सीनेशन गैप ना दो, एक साथ. वैक्सीनेशन ताल मिल नहीं रहा. ताल समझ रहे हो? यस सर. वैक्सीनेशन. दूसरा वेनम. दिव्या देखा कैसे करना है. थर्ड वन इनोक्यूलेशन. फातिमा चोरनी. फातिमा क्या कर रही है? I was trying to hear, nothing was there. स्कूल में हम ऐसे करते हैं ना, नेशनल एंथम सारे गा रहे, हम ऐसे क्लिप सिंग करते हो. पिज्जा खाया अभी भूल ना जाओ. हमने खाना खिलाया लाउड बोलने के लिए. ये हमारा कोई कैनवस नहीं का हमारे लिए. इमदाद पीटी जिंदाबाद. तुम लोग अपने स्कोर के लिए हम कर रहे. कर प्लीज दिव्या. नेक्स्ट inoculating. ये अच्छा हो रहा है. देखा ये दोनों मिलके 2 हैदराबादी गाना से. थर्ड controversial. शियल नाम की कोई चीज है ये. कंट्रोवर्शियल. शल. You never say commercial purpose. Shall. Controversial. Good. Next one. Universalized. That's it. Come to 82. 82. The increasing darkness in the northern hemisphere. Has anyone got it? Yeah, Adnan. सही है कि नहीं? Shame blanks. Same blanks. कभी कभी मतलब कितने बार देता है एग्जाम. कभी कभी so I change it. Okay, ये अदनान ने बोला कि सर ये फॉल के कभी कभी ऑटम भी आता है. मतलब पता नहीं कितने बार उसका आ चुका है. ऐसी बंदा हमें चाहिए रे. अदनान नेक्स्ट एग्जाम हमारे तरफ से बुक करेंगे हम पैसे देके. बुक कर लिया ऑलरेडी. प्रीपोन कर लो. दिसंबर में मिल जाए तो पैसा हम देंगे, ना मिले तो नहीं. हम दिसंबर में स्कोर चाहिए. समझ रहे हो? दिसंबर में मिल जाए तो मेरी तरफ से पैसे, ठीक है? क्योंकि हम तुम्हारा मेमोरी अच्छा लग रहा है ना, so we can use his memory for everyone's benefit, right? ये इतना पैसा हम दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट. नए नए बच्चे सोचेंगे हो क्या रहा है ना. पहली बार आ जाए सोचेंगे पता नहीं ये क्या है, हो क्या रहा है. जो हो रहा है ऐसे ज्यादा दिन नहीं होगा. ऐसे ज्यादा दिन पीटी टेस्ट नहीं चल सकता. ओके, फॉल, ऑटम. दूसरा 5 बार दिव्या. फॉल. रवनीत. leaves. Waxy. Shed. Salvage. Shed, salvage. Very good. गरिमा नेक्स्ट ब्लैंक्स बताओ. मेमोराइज करते रहो प्लीज. हमने नेक्स्ट. Okay, guys, you got it. 83. The article subjects the assumptions and prescriptions. Who got it? Actually, Smita got it, and the answer was body, not prescription. Body? Yes. Who's that? Smita? Asmita. The nebulous girl? Yeah, who got 90, nearly 90. Very good. Asmita, हमारे guarantee student भी थे ना, Asmita?
Body, तुम बोलो body. Body, attention, and Body, okay, body, then attention, all other things are same. attention, yeah, And 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 constraint. constraint सही है, right? तो क्या different है? अच्छा, no prescription, okay, because Asmita said it. Asmita is a good student. She got 90, 90, nearly 19 each, nearly, you know, she got a very good score within 3 to 4 weeks time, and we can trust her memory. So if you have any update, please give us when you get it in your exam. So far हमें जो मिला क्या है? Body, and then attention, and then end, and then constraint. 5 बार बोलो दिव्या जल्दी करके. Body, 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 body. Attention, 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 attention. End. Constraint, 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 constraint. Yeah, can you go to the next blank? मोनिका देखना हम जो मैं फोन में कर रहा था, हम impressionism कौन सा हमने नहीं किया उस स्टडी में? स्पोर्ट्स वुमेन किया? आर्टिकल के बाद सर्च कर दो फिर. देखो तो हो गया, ये हो गया. किया मैंने अभी किया नहीं इसको. ब्रेक लेके आ जाओ बाहर से. इसके बाद देखो स्पोर्ट्स वुमेन ना. ओके, स्पोर्ट्स वुमेन हमने नहीं किया. ओके गाइस, स्पोर्ट्स वुमेन कर लेते हैं अभी. पर दिस इज कॉमन क्वेश्चन, बहुत लोगों ने बोला कि आ चुका है लास्ट कपल ऑफ वीक्स में. कैन यू सी दैट? कैन समवन कंफर्म? नो वन गॉट इट इन योर एग्जाम? Which three बोलो? Okay, let me search quickly because मेरे फोन में हजारों मैसेजेस हैं. मैं स्पोर्ट्समैन देके देता हूँ सर्च करके. स्पोर्ट्स वुमेन, ये मिल गया मुझे. स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में मुझे मैसेज है 1 2 3 4 5 6 में ऑलरेडी हैं. So sports women records important and need to be preserved, and there were 3 the same blanks. Someone wrote it. Good, at least एक तो फिर मिला. दूसरा फीडबैक है. दूसरा फीडबैक है स्पोर्ट्स वुमेन रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट. सेम नहीं लिखे उसने. तीसरा है स्पोर्ट्स वुमेन एग्जिस्ट पॉइंट लॉस्ट. Yes, very good. And this one, Mandeep Singh got it 5th December, and he got Richard Morris to one extent. अच्छा, इसने बाकी जो आंसर मुझे दिया ना, looks like his memory is awesome because सब में उसने ना, मतलब है every single blank में उसने blanks कितने हैं, सब blanks लिख दिया. मतलब है he's got a very good memory, so we can trust him. Lamb तो नहीं लिखेंगे पर nearly lamb. So sports women वाला blanks आके बंद करके पैसेज पर की जरूरत नहीं है. Answers are exist, point and lost. Exist, point, lost. Sports women ना point lose किया. मैच करता है. Sports women points lost किया. आप exist को बनाओ, कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट लॉस्ट. एक पॉइंट लॉस्ट. वेरी गुड. स्पोर्ट्स वुमेन ने एक पॉइंट लॉस्ट किया. सही बात है. गुड. अच्छा ना कि स्पोर्ट्स वुमेन पॉइंट लॉस्ट किया. 84. तुम लोग इसके पढ़ते रहो प्लीज. गिव मी अ मिनट. Yeah, look at 85 now. Now that doesn't mean that plainness is the only good style. Can you see that? Now, can someone tell me? बाकी ब्रांचेस कर क्या रहे? बाकी बच्चे सो भी गए होंगे ना. बाकी ब्रांचेस अगर कोई स्टूडेंट तुम लोगों के पास आता है तो जरूर रीऑर्डर की लिंक दे देना प्लीज. ठीक है, तो बोल देना कि रीऑर्डर की लिंक करना था स्पेशल ब्लैंक्स में, घर जाके स्टडी कर ले. ठीक है, और इन द मिनट हम ये कर लेते हैं. नाउ स्लेव, पहला ब्लैंक स्लेव. किसी ने कुछ नहीं बोला रिकमेंड, सो हम एटलीस्ट लिख ही लेते हैं इसको. बोलो, शुरू कर दो दिव्या. Slave, 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 slave. Spare. बोलो ना बाकी लोग. ज्योति. Spare. Competent. Strive. On. Reader. Focus. ऑन भी है. चौरी ऑन भी है.
चलो बहुत कर दिया. Next, measuring poverty. Measuring poverty. Look at 86 now. Can you see that update? Yes, sir. Measuring poverty में किसी का update है? $1 $2 कल मुझे बोल भी रहे थे कोई. Shame. Or any change? तुम्हारा same था. अंगुली ऐसे नहीं दिखाते हैं. कितनी बार ऑस्ट्रेलिया में आके तुम ये नहीं सीखा, तो शर्म की बात है. जो कोई बात नहीं. ऐसे दिखा सकते हो. ये घायल है. डायलॉग देखो, मूवी डायलॉग. एक घायल है. किसने किया घायल? हस्बैंड को मारने गए. हाँ, अच्छी बात है. Okay, measuring poverty on a global scale. अर्श क्या बोल रहे थे? बोलो. तुम्हें सेम ब्लैंक्स आया था. वेरी गुड. मतलब टू वर्जन्स है. मतलब देयर आर टू वर्जन. प्रभजोत ने, ज्योति ने और अर्श ने सेम ब्लैंक्स मिला. मतलब है दे आर सेइंग दिस. बट Monica said she got a different. You got it right. So Monica is a very sharp student. She's getting 80 plus in reading nearly all in her recent exams. So I can trust her. मतलब ये है कि there were two versions. This is a good thing for us that before we go to the exam, we are sure that there are two versions. We won't be upset. Drop down for you and drag and drop for you. Drag and drop for you and drop down for you guys. Okay, this is a good thing. Yeah. And let's listen to this first. But first of all, let's study them because we already have this version. Okay. Divya, तुम अपना chant शुरू कर दो. Requires. सब लोग क्या है? प्रीतम भाई. Requires. पैसे नहीं मिलेगा. Requires. Prices. Prices. Yeah. Develop. Income. अब ये चारों को बोलो ना 5 बार एक साथ. Requires, prices, developed, income. 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 अब मोनिका बताओ मुझे तुम्हारा सेकंड वर्जन क्या था? Prices? Okay, so let me write two versions. Yeah, so लिखते हैं version 1. इसमें लिख देते हैं Pravjot, Arsh, and our senior citizen. तो कितने फेमस हो गए तुम लोग? चलो माइंड ना करो. ये निकाल दिया. Senior लिख दो. ना ऐसे ठीक है. SC सीनियर सिटीजन. अभी दूसरा वर्जन है हमारा, मोनिका ने दिया है. हम लिख देते हैं अभी 86 87 में डाल के. ठीक है. वर्जन 2 and this is given by boring Monica. सही है स्पेलिंग? यू नहीं आएगा सर. यू नहीं आएगा. इसका नाम तुम लोग ज्यादा पता है. शर्म करो, शादीशुदा है ये लड़की. प्रीतम भाई. ओके मोनिका, अब बताओ. तुमने बोला सेम पैसेज. या World blank. Okay, and then finishes with Latin America. Okay, very good. Now let me write it down. अभी बोलो words बताओ तुम्हारा. Prices सही है. Least कहाँ पे? Okay, got it. Least. Oh, that's interesting. You see that? Actually, support कर हैदराबाद support कर रहे हैं. जिन्होंने सोचा ये 3 लोग हैं पंजाबी. I'm just joking, okay? You know, interesting क्यों PTE ऐसे कर रहे हैं आजकल. PTE वाले ऐसे आजकल कर रहे हैं because they know people are memorizing and they are changing the questions like this. Okay? So least and the last one? Income. Same. Yeah, same. Wow, very good. So Monica को मैंने लिख देता हूँ कि this is, she said is drag and drop, yeah? And these people say this is drop. Okay. Now 88 में आ जाओ जल्दी. तब तक तुम लोग मेमोराइज करो प्लीज. ये तुम आपने चैंटिंग शुरू करो. दिव्या चली गई. मोनिका तुम शुरू करो.
Prices, 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 prices. least, 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 least. income, 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 prices, Prices, least, least income, income. prices, Prices, least, least income, income. prices, Prices, least, least income, income. Thank you. prices, Prices, least, least income. Thank you. Let's come to next 88. University science is now in real crisis. ये किसी को आया याद करो? अदनान, अपना डाटा बैंक खोलो. है नहीं, कोई बात नहीं. इसको हम करते हैं अपडेट. प्रिडिक्ट्स. बोलो 5 बार. Predicts, 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 predicts. Open, 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 open. Fall, 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 fall. Factor, 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 factor. Funding, 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 funding. funding. 5 बार इसको. Predicts Open open fall fall factor factor funding. funding. Predicts Predicts open open fall fall factor factor funding. funding. Predicts Predicts open open fall fall factor factor funding. funding. Predicts Predicts open open fall fall factor factor funding. funding. Predicts open fall Fall factor factor funding. funding. ये चरणजीत सोच रही है सर आपने अगर ये पहले शुरू कर दिया मेरा 2 साल पहले इसको आ जाना था. सही बात है. This girl would have scored at least 2 years ago. अगर हमने ये 2 नंबर ही पहले शुरू करते. सही बात है. ये जो मैं कर रहा हूँ ना, आई फील सो बैड इनसाइड. मुझे लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ. सब लोग चोरी कर, मैं भी चोरी कर रहा हूँ. चोरी तो नहीं, एक्चुअली चीप, सस्ता काम कर रहा हूँ बहुत. This is not a teacher's job. टीचर विल डू समथिंग गुड. ये तो गुड नहीं है, तो बहुत चीप सोल्यूशन ढूंढ रहा है सबके लिए हम. पर ब्लेसिंग के सोच के थोड़ी करते. हम करते हैं कि बच्चे इतने होप लेके आते हैं, सारा दुनिया ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही करें. समझ रहे हो, हम बच्चों के भलाई सोच रहे हैं. पर I don't feel good when I do this. English learn में नहीं, at least थोड़ी बहुत, it should be something genuine. It's not a genuine English language, unfortunately. पर हमें भी क्या है, कुछ नहीं कर सकते. I will always be with our students. अच्छा लगे बुरा लगे, अगर स्टूडेंट ने जिस पर्पस के लिए पैसे दे के हमारे पास आया, अगर वही उनको सर्व नहीं हो रहा है, तो हम अपने एथिक्स लेके क्या करेंगे? Then I should be out of this business, है ना. अगर मैं एथिक्स सोच के बैठ गया, I shouldn't be doing this business, है ना. जब सारा दुनिया ने शुरू किया, मैंने भी शुरू कर दिया. मैं क्या कर सकता हूँ? ये लड़की, she can blame me now, सर. अगर ये आप पहले कितनी बार बोला इसने मुझे, सर ये लिस्टिंग का सारा ऑडियो मेरे पास है, लिस्टिंग का सारा वर्जन है, प्लीज लिख के दो अपने वर्जन. मैंने कभी नहीं लिखा जानबूझ के. आई अवॉइडेड. एक लड़के ने मुझे कल मैसेज दिया, उससे प्यार आ गया, अभी प्यार आ गई उसके. मैसेज दिया कि सर 2 साल पहले आपको याद है मैं सनशाइन में बैठ के कैफे में, we sat in the cafe and he said, sir, I've got a lot of materials, why don't we have a look? If you have a look, then I will prepare really well, I'll be more confident. I said, no, don't show that to me, I don't want to see them. उसने बोला सर अगर आप तब शुरू करते कितना अच्छा होता, पर आजकल मैं देख रहा हूँ आप बहुत कुछ कर रहे हो स्पेशल मटेरियल नाम दे के. तो I'm happy that at least you have started doing it. Thank you. So this Charanjit maybe would have become a PR 1 year ago. So I think everyone will understand my limitation, है ना. मैं क्या कर सकता हूँ. ज्योति भी सोच रही है, ज्योति भी है ना बेचारी, अभी ऐसी सीनियर सिटीजन नहीं हो गई है ना कि वेट फॉर इमदाद सर. It took too long. हरदीप पैर नीचे रखो. क्या जमाना आ गया, टीचर के सामने पैर ऊपर रख रहे हो. How old are you, हरदीप? How old are you? 89. Next one, please, Garima. Jaldi, jaldi. In the US, okay. Everyone look at this, please. 89. Can you see that? Yes, sir. In the US, artists in the mid 1950s. Did you get it? Yes, sir. Wow, who got it? Did you get it? Did you get it in your exam? No one. Allah maaf karo. Bridge. पढ़ते शुरू करो chanting. Bridge, 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 bridge. Collage, collage, Collage. collage, collage, collage. Foreigners, 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 नहीं आ रहा है, foreigners, डाउट है, वो बोल नहीं foreigners. रही है. चुप क्यों हो गए प्रीतम भाई? Bridge, Collage, college, foreigners. foreigners. Bridge, collage, foreigners. Bridge, collage, foreigners. Bridge, collage, foreigners. Bridge, collage, foreigners. That's the way. That's the way. Thank you. Thank you. Number 90. Everyone, look at this.
बोला. So next one, number 90, everyone. एक सौ करके at least निकलते हैं. मेरी बीबी मार डालेगी 8 बजे. Number 90. From a child's point of view, what is the purpose of TV advertising? Now, who got it in your exam? Yeah, very good. बताओ, Pinal. Practice. कहाँ पे practice? Rest or practice, then the practice is actually answer, not the rest. Sure. Yes. I can trust you. Then, I have to look. Actually, I sent you the photo. can someone remember? Yeah, Johnny. Yeah, and then Difference. हमारा अदनान कहाँ गया अभी? Yes, difference between Difference कहाँ पे difference? Second line में last word. Second line. Then I didn't get real. The commercials are for real. then I think whereas you think whereas? I'll have a picture. Whereas so far हम whereas रखते नहीं. I just marked that. Distinguish between two. Was different and distinguish. So like different and Distinguish, yeah. able to distinguish. So let's have them both, yeah. अब इधर मिल जाए तो मुझे बोल देना. Yes, So practice, difference, distinguish, and aware. 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 Oh, smart girl, look at that. थैंक यू बोलना चाहिए ना ऐसे स्टूडेंट को जो एग्जाम देते कि याद करते हैं. हमारा अदनान, जॉनी, पिनल, सारे फेल करने वाले. फायदा तो हो रहा है सबका. फेल करना भी जरूरी है, वरना तो नहीं आते यहाँ पे. फेल करके हमें अपडेट हो रहा है. अपडेट करे. सॉरी प्रभजोत, तो मैंने भूल गया हमारा जो लीडर प्रभजोत. पास हो जाने के बाद भी कर देंगे. इंशाल्लाह तब कोई नहीं करोगे. पास करने के बाद तुम लोग याद भी नहीं करोगे. अवेयर. ना देखो कितना जबरदस्त गुड न्यूज है. अभी इसने याद आ गया. उसने एग्जाम के बाद उसने फोटो खींच के मुझे याद किया था. मुझे फोटो खींच के भेजा था उसने. वो उसको मिल भी गया पिनल को. अभी ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी तुम लोग बाकी जो लोगों को एग्जाम में आने वाला है, अगर फ्रॉम ए चार्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आ गया, आंखें बंद कर व्हाट यू गोना डू इज difference, sorry, practice, difference, distinguish, aware. शुरू कर दो मोनिका chanting. Practice, 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 practice. Difference, 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 difference. Distinguish, 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 distinguish. Aware, 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 aware. Practice, difference, distinguish, aware. Practice, difference, distinguish, aware. Practice, difference, distinguish, aware. Practice, difference, distinguish, aware. Thank you very much. Now Phoenix is adamant. Who got it? Phoenix in your exam. Phoenix wala, Phoenix wala. No one got this in your exam? Okay, Phoenix wala बोल दो. जो है वही लिख देते हैं ना. शुरू कर दो. प्रीतम भाई. Chemistry, 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 chemistry. Differs, 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 differs. Engaging, 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 engaging. Chemistry differ, engaging. Chemistry differs engaging. Chemistry differs Differs, engaging. Chemistry differs, engaging. Chemistry differs, engaging. जबरदस्त है. ये अच्छा आइडिया है ना. चैंटिंग से पता है क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है ना. अब देखो हमने नेक्स्ट 4 दे दिया. नेक्स्ट 4 नंबर 92, 93. Can you recall something? 94. 9. हाँ, जापानीज ना शुरू से आते. 92 में आ जाओ सब. Eccentric mix of English, German, French. Yeah, who got it? अदनान को है ना. अदनान याद करो. On the other hand सही है. Very good. On the other hand. And दूसरा similarly. Very good. And पहले as a result. There was concern on the first essay. They were thinking that the new generation is getting worse. तो कहाँ पे ढूंढे, क्या ढूंढे? कॉन्सर्न कुछ है?
एज ए रिजल्ट नहीं था. आर यू श्योर और यू नॉट श्योर? नॉट श्योर तो रख देते हैं ना हम. नॉट श्योर तो रख देते हैं बाद में, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है. वी कैन रिमेंबर इन आवर एग्जाम. बिकॉज था कि नहीं था, याद नहीं है ना. लेट्स कीप इट. ऑलराइट, रिजल्ट में ओके. ऐसा सब बच्चे निकल जाम रह जाए. ओके, ऑलराइट. So let's do number 93. In 2001, he received the SIUC Outstanding Scholar Award. Can someone recall? No one. अच्छा, तो वही बोल देते फिर. 93 कर दो फिर प्लीज, मोनिका एंड प्रीतम भाई. Focused, 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 focused. Journals, 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 journals. Interests, 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 interest, interest. Besides, beside, 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 beside. Focus, general, interest, beside. Focus, general, interest, beside. Focused, interest, beside. Focus, general, interest, beside. हो गया, बहुत हो गया, रुक जाओ. 94 में आ जाओ. 94. One thing is certain. Who got it? No one got it. Okay, no one got it. One thing is certain में फिर कर लेते हैं. Same. Ordinary, 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 ordinary. Electric, 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 electric. Demanding, 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 demanding. Much, 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 much. Ordinary, electric, demanding, much. Ordinary, Ordinary, electric, electric, Riya. demanding demanding, much. much. Ordinary, electric, demanding much. Ordinary, electric, demanding much. Good. Ordinary, electric, demanding much. Good. 95 में आ जाओ. Complementary therapies. Who got it? Okay, we'll double check later. बोल दो फिर, वही कर दो. Practice, Practiced, practice, 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 practice. Enthusiasm, 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 enthusiasm. Influence, 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 influence. efficacy, Efficiency, efficacy, 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 efficacy. जल्दी और 5 बोल दे गरिमा. 5 बोल के निकल जाता हूँ. मैं गिर जाऊंगा अभी, मेरा प्रेशर लो गया लग रहा है. खत्म हो गया ये. हाँ, वो बड़े वाले कर दो फिर. 5 करके I go home. 100 पूरा कर ले, सेंचुरी करके जाते हैं. तो वो बोल दो जो हमने नहीं किया. बोल दे फिर क्या क्या ढूंढ लेते हैं. जल्दी बोल दे क्या नहीं किया. After the movement, हाँ, we have done movement. बोल के कोई फायदा नहीं है. मुझे बोल के क्या फायदा होगा. After movement and training, there is first section of book which we have done. ढूंढना पड़ेगा मुझे. हूबहू वर्ड देना, 8 वर्ड्स हूबहू. That one we have done. इसको रहने दे. नहीं, इसको देके अलग था मुझे. कुछ और बताओ जो हम कर चुके हैं लास्ट कपल ऑफ वीक्स में. इस फाइल में लास्ट कपल ऑफ वीक्स में नहीं है. जो फाइल दिया हमने लास्ट. स्पेशल रीडिंग blanks. So why it is a purpose? Radioactivity. Which one बोलो. डेट कौन सा है? 12th December. 12 दिसंबर. वेरी गुड. आई गॉट इट. 5 है इसमें. Yes, sir. शुक्र है. 5 डाल देते बस. Yes. ये हमने नहीं किया ना वहाँ पे. Radioactivity. परफेक्ट. 6 है इसमें. Yes, sir. वेरी गुड. 6 डाल देते 101 हो जाएगा. सुनने अच्छा लगेगा. गाइस अभी देखो हम 5 और ऐड कर रहे हैं. काउसर का स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा दिल भर गया. काउसर हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट है. काउसर जो बांग्लादेशी बंदा है, 7th किया था मेरे पास आके. फिर उसने छुट्टी ली 1 मंथ के. मुझे बोला सब मैं 1 महीने बैठ के मुझे मेमोराइज करना है. तो घर पे बैठ गया. काउसर भाई बांग्लादेशी में घर पे बैठ गया मेमोराइज करने के लिए. ये सब प्लीज मुझे माफ कर देना. डोंट माइंड. मैं क्लास में नहीं आ रहा हूँ और मैंने सब कुछ ले लिया आपसे जो लेना था. अब मुझे रट्टा मारना है. तो उसने बोला कि मुझे टाइम चाहिए बहुत ज्यादा मेमोराइज करने के लिए. आई जस्ट कांट स्पेंड 2-3 आवर्स. आई नीड लॉन्ग. आई नीड द होल डे. 1 मंथ उसने रफली छुट्टी लिया सब कुछ से घर पे बैठ के. 86, 86, 90, 86. Look at that dashing score. उसके और भी क्या 8 है ना. अजय. सो हम जब कर रहे थे आधा घंटे में 2 8 आया अल्हम्दुलिल्लाह. हम करते हैं और भी इसको आते रहेंगे. आई एम जोकिंग. ऐसे नहीं कर सकते. ओके, नंबर 90 कहाँ पे थे. So why is it a concern?
concern because radioactivity seems So 95 के बाद 5 मिनट बैठ जाओ गाइस, 5 मिनट बैठ जाओ, इंसल्ट ना करो, कोई बात नहीं, जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं, चलो। So 96 lamb, देखो lamb मिला. Why is it a concern? It is because oh wow, because को मैं बड़ा कर देता हूँ पहले, because then nevertheless exposed magnitude. exposed. अब मुझे पता चल गया कि हमने रफली 150 से ब्लैंक से कम नहीं किया, क्योंकि इसमें नियरली 2/3 भी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा ब्लैंक्स जो हमने ऐड नहीं किया. सो आई एम फीलिंग हैप्पी, 150 ब्लैंक्स कर दिया हमने, बहुत ब्लैंक्स किया. वो काश मैं एग्जाम दे सकता. मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बुरा भी लगता है ना कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ. होता है ना कि हाथ के सामने मौका नहीं मिल रहा है मुझे, अगर एक मौका मिल जाता मुझे तो हम 80 के 100 स्कोर करते हैं. इम्पॉसिबल नहीं था ऑनेस्टली. ब्लैंक्स मिलने के बाद लोगों का स्कोर देखो कहां से कहां चला गया, अलग मेरे बने. ओके, egg eating snakes diet is in no, actually this one is different with lizard. yeah, this is different. Okay, this is different. ना भी है, different मान लो, ठीक है. Move on. हमें 97 98 बोलते जल्दी. 98 क्या है? स्टीवन पिंकर है देर, तो फिर याद नहीं करेंगे हम. हैं ऑलरेडी है तो नहीं करेंगे. और इकी बना है, वाओ, इकी बना कर लेते हैं. बोलो पहला वाला बोलना, 5 बार बोल दो, 5 बार. प्रीतम भाई, इकी बना है Arrangement, 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 arrangement. Steeped, 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 steeped. blossoms, 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 blossoms. Floral decoration, Floral decoration, floral decoration, floral decoration, floral decoration. रहने दो. रो रहे सर, माफ कर दो प्लीज. अगर हमारे डैड भी बोलते हम तभी नहीं करना था, आप जो करा रहे हो. Only 2 more. Allergies किया पहले. Allergies है किस किस का allergies? Allergies में देखो mistakenly, पहला mistakenly, दूसरा release, तीसरा X. This is like lamb. Okay, someone gave it to me. Number 6. बोल दो 6. Sorry, not 6. 100. Alhamdulillah, I'm feeling a little good that at least हमने 100 पूरा किया. पढ़ो, ये last chant कर दो. Determine, Didn't mean, not mine. Determine. Exchange, exchange. Factors. Decides. Alhamdulillah, 100 पूरा किया. I know we took a long time, but I'm sure ये लिंक मैं रखूंगा, डिलीट नहीं करूंगा. I'm sure कि when you go home, you're going to practice them. अगर आज ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, at least practice them tomorrow. Tomorrow and day after tomorrow, you've got the whole weekend. Study them inshallah, and we're going to update. Good news is that हम Monday को जितना बाकी रहेगा वो भी खत्म कर देंगे हम. स्कोर कैसे नहीं है हम देख लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है everyone. Allah Hafiz. Thank you very much. See you on Monday inshallah. Thank you everyone.